माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, जय श्री राम। आइटम नंबर 1 महासचिव उत्तर प्रदेश। माननीय सदस्य प्लीज बैठिए। शपथ है क्या? प्लीज सिट डाउन। लीडर आपको समझाइए इनको। सर क्या करें, मजबूरी का नाम नहीं होता है सर। आप परंपराएं होती है संसद की। बोलने दिया जाए बस बात। महासचिव उत्तर प्रदेश श्रीमती डिंपल यादव। मैं डिंपल यादव, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। पहले साइन कर दें। बधाई आपको। क्वेश्चन नंबर 61 श्री नकुल के नाथ। थैंक यू स्पीकर साहब। ऑनरेबल मेंबर, क्वेश्चन नंबर 61। माननीय मंत्री जी, विवरण सभा पटल पर रख दीजिए। माननीय मेंबर, ऑनरेबल मेंबर प्लीज। स्पीकर सर, आपकी अनुमति हो तो मेरा प्रश्न थोड़ा लंबा है, 4 बिंदु हैं, मैं एक साथ पढ़ सकता हूं? नहीं, आप प्रश्न पूछ लें, सप्लीमेंट्री भी मिलेगी आपको एक, उसके बाद। स्पीकर सर, आपके माध्यम से विल द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस be pleased to state the collection of GST from the state of Madhya Pradesh during each of the last 4 years, the amount of GST compensation released by the government to the state of Madhya Pradesh during the same period. आप ऑनरेबल मेंबर इससे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ लें जो आप पूछना चाहते हैं। कोई बात नहीं, एक बार प्रयास है। बोलिए, कोई बात नहीं, आपको मौका देंगे। The amount of GST compensation due to the government of Madhya Pradesh from the central government, and whether the GST Council intends to consider the demand of the state government of Madhya Pradesh to increase the GST compensation for an additional 5 years, and if so, the details thereof. Thank you. अध्यक्ष जी, वैसे तो विवरण सभा पटल पर रख दी गई है, लेकिन मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि जो मध्य प्रदेश का सवाल है, 4 साल का डाटा भी उनको दे दिया गया है, और जीएसटी जहां तक 5 साल बढ़ाने का सवाल है, संविधान के 101वें संशोधन अधिनियम 2016 की धारा 18 के अनुसार संसद के कानून द्वारा जीएसटी परिषद की सिफारिश पर जीएसटी एक्ट लागू होने के कारण राज्यों को राजस्व हानि के लिए 5 साल तक कंपनसेशन प्रदान करेगी। इस मुआवजे का भुगतान करने के लिए केंद्र सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। ऑनरेबल मेंबर सप्लीमेंट्री पूछना चाहते हैं? नो। श्री बी मेहताब जी। The last question of the question number 61 has not been answered, or has been deliberately, it has been done. My question is in 2 parts, sir. One is relating to GST compensation that is due to Odisha, relating to 2021-22 and 22-23.
I would say, an amount of 3,251.53 crore for the year 21-22 and 22-23 is yet to be released in favor of Odisha towards GST compensation for the loss of revenue on account of implementation of GST. I would like to understand from the Honorable Finance Minister whether she is going to ensure payment of the balance GST compensation, as has been already decided in the Council that within every 2 months the money has to be released, which is yet to be released, though it was supposed to be released in the month of April. And I also like to understand, after completion of 5 years as per the constitutional provision, whether government is going to increase that providing compensation, which has been over by last June. Thank you. Thank you for giving me the permission to answer while the MOS was doing the responses. So in particular about the dues for Orissa, as of June, the provisional figure for Orissa is 528.95 crores, which is pending compensation. So the larger issue of the compensation pending, will we be giving it, I think has periodically been explained that for 5 years we were, since after the introduction, for 5 years the compensation was expected to be provided, which we are committed and we have been continuously doing. And if I were to put it in some kind of a, how much is pending, if I were to go by month, nearly the last month was June, till when the compensation had to be given. And of the June amount, nearly half of it is already paid. For the rest half, we're waiting for adequate collection to happen, because it has to be given from the compensation cess collected, which goes into a public account from where they get given. So for June, that compensation which has to be paid, half of it has already been released, and no more amount was available for me to release the rest half. But otherwise, there's nothing that is pending for me to give, in the sense of all that has been collected has been disbursed. But the GST compensation has already been extended till 26 to pay for the loans which were taken back to back being provided to the states in 2020, when the collections were not at all there. And that has to be repaid only from the cess payment, because it's a loan taken to pay compensation cess. And in order to pay for that repayment, that is, for that loan taken and for the interest, therefore, to service it, the extension for the period of 5 years, but for the borrowed amount, it has been extended till 26 already. The other explanation, which may apply to some states and which may not apply to some other states, is if states have not sent us the Accountant General approved statements of this is it, the state has to get this much of compensation, has to be authorized by the respective state's Accountant General, AGs. If there is a delay in the AG's certified claims from the state, obviously that will be still pending. So if the AG certificate comes along with a claim from the state, that moment that money will also get released. So I want to say from our side, we are up to date. As regards as much money that is there for me to distribute, we have distributed. And we are up to date again for all the claims which have come from states approved by their respective AGs, we've paid. And if AGs have not cleared or it's pending, I would request state governments to kindly expedite that. I'm willing to clear it the moment I get it. आप कहाँ बोल खड़े होके पूछो आप बैठ बैठे खड़े होके
Thank you very much, Mr. Speaker. That's gracious of you. The Finance Minister has made an interesting statement because we heard last week from Kerala Finance Minister that Kerala is yet to receive 4,466.89 crores as goods and services tax compensation since the 2017-18 fiscal year. And they claim that according to their audited calculations, there's a shortfall in 5 of the last 6 years. Except, I gather, for 1 year, last year, 1920 fiscal, when you actually paid a bit of an excess. The rest, according to their calculations, has fallen short. I gather the Finance Minister came to see you. Would you clarify for us and for the House what the exact position is with regard to the GST compensation for Kerala? Sir, again, as of June, for Kerala, it is 780.49 crores only. 780.4916, if you want fourth decimal as well. Yes, the Kerala Finance Minister met me. He has given me some details of the claims. So these are, I would like to believe, if the state believes that that is pending, I also would like to believe it's pending because I need the necessary papers to clear it. The moment, sir, Honorable Speaker, the papers reach me of that certification which is required, even if there is a contention between the center and the state, it has to be sorted out. Until then, it's pending from both sides. I can't be sitting on somebody's money if all the papers which is so required is before me. It's impossible. But of course, if there is a dispute, after all, I'm dealing with taxpayers' money, I need to have a legitimate way of sorting it out with the AG, with the Finance Minister, with the officials of the state, as much as all of us here. No. Sir, these are, of course, the officials who will be engaging on it, sir. And therefore, is there a difference? Is there no difference? The fact that it is pending for this long, yes, there is a difference. But they are sortable difference. Question number 62, Sri Sumedanand Saraswati ji. प्रश्न संख्या 62। माननीय सदस्य धन्यवाद। मैंने सुन लिया, उनको बोल भी दिया। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैंने CSR से संबंधित एक प्रश्न माननीय मंत्री जी से पूछा था, काफी विस्तार से उत्तर दिया है। मैं मंत्री जी से एक बात जानना चाह रहा हूं कि क्या सरकारी बैंक पर कंपनी अधिनियम 213 लागू नहीं होता है, इसलिए इन पर सामान्य CSR लागू नहीं होता। मैं अब यह जानना चाहता हूं, क्या CSR निजी बैंकों के लिए लागू है? यदि हाँ, तो कितनी धनराशि पिछले 3 वर्षों में इनके द्वारा राजस्थान में खर्च की गई है? यदि नहीं, तो सरकार इस बारे में क्या विचार कर रही है? माननीय अध्यक्ष महोदय, कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से निजी बैंक को CSR लागू हो सकता है और बहुत सारे बैंक्स हैं जिसका चार्ट मेरे पास है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं पिछले 3 साल में जो CSR हुआ है, जो HDFC सबसे बड़ी बैंक है, उसमें टोटल 1906 रुपये का CSR दिया है। ICICI बैंक में 602 तो और में दे दिया। आप तो बताओ राजस्थान में जो खर्च हुआ है। सर, जो CSR जो एक्सपेंस होता है वो नेशनल पॉलिसी पे होता है। कुछ ऐसी चीज है जिसमें स्वच्छ भारत कोष है, नेशनल स्पोर्ट डेवलपमेंट फंड है, PM नेशनल रिलीफ फंड है। सो ऑल ओवर बैंक्स आर इन द नेशन, और जो कुछ प्रॉफिट या CSR होता है तो पूरे देश में खर्चा होता है, तो राजस्थान या कोई स्टेट के लिए अलग ऐसा कुछ नहीं। ओके, माननीय सदस्य सप्लीमेंट्री। जी सर, दूसरा मेरा ये निवेदन था कि मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाह रहा हूं कि पिछले 3 वर्षों में सीकर सहित राजस्थान में कितनी धनराशि सरकारी कंपनियों द्वारा CSR के तहत खर्च की गई? दे दिया ना माननीय मंत्री जी ने जवाब कि हम देश में सोचते हैं, राज्यों के बारे में सूचना नहीं है। मैं सरकारी कंपनियों की बात कर रहा हूं, बैंकों से। पहला प्रश्न बैंकों से संबंधित था मेरा प्रश्न पहले बैंकों से संबंधित था। कंपनियों के अंदर भी ये मॉडल लागू है जो बैंक के अंदर। मंत्री जी जवाब दो, आप अलग से मॉडल थोड़ी बन जाएगा। सर, ये तो सेम मॉडल इज अप्लाइड फॉर द पब्लिक सेक्टर यूनिट्स आल्सो। और ये बैंकों, आप तो बताओ कि बैंकों के और दूसरी कंपनियों में अलग अलग है क्या मॉडल? ऐसा नहीं, एक माननीय मंत्री जवाब देंगे। Just for the sake of clarity, sir, corporate social responsibility is a part of the Companies Act,
and every institution which is registered as a company will come under corporate social responsibility. Whereas banks are registered under the Bank Nationalization Act. They are not companies. So when we expect banks to spend CSR, they spend according to the rules which are as per a guidelines given by the RBI. Strictly the Companies Act CSR, the RBI guidelines and the CSR guidelines under the Companies Act largely align with one another. But they are different because banks are under the Banking Nationalization Act and the companies otherwise are under the Companies Act. So if you go detail by detail per the CSR under the Companies Act, may not exactly fit into this, but banks, particularly the public sector banks, because they are under the Banking Nationalization Act, follow the RBI guideline as regards corporate social responsibility. So in principle, I just want to make this laid in front of the honorable members so that we know the difference between. बालकनाथ जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। क्या भविष्य में जो कंपनियां जिस स्थान पर हैं जहां पर उन कंपनियों का उद्योग लगा है, तो क्या उस क्षेत्र के अंदर जो उसकी तहसील है या जिला है, तो उससे द्वारा जनरेट CSR कुछ उस क्षेत्र के अंदर मैंडेटरी हो लगाना कुछ परसेंटेज, क्या ऐसी योजना मंत्रालय की है भविष्य के लिए? जिस क्षेत्र में कंपनी है उसी क्षेत्र में खर्च करना है, कोई रुकावट नहीं है। अभी भी कंपनी उनके अपने जहां प्रेजेंस है वहां नहीं एक मिनट, मैंडेटरी नहीं है मगर बोर्ड का निर्णय, सर इट्स अ प्रोसेस विच इज लार्जली ड्रिवन बाय द कंपनीज बोर्ड। बोर्ड एक सब कमेटी जैसे एक कमेटी CSR के लिए रखती है, उसके द्वारा निर्णय होते हैं कि कहां कौन सा स्कीम के लिए खर्च उठाना है। अगर उसी इलाके में उसी तालुक में करना है तो बोर्ड निर्णय कर सकते हैं, उसके लिए डायरेक्शन सरकार के द्वारा उसको मैंडेटरी करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है, कोई प्रपोजल मेरे सामने नहीं है। करना उचित है कि नहीं है वो भी सोचने लायक है, क्योंकि कंपनी के अंदर कितना सरकारी इंटरफियरेंस हो सकता है वो भी चर्चा के लायक विषय। ऑनरेबल मेंबर डी रवि कुमार। Like to ask through you, Honorable Finance Minister, the NLC, Navy Lignite Corporation Company, which is working in Tamil Nadu, Navy, but they are spending their CSR not only in Tamil Nadu, but also other states. Particularly during COVID, they have spent money more than Tamil Nadu. They have spent in Karnataka and other states. Is there any specific guideline to restrict the spending of CSR in the particular state where the company is working, where the industry is working? Sir, the answer given to the earlier question will be applicable. There is nothing which restricts anybody. At the same time, nothing which tells them you have to do it this way or that way, because the company's board takes the call. गोपाल शेट्टी जी। महोदय जी, मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है वो जो नियम बने हैं उसके मुताबिक दिया है, मैं उनका स्वागत करता हूं, लेकिन इस सभागृह नियम में बदलाव करने के लिए है ऐसा मुझे लगता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि जो CSR फंड का जो अमाउंट है उसमें से 1% गवर्नमेंट के जो स्कीम है उसमें जाए, बाकी के 1% उस राज्य में खर्चा किया जिस प्रकार की एक मांग है। और अध्यक्ष महोदय जी, आपको भी पता होगा कि शुरुआत में जब प्रधानमंत्री ने योजना लागू की तो वो भाग के MPs को बुलाकर जहां CSR फंड का काम होता है वहां पर बुलाया जाता था और फोटो निकाला जाता था। मैंने पूछा कि भाई छोटे काम में हमको क्यों बुलाते हैं, तो बोले हमको फोटो भेजना पड़ता है। लेकिन इन दिनों में वो सारा बंद हुआ है। तो मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सम्मान जो गरिमा है उसको बरकरार रखने के लिए कोई नियम में आने वाले दिनों में बदलाव करेंगे क्या? सुझाव है सर। क्वेश्चन नंबर 63, श्रीमती समिष्टा सेठी। Question number 63. माननीय मंत्री जी। Answer of this statement is laid on the table of the House.
Honorable member. Sir, during the COVID and post-COVID, many children, including a lot of tribal children who were pursuing higher education, dropped out. We all know the reasons: family loss, financial loss, etc. My question is whether the ministry has taken any step to bring back those children to the universities, any financial assistance or any other kind of support provided to them, any data regarding how many dropped out children returned to the universities. Honorable Speaker, sir, our member has raised a good question, but I am giving the answer that according to the data in the ministry, in higher education, gradually GER is increasing day by day. Starting from 2012-13, it was 11.1 and now it is 18. So naturally, it is a continuous process always to take the dropout children to the higher education, and that's why we have also built in the 2019 another tribal university in Andhra Pradesh. Order supplementary. Sir, a central university has been set up in tribal-dominated Koraput district, but from viewpoint of infrastructure and manpower, the university seems to be on a neglected front. My question to the Honorable Minister is, what is the total number of vacancies in the teaching and non-teaching positions in the Central University in Koraput, in my state, that is Odisha, and when these positions will be filled up? Honorable Speaker, sir, the question is on the tribal university, and Koraput is not the tribal university. We have the detailed data on tribal university. If member comes and meet with me, I will tell him. सारे कुछ चीजों को सारे तो है ही कंप्लीट. Yes, sir. माननीय मंत्री जी देंगे जवाब. ऑनरेबल स्पीकर साहब, सदन में जनरली सब चीजों का जवाब देते की कोशिश करो. आदरणीय सदस्य ने आपकी अपने राज्य के बारे में पूछी है. ये बात सही है, लंबे समय तक कोरापुट सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ होनी चाहिए वो कई कारणों से नहीं हो पाई है. इस बात को मैं स्वीकार भी करता हूँ. इन दिनों में वहाँ एक लंबे अरसे के बाद एक स्थायी वीसी की भी नियुक्ति हुई है. कोरापुट समेत देश की सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी और सेंट्रली फंडेड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में वैकेंसी लगभग 30% प्लस है. उसको समाप्त करने के लिए सरकार की अभी योजना है 1 साल के अंदर 10 लाख नियुक्ति देने में. उसमें शिक्षा विभाग की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होने वाला है. पिछले साल में 2000 नए प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति हुई है. उसमें भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी कोरापुट की है तथा देश की अन्य सेंट्रल यूनिवर्सिटी IITs, NITs की भी है. इंजीनियर गुमान सिंह डामोर. मैं सबसे पहले माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि बहुत अच्छा उत्तर दिया है, और मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परमादरणीय मोदी जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि जनजाति क्षेत्र में पहली बार शिक्षा को लेकर बहुत अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं. जैसे एकलव्य रेसिडेंशियल मॉडल स्कूल, इस प्रकार से जो व्यवस्था की जा रही है, इससे जनजाति क्षेत्रों में शिक्षा का गुणवत्ता युक्त शिक्षा का स्तर बढ़ेगा. मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूँ कि जो हमारी इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक है, ये 75 कोर्सेज चला रही हैं, परंतु इन कोर्सेज का पूरा लाभ जनजाति क्षेत्र के लोगों को नहीं मिल पा रहा है. तो क्या जनजाति बाहुल्य जिले में इस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाले जितने जिले हैं उसमें स्टडी सेंटर खोले जाएंगे ताकि जनजाति क्षेत्र को इसका पूरा लाभ मिले? ऑनरेबल स्पीकर सर, जो हमारी जो ट्राइबल यूनिवर्सिटी है, ये ट्राइबल यूनिवर्सिटी के जो मिशन है, उसको विजन, वो सारे जो ट्राइबल बच्चे को अच्छे से उनको एक्सेस हो और उनको क्वालिटी एजुकेशन हो, इसके कारण ये बना है. और उनके साथ साथ वहाँ के जो ट्राइबल आर्ट, कल्चर, मेडिसिन,
इसके बारे में सारी चर्चा हो, इसके कारण ये बना है। और इसमें ट्राइबल स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं और गांव के बच्चे भी वो ट्राइबल यूनिवर्सिटी में आते हैं, ये सारे पढ़ाई होता है। और इसके साथ साथ जब जब जरूरत हो तो उसी समय ट्राइबल यूनिवर्सिटी को, जो मध्य प्रदेश के जो ट्राइबल यूनिवर्सिटी है, उसका कैंपस भी खुला जाता है। थैंक यू। ऑनरेबल मेंबर टी.आर. पारीवंतर। Honorable Speaker, sir, Tamil Nadu has 7.21 lakh tribal population as per 2011 census. To promote higher education and to preserve the culture and tradition of the tribal communities, whether the Ministry of Education has any plan to start Central Tribal University in the state of Tamil Nadu, particularly in Vachamalai tribal area in my Perambalur constituency. If so, the details thereof. Thank you. Honorable Speaker, sir, I would like to inform Honorable Member through you that our government is very much dedicated to the development of tribal populations in all round, even in the education also. That's why we know, with the visionary leader of our Honorable Prime Minister, India has made a tribal teacher, lady teacher, to our Mahamahim Rashtrapati. All over the world it is being praised. And setting up of a central university is also a continuous process and is set up as and when need arises. And at present, there is no proposal from any state. इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी सर सूची है, एक बार उनको नाम तो कीजिए, शुरू किसने की थी? अजीब सी बात है। डॉक्टर मोहम्मद जावेद। आपकी जवाब में देखो। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं सीमांचल से आता हूं, जहां सबसे डिप्राइव्ड एरिया है एजुकेशनली भी, और इसको देखते हुए मैम यूपीए की गवर्नमेंट ने वहां पे एक शाखा दिया था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, और हमारी यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी ने उसका शिलान्यास रखा था 2014 में जनवरी में सर, और उससे कबल 136 करोड़ रुपया सैंक्शन किया था उन्होंने, जिसमें से सिर्फ 10 करोड़ दिया गया सर। आप जानते ही, आपने मेरी पैरवी भी की थी फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा से। उसके बाद कई मरतबा एएमयू सेंटर के लिए फंड मांगा गया। लास्ट 24 मार्च 22 को 354 करोड़ मांगा गया सर, जिसमें से अभी तक कुछ भी नहीं मिला। उसके साथ साथ 2021 सितंबर में यूजीसी सैंक्शन 29 टीचिंग एंड 19 नॉन टीचिंग स्टाफ की मांग की थी, जो अभी तक नहीं दिया गया, और जिसके वजह से पढ़ाई नहीं हो पा रही है। ये सरकार सर जितनी लीडरशिप है बीजेपी के पिछले कुछ महीनों से पासमानदा मुस्लिम्स की बात करती है। हमारा पूरा सीमांचल सर पासमानदा है। तो मैं आदरणीय आपके माध्यम से मंत्री जी से ये जानना चाहता हूं कि ये टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ कब तक देंगे, और ये जो 354 करोड़ एएमयू किशनगंज के लिए मिलना था वो कब तक देंगे? बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप मंत्री जी नहीं हो भाई, मंत्री जी पासमानदा झूठ बोल रहे हैं। I know, I can club. आदरणीय स्पीकर महोदय, आपने भी कई बार कहा है, और जावेद जी हमारे मित्र हैं, कई बार मिले हैं। एएमयू एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है। एएमयू की 2 शाखा, जिसके बारे में हमारी केरल की आदरणीय सदस्य भी कई बार उठाते हैं। आप एलओपी हो, प्लीज। इन दिनों में थोड़ा दादा कुछ अनबन हुई है क्या मैडम से? हुई है। मैं आपको जावेद भाई और मेरा जो प्लीज मैडम देख लिया, बैठो। आपको दिखाना चाहते हैं
आप बड़े आदमी हो, आप ऑनरेबल मेंबर प्लीज, मंत्री जी, माननीय मंत्री सदन जी की वरिष्ठ सदस्य हो। आपने सही कहा, मुर्शिदाबाद और मालापुरम ये दो जगह पे एएमयू की प्रक्रिया तहत थ्रू द प्रॉपर प्रोसेस 2 एक्सटेंडेड कैंपस खोला गया है। जब जावेद भाई बार बार हमको मिलते हैं, मैं एक बार उस सारे फाइल को पढ़ा कि भाई जावेद जी सीमांचल से आते हैं, उनकी आग्रह वाजिब है, थोड़ा उसको समझा जाए। सर, मैं जिम्मेवारी के साथ इस सदन को आपके माध्यम से अवगत करना चाहता हूं, जिन्होंने भी 2010 में एएमयू के बारे में सपना दिखाया, अधूरा सपना दिखाया, कोई प्रोसेस्ड प्रक्रिया एएमयू की सीमांचल की कैंपस के बारे में, किशनगंज के कैंपस के बारे में नहीं मिल रहा है। ये बेसिक प्रोसेस है जिसके कारण हम चाहते हुए भी, हम एएमयू ऑटोनोमस बॉडी है, हम उसको एक लमसम ग्रांट इधर से देते हैं और हम आग्रह रखते हैं जैसे जैसे सदस्य मिलते हैं कि भाई इनको थोड़ा आगे, इनकी भी चिंता करो। लेकिन एएमयू सीमांचल के बारे में, और मैं इलाका को घुमा हूं, मैं जानता हूं उस इलाका की आवश्यकता के बारे में। शिक्षा यद्यपि एक राज्य सरकार की विषय है, फिर भी सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स की भी एक रोल है, हम चाहते हैं। लेकिन 2010 में सीमांचल में असत्य बात कही गई, बातों को अधूरी रखी गई, आधे मन से करने के कारण उसको आज हम मदद एएमयू जो एक ऑटोनोमस बॉडी है उसको करने में दिक्कत हो रही है। असत्यवाद की बात आप करते हैं, असत्यवाद क्या होता है सर? 2010 यूपीए सरकार, ऑनरेबल मेंबर प्लीज, आप साचार कमेटी रिपोर्ट, इनका रिकॉर्ड में नहीं हो रहा, आप जवाब दीजिए। साचार कमेटी रिपोर्ट आपको चेयर ने परमिशन नहीं दिया। अधूरा सपना का है, सत्य नहीं का। की बात करते हैं, असत्य अधूरा सपना का, अधूरा सपना, सत्य नहीं बोले, नहीं, मैं असत्य बोला। जिन्होंने भी संतोष बाबू, जिन्होंने भी 2010 में हमने एएमयू का एक शाखा किशनगंज में खोलने की बात कही है, वो असत्य बात कही है। मैं जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, क्योंकि पूरा जो प्रोसेस एक यूनिवर्सिटी, हमें आपत्ति नहीं, मुर्शिदाबाद में खोला हमें आपत्ति नहीं है, हमारे मालापुरम में खोला हम आपत्ति नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर इनको राजनीति करना है, लोगों को गुमराह करना है, सर अध्यक्ष महोदय मैं क्षमा चाहूंगा, इस प्रकार की बातों की कोई अंत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 64 श्री हेमंत तुकाराम गोडसे। क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64। माननीय मंत्री जी। सर, statement is laid on the table of the House. माननीय सदस्य। Thank you, Honorable Speaker, sir. In skill development sector, compared to urban area, the number of RPL is quite low in rural area, which affects the rural economy and also migration from the rural to urban area. For example, in rural area, if any candidate gets trained in mobile repair sector or any other sector, he would start his business, and indirectly the effect goes to rural economy and will help to stop the migration. So Speaker sir, through you I want to ask Honorable Minister whether government is planning for upgrading the skills of workers in organized sectors at Gram Panchayat level, which will improve rural economy and stop migrations. Honorable Speaker, sir, the member has asked an important question, but I would like to respond a little comprehensively. Sir, the RPL is part of the Prime Minister Kaushal Vikas Yojana. It is part of our short-term training program. And the RPL has been made necessary, sir, because when our government came into effect in 2014, the government had to inherit a large pool of unskilled workforce in the informal sector. The numbers were estimated to be in 2014-15 to be over 30 crore in our workforce that were unskilled. This is the legacy that this government had to deal with. And in addition, sir, 1.6 crores of age 15 and above were joining the workforce as unskilled every year. In that process, we have
over the years skilled over 1.4 crore in the short-term programs, of which 54 lakhs have been in the RPL. It is true, and I take into account the suggestion made by the honourable member that we must increase RPL programs and RPL coverage in the rural areas. Supplementary. Speaker sir, the main objective of Pradhan Mantri Kaushal Kendra was the government will support these centers till they self-sustain, and after that they will own develop this sector, the skill development sector. But after long time, it has been seen that if whether they had achieved the target, because there are near about 700 PMKK centers. So through you, I want to ask Honorable Minister, after long time support of the government to this PMKK centers achieving their goal compared to other training providers, or government is planning to give direct support to the private local training providers so that the skill development sector will grow fast? सर, ये बात सही है कि हमारे 700 PMKKs हैं और उन्होंने काफ़ी अच्छा काम भी किया है पिछले सालों में, लेकिन सर कोविड के दौरान एक बहुत बड़ा डिसरप्शन हुआ था हमारे स्किलिंग एक्टिविटीज़ में, और PMKKs के जो एक्टिविटीज़ है उनके काफ़ी डिसरप्शन हुए हैं। हम आगे इनका एक तरह से एक रिवाइव करने की कोशिश में हैं और एक नया प्रोग्राम, मैं एश्योरेंस नहीं दे रहा हूं, लेकिन उसके आपके सुझाव को जरूर हम मन में रखेंगे सर। सुनील बाबूराव मेढे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री महोदय आपके जवाब के लिए। सर, मेरा एक पहला पूरा क्वेश्चन ऐसा है कि हम लोगों ने 2014-15 से राष्ट्रीय विकास निगम के माध्यम से अभी तक के 1.46 करोड़ लोगों को हमने रोजगार देने के लिए काम किया है। सरकार ने कभी ये सोचा है कि ये जिन लोगों को हमने अभी तक के कौशल विकास के माध्यम से जिनको हमने ट्रेनिंग दी है, उनका बाद में अभी के हाल में क्या उनका कुछ अपने सर्वेक्षण करके कुछ अंक प्राप्त किए हैं कि अभी उन लोगों की क्या हाल है और उन्होंने अभी उनके जीवन मान में क्या विशेष सुधारणा हुई है, इसके बारे में कुछ हमने सर्वेक्षण किया है? इसके बारे में मुझे जानकारी दे। और सर, दूसरा विषय साथ ही में पूछ लेता हूं कि हम लोग अभी, क्योंकि हमने जो भी एनसीडीसी के माध्यम से काम किया है, पता चलता है कि जो 4-6 महीने वो लोग काम करते हैं और बाद में फिर वापस आ जाते हैं, तो हम लोग कुछ ना माध्यमिक विद्यालय के माध्यम से ही वहाँ से भी कोर्स चालू करके इन लोगों को स्पेशली एनएसडीसी की जरूरत न पड़े, ऐसा कुछ प्रावधान करने का या सिलेबस लाने का कुछ सोच रहे हैं क्या? सर, माननीय सांसद ने सर्वे के बारे में या इम्पैक्ट असेसमेंट के बारे में पूछा है, और कोविड से पहले हम ये एक रेगुलर प्रक्रिया होता था सर, और कोविड के दौरान जैसे मैंने कहा काफ़ी सारे डिसरप्शन हुए हैं। हम अभी ये वापस शुरू करने की प्रयास में हैं सर, इम्पैक्ट असेसमेंट। दूसरा जो सुझाव उन्होंने कहा है कि हम प्लेसमेंट और जरा सर्वे करें स्टूडेंट्स के, ये अच्छा सुझाव है, हम इसको ध्यान में रखेंगे सर। सुश्री राम्या हरिदास। Thank you, sir. Whether the government plan to conduct special job fair or Rozgar Mela this year for the youth in state, especially in Kerala under PM-KVY? If so, details, sir. Thank you. Sir, the basic question pertains to RPL, and this issue is outside the scope of the question. But may I respond that the government is actively conducting Prime Minister Rozgar Melas and Pradhan Mantri Apprentice Melas, and uska information public domain mein hai. Question number 65, Shri A.R. Reddy. Sir, number 65. माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य। स्पीकर सर, हम सब पता है और फाइनेंस मिनिस्टर ट्रू फॉलोअर ऑफ नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि वो हमारे प्रदेश की है फाइनेंस मिनिस्टर। आई वांटेड टू रिमेंबर वन स्टेटमेंट विच इज मेड बाय नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री था, जब डॉलर वैल्यू रुपए में 66 रुपये था, तब नरेंद्र मोदी जी। प्रश्न पूछिए सर, वो यही प्रश्न है सर। हाँ, वही प्रश्न। मैं और नरेंद्र मोदी जी
दोनों एक ही प्रश्न पूछना चाह रहे हैं सर, वही प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ सर, मुझे मौका दीजिए बस। आप तो आपका प्रश्न पूछिए। सर मैं हमारा प्राइम मिनिस्टर है सर, आई कैन कोट, आई कैन फॉलो हिज डायरेक्शन फॉर द इकोनॉमी। पूछिए प्रश्न का। प्लीज सर, रुपया आईसीयू में पड़ा है। देश का दुर्भाग्य है कि दिल्ली सरकार ने ना देश को रक्षा की चिंता है। आपका प्रश्न है क्या? सर आप यही प्रश्न है सर, यही प्रश्न है सर। आप किसी प्रश्न स्पीकर सर, आप इंटरप्शन मत कर सकते सर। बैठिए, आप एक मिनट बैठिए, एक मिनट बैठिए। प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, प्लीज। एक तो माननीय सदस्यगण, आप सदन के नेता हैं, सदस्यों को ये समझा दो, कभी स्पीकर पर टिप्पणी करके ये नहीं कहे कि आप इंटरफेरेंस नहीं कीजिए, ये मेरा अधिकार है। समझ गए ना आज की बात? मेरे पास अधिकार है। कभी नहीं होगा ऐसा। सुन लिए माननीय सदस्य, सबको बता रहा हूं। आप प्रश्न से पूछो, प्रश्न के संबंधित किसी प्रश्न काल में किसी के स्टेटमेंट को कोट करने की आवश्यकता, प्रश्न पूछो, जवाब माननीय मंत्री जी देंगे। हिंदी थोड़ा कमजोरी है। ना आप मुझे मौका दो, आपसे मौका मांग रहे हैं सर। हिंदी में बोले थे, इंग्लिश में भी नहीं बोले। मौका मांग रहे हैं सर, मौका मांगने का समय ऑन रिकॉर्ड है। मौका सर बोले। हाँ पूछो, आपका अधिकार है, सबको मौका देता हूं। स्पीकर सर, मैं आपका मेंबर हूं, मुझे कुछ दिक्कत हो गए तो मुझे रक्षा करने का आपका पूरी रक्षा करेंगे, रिस्पांसिबिलिटी है, पूरी रक्षा करेंगे। क्योंकि मैं छोटे गांव से चुनकर इतना दूर आया, आपके ऊपर बहुत उम्मीद लेकर आए हम, तो हमें रक्षा करना आपका जिम्मेदारी है सर। सर मैं ये कहना चाह रहा हूं सर, आज सरकार के चिंता ऐसा है कि इन लोगों का कुर्सी बचाने का चिंता है, ना रुपए गिरने का रोकने के लिए कोई चिंता नहीं है, कोई एक्शन प्लान नहीं है। जब 66 रुपीस में रूपी था, आईसीयू में चला गया, आज के तारीख में अकॉर्डिंग टू आवर फाइनेंस मिनिस्टर रिप्लाई 83 रुपीस 20 पैसा। आईसीयू से दो रास्ते हैं सर, एक रास्ता ठीक होकर घर पर आना, दूसरे रास्ता मार्चरी को जाना। तो ये 83 रुपीस 20 पैसा अगर रुपए का वैल्यू था डॉलर के, तो हम सीधा सीधा मार्चरी में चला जा रहा है। इसीलिए मैं ये पूछना चाह रहा हूं हमारे फाइनेंस मिनिस्टर से, अगर आईसीयू से घर लाने के लिए कोई एक्शन प्लान है क्या? वो उसके मेरा और नरेंद्र मोदी जी का एक ही सवाल है, कब घर पे लाएगा? और मेरा दूसरा, मैडम वन मोर क्वेश्चन, सप्लीमेंट्री सर सप्लीमेंट्री दूंगा आपको। माननीय सदस्य जो तेलंगाना से आते हैं, उनकी हिंदी कमजोर बोल रहे हैं, मेरा हिंदी भी कमजोर है, फिर भी कमजोर हिंदी को कमजोर हिंदी में जवाब दे रही हूं सर। आईसीयू में, सॉरी, आप बेटे बेटे किसी व्यक्ति का जवाब मत दो सर। माननीय प्रधानमंत्री जी जब मुख्यमंत्री थे, उनका उस बयान को उठा करके अभी पूछ रहे हैं, बहुत सही है सर, पूछना आवश्यक है। नहीं, ये तो मैं तय करूंगा मंत्री जी, आप नहीं तय करोगे क्या पूछना है सर। इस तरीके का पूछने का जवाब उसको पूछना नहीं पूछना है तो मैं तय करूंगा। वो सही बात है सर। हाँ। मगर अगर वो कोटेशन के साथ उस जमाने के इकोनॉमी के बाकी सब इंडिकेटर्स को भी याद दिलाते, आईसीयू इकोनॉमी पूरे आईसीयू में थे, पूरे इकोनॉमी आईसीयू में थे सर। विपक्ष के नेता बैठकर सुनना चाहिए सर। सर जब तक वो खड़े हैं मैं भी खड़े रहूंगी, मगर जवाब पूरे देने का मौका दीजिए। रिकॉर्ड में नहीं हो रहा, आपका रिकॉर्ड में हो रहा है। पूरे इकोनॉमी, सिर्फ डॉलर, सिर्फ रुपी नहीं, पूरे इकोनॉमी तब आईसीयू में थी। पूरे दुनिया भारत को फ्रेजाइल 5 में रखा गया था और उस समय हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बिल्कुल नीचे था। बहुत सारे लोगों को इसमें दिक्कत है सर। आज पैंडेमिक हो, उसके बाद भी रशिया यूक्रेन वॉर हो, उसके बाद भी हमारे इकोनॉमी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है।
और मैं आज भी कह रही हूं, रुपया के विषय कितने लोग को अंदर से ऐसे जलन हो रही है। प्लीज बैठिए, आप बैठिए। माननीय सदस्य प्लीज, आपके मेंबर का जवाब नहीं सुनना है आपको। अगर आप आपके मेंबर का जवाब नहीं सुनो, मैं आगे क्रॉस बुला दूंगा। प्लीज आप। सर, इस सदन में दुख की बात है कि हमारे सदस्यगण भी हमारे विदेश में अगर हमारे दुश्मन कोई है, उन जैसे अगर हमारी इकोनॉमी अच्छा चलता है और अच्छे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, फिर भी उसके ऊपर जलन से बात करने वाले लोग इधर है। वो दुख की बात है, क्योंकि जब देश अच्छा आगे बढ़ रहा है, सब उसमें गर्व लेना चाहिए, ना कि मजाक उड़ाना। ये मजाक उड़ाने की बात है सर। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी और पूरे डॉलर विदेश में स्ट्रांग हो रही है। सिर्फ इकोनॉमी भारत का उसके खिलाफ खड़े हो रहे हैं, उसको आनंद लेना चाहिए, ना कि ऐसे मजाक की बात। शर्म होना चाहिए सर। प्लीज सप्लीमेंट्री। माननीय सदस्य, आपको कोई तकलीफ है क्या? आपने प्रश्न पूछा गया। स्पीकर सर, ये प्रश्नकाल है। माननीय सदस्य, मैं आपको लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, प्रश्नकाल में बीच में नहीं उठे। स्पीकर सर, माननीय सदस्य का प्रश्न है। फाइनेंस मिनिस्टर जी ने मेरा लैंग्वेज के बारे में कुछ कमेंट किए, ये ठीक नहीं है, क्योंकि मैं शूद्र हूँ, मेरे को स्वच्छ हिंदी नहीं आता होगा। वो ब्राह्मणवादी होगा, उनके लिए लैंग्वेज अच्छा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे थोड़ी यहाँ पर चर्चा हो रहा है, यहाँ हाउस का अर्थशास्त्र के बारे में चर्चा हो रहा है। मैं ये याद दिलाना चाह रहा हूँ सर, 1947 से लेकर अपना लोन्स का है सर 55,87,149 करोड़ सर। 8 साल में नरेंद्र मोदी जी सरकार ने इतना बारोइंग किए 18,744 करोड़। तो ये सरकार ने 67 इयर्स जितने भी सरकार आए थे, सब लोग मिलकर 55 लाख करोड़ बारोइंग किए। तो ये नरेंद्र मोदी जी सरकार ने 80 लाख प्लस करोड़ बारोइंग किए। हर साल 10 लाख करोड़ रुपए आप उधार मांगकर जी रहा है। इस देश को पूरा सर्वनाश सत्यानाश कर दिया ये सरकार। इसीलिए मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर, ये सरकार से, अगर रुपए ताकत करना है तो आप फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को देखना है। इसमें आपका एक्शन प्लान क्या है? पिछले 12 साल में जितना इन्वेस्टमेंट्स आया था हिंदुस्तान में, 2022 5 महीने में उससे ज्यादा लिक्विडेट कर लेके वापस चला गया। ये सरकार के ऊपर फॉरेन इन्वेस्टर्स को भरोसा चले गया, इंडियन इन्वेस्टर्स का भी भरोसा चले गया। इसीलिए मैं ये पूछना Sir, this question started with. हाँ, ले लिया। ये फैसला मुझे करना है, आपको नहीं करना। Sir, this question, the main question was on currency devaluation and foreign exchange reserves. Currency devaluation itself, sir, the word devaluation, मैं सिर्फ आपके संज्ञान में रखना चाह रही हूँ सर. Devaluation itself is a word or terminology which can be used when there is a fixed exchange rate mechanism. आज भारत में fixed exchange rate mechanism नहीं है. If anything, why did you accept this question? माननीय सदस्य प्लीज. सर, ये क्या प्रॉब्लम है आप लोग? आप भी. Sir, the question is given by the Secretariat. We are answering it. Accepting or not accepting is not a choice of the Mantri. Questions come, we are duty bound to answer. And in answering that, I'm explaining it, sir, if you permit me.
Devaluation is when it is in the fixed exchange rate mechanism. If any rate is coming down or going up, we are now talking about depreciation and appreciation. Devaluation itself is not in this context. One. Second, I have explained very clearly that the currency, particularly Indian rupee versus dollar, is because I've said this and I know it has become a good fodder for all those who want to play around in the social media creating memes. Oh, Indian, like the way people make fun of me because I don't eat onions. I do take care of onion-eating people, but still that is, that's all that they can contribute to the debate. Sir, my answer cannot, आप guide करेंगे sir मुझे जब my answer is not right. When yes, many things are not relevant which are being raised, but I will answer. You can always stop me, sir, when I'm wrong. So, Indian rupee has been strong against every currency. And that is proved, and I can read the records. As regards just the US dollar, because of the policies adopted by the US Fed, is getting stronger and stronger. That has been explained. Now, as regards the foreign exchange reserve, Reserve Bank has used foreign exchange reserve that it has to intervene in the market only to make sure that the dollar and rupee fluctuation doesn't go too much. In the sense, volatility of that kind of a fluctuation becoming too much can lead to very many different consequences. So foreign exchange reserve to some extent was used by the Reserve Bank. But today you find in the last couple of weeks more reserves, the reserve going up, it's increasing because of the flow of FDIs and FIIs. Now, each one of us can always prefer one over the other. FDI better than FII, FII better than FPI. All this can happen, but that is left to the wisdom of the market. But the fact remains that our reserves are also going up. Isliye, at this time, to talk that foreign exchange, the rupee depreciation, or reserves coming down, or FDIs, people are running away, no investor wants, that's absolutely not proven by data. I would request the honourable member to have a good look at the data to see how FDI is coming into India now in a big way. Among all the emerging markets, India receives more than 50% share of everything which goes to emerging markets. So a bit more data. Of course, data is available in my answer, and more is available in the public domain. Isliye, honourable member should please... Sir, therefore, kind of interference with honourable leader of the opposition, sir, I would appeal to you. आप तो बोलिए आपका जवाब. मेरा गला भी, it's my vocal cords are tearing by the level of his guttural powers, sir. I can't match up the vocal powers of the opposition. आप पूरा जवाब दें. जवाब दे दिया, sir. हो गया. एक बात सुनिए, एक मिनट प्लीज बैठिए. एक मिनट बैठिए, मैंने सर प्लीज एक मिनट बैठिए, सब बैठिए. बैठिए, आपको नहीं. माननीय सदस्यगण, मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूं. ये प्रश्नकाल है और माननीय सदस्य ने कहा कि मैं इस जाति से आता हूं, इस धर्म से आता हूं. ये सदन के अंदर आप वरिष्ठ सदस्य हैं, न यहाँ जाति के आधार पर न यहाँ धर्म के आधार पर चुनकर आते हैं. देश की जनता चुनकर आती है. कभी भी ऐसे शब्दों का यूज सदन में नहीं ले कोई भी, नहीं तो मुझे ऐसे सदस्य के खिलाफ कार्रवाई भी करनी पड़ेगी. रिकॉर्ड बोल रहा हूं मैं. प्लीज बैठिए. और आप अपनी भाषा पर बोलते समय कम से कम धर्म और जाति के आधार पर सदन में चर्चा कभी नहीं करेंगे. प्लीज बैठिए. माननीय सदस्य, आपको समस्या है क्या? आप अगर बार उठोगे तो बाहर निकाल दूंगा सदन से आपको. सुन लीजिए, वैसे नहीं चलेगा सदन तरीके से चलेगा पूरा. माननीय सदस्य, आप प्लीज, आपको मैंने पर्याप्त मौका दिया. बैठिए आप. माननीय सदन के नेता, आप समझाइए इनको, ये समझाइए, तरीका ठीक नहीं है. क्या जवाब देना है? आपसे मंत्री जी गाइड नहीं होंगी. क्वेश्चन नंबर
66. कराड़ी सनगन्ना अमरप्पा. उमेश जी जाधव. श्रीमती महुआ मोइत्रा. Thank you, sir. With your permission, I'd just like to ask the Honourable Minister that on the use of single-use plastic, we have already got the Plastic Waste Management Rules 2021, but those of us who come from rural areas, representing rural areas, we find that this ban has not really been implemented, and this is still a problem. What I'm asking is, what is the alternate mechanism we are using? Because still today, for most vendors, single-use plastic remains the cheapest form. So are we developing jute or cloth or anything at the same price point that people can actually pick up? Because if you are bringing a law in and not giving an alternative, that's why people are not accepting the alternative. So what is the other biodegradable options that the government is trying to promote? Thank you, sir. सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, सिंगल यूज़ प्लास्टिक पे जब हम लोगों ने बैन लगाया था तो हम लोगों ने विभिन्न व्यवसायी लोगों का, छोटे उद्योग वालों का पूरा सेमिनार करके हमने अल्टरनेटिव बताए थे। जिस प्रकार से सिंगल यूज़ प्लास्टिक में ईयरबड्स विद प्लास्टिक स्टिक्स और प्लास्टिक स्टिक्स बैलून फ्लैग्स, उसका जो अल्टरनेटिव है हमने पेपर क्लॉथ के फ्लैग्स, बॉम्बो कॉटन ईयरबड्स उनको हम लोगों ने किया है। ज़्यादा से ज़्यादा जो छोटे कटलरीज और बाकी के जो स्पून्स वगैरह हैं वो भी हमने लकड़ी के दिए। और इसलिए अगर आजकल आप विमान में भी जब यात्रा करते हैं तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक के जो विकल्प के रूप में इन चीज़ों का प्रयोग किया जाने लगा और इनसे निश्चित रूप से लघु और कुटीर उद्योगों को लाभ मिला है। इसके साथ ही साथ मंत्रालय इस बात पे भी काम कर रहा है कि जो बायोडिग्रेडेबल हैं उन भी उत्पादों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया जाए। और हम लोगों ने सिंगल यूज़ प्लास्टिक में जो जिन चीज़ों को बंद किया है उसके अतिरिक्त जो छोटी प्लास्टिक की जो थैली आती है वो 75 माइक्रो तक हम लोगों ने 30 सितंबर तक करी और अब दिसंबर के बाद 125 की जो माइक्रो वो जो उसकी लेंथ की जो प्लास्टिक की थैली है वो भी बंद होगी। मैं सदस्यों से भी ये कहना चाहूँगा, ये एक ऐसा कार्य है जिसमें सबको सहयोग देना चाहिए और अपने अपने क्षेत्र में जो वैकल्पिक हमारे कुटीर और लघु उद्योग जो हैं उनको इसमें प्रोत्साहित करना चाहिए। मंत्रालय से अगर इस संबंध में आपको कोई जानकारी सहायता चाहिए तो हम हमेशा आपकी सहायता के लिए भी उपलब्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 67 के सुब्बा नारायण। नंबर 67 टेबल पे रखा है। ऑनरेबल मेंबर सप्लीमेंट्री। Speaker, sir, I would like to raise my supplementary question in Tamil. Sir, only union government பல்வேறு பெருநிறுவனங்களுக்கு லட்சக்கணக்கான ரூபாய்களை ரத்து செய்திருக்கிறது, ரைட் ஆஃப் செய்திருக்கிறது. ஆனால் வெறும் 0.82% மட்டும் இருக்கக்கூடிய படிப்பு ஹையர் எஜுகேஷனுக்காக லோன் வாங்கியவர்கள் 0.82% என்று இருக்கிற நிலையில் கார்ப்பரேட் கம்பெனிகளுக்கு சலுகை காட்டுவதில் அக்கறை செலுத்துகிற ஒன்றிய அரசு ஏன் ஏழை எளிய உயர் படிப்பு படிக்க சொந்தத்தில் பண வசதி இல்லாதவர்கள் வங்கியில் கடன் வாங்கிய நிலையில் அதற்கு அவர்கள் ரத்து செய்ய வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை மாண்புமிகு நிதியமைச்சர் அவர்கள் நிராகரித்திருக்கிறார்கள். எனவே என்னுடைய ஒரே ஒரு கேள்வி, ஒன்றிய அரசு இந்தியாவில் உயர்கல்விக்காக லோன் வாங்கியுள்ள கடன்களை ரத்து செய்ய முன்வருமா என்று அறிய விரும்புகிறேன். आदरणीय माननीय अध्यक्ष महोदय, एजुकेशन लोन और Tamil, sir, if you permit me. பெரிய கம்பெனிகளுக்கு இங்க ரத்து செய்யல லோன்.
Sir, poi is an unparliamentary word. Whoever used it, will you please remove it? பெரிய கம்பெனிகளுக்கு ரத்து செய்யல. ரைட் ஆஃப் என்பது வேற, ரத்து செய்வது என்பது வேற. அதை புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம. இங்க யாருக்கும் ரைட் ஆஃப் செய்யலைங்க. ஒன்று. ரெண்டாவது, ரைட் ஆஃப் என்பிஏ இருந்து ரைட் ஆஃப் பண்ணப்பட்டவங்களுடைய செக்யூரிட்டிஸ் அவங்க பேங்க்ல கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஆதார பத்திரங்கள் எல்லாத்தையும் கூட நாங்கள் பேசிஸை வச்சுட்டு அவங்க கிட்ட இருந்து பணம் வசூல் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதை திரும்பி பேங்க்கு கொடுத்துட்டு தான் இருக்கோம். ஒன்று. ரெண்டாவது, எஜுகேஷன் லோன் எடுத்திருக்கவங்களுக்கு அந்த மாதிரி பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்றது ஒன்று. ஆனா இவங்க பணத்தை அவங்க கிட்ட கொடுத்த மாதிரி ஒரு விதமான நோக்கத்துடன் உள்நோக்கத்துடன் பேசுறது சரியானது கிடையாதுன்னு உங்ககிட்ட ரொம்ப தாழ்மையுடன் முன்வைக்க விரும்புறேன். மூணாவது, அவர் எஜுகேஷன் லோனுக்கு இப்படி பண்ணுங்கன்னு சொல்றது ஒரு சஜஷன் அவனை சொல்லாமே தவிர, இன்னைக்கு எஜுகேஷன் லோன்ல கொடுக்க வேண்டிய பணத்தை அவங்க கிட்ட இருந்து புடுங்கிட்டு பெரிய கம்பெனிக்கு நாங்க கொடுக்கறதா சொல்றது ஒரு உள்நோக்கத்தோட பேசக்கூடிய ஒரு கேள்வி. சார், நான் பதில் சொல்றதுக்கு முன்னாடி ரன்னிங் காமெண்ட்ரி கொடுத்துட்டு இருந்தா நீங்க கொஞ்சம் தயவு பண்ணி அதை நிறுத்தணும். நாங்க அதனால யாருக்கும் ரைட் ஆஃப் பண்ணல. ரைட் ஆஃப் அப்படிங்கிறது அவங்க பணத்தை நாங்க முழுமையா நாங்க எங்க மேல நஷ்டமா எடுத்துட்டு மாதிரி சொல்றது தப்பு. प्रश्नकाल समाप्त। माननीय सदस्यगण, माननीय अध्यक्ष जी को कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। माननीय अध्यक्ष जी ने किसी भी प्रस्ताव को की सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 3, श्री राव इंद्रजीत सिंह जी। Chairman sir, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 3 in today's list of business. आइटम नंबर 4, श्री अश्विनी कुमार चौबे जी। महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची के क्रम संख्या 4 पर अपने नाम के आगे पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से संबंधित सूचीबद्ध विवरण आइटम नंबर 5, श्री पंकज चौधरी जी। माननीय सभापति जी, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सामने वर्णित कागजात आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 6, श्री सुभाष सरकार जी। With your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against the name of my colleague, Minister Srimati Annapurna Devi, at serial number 6 in today's list of business. Item number 7, Dr. Subhash Sarkar ji. Honorable Speaker, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 7 in the today's list of business. Item number 8, Dr. Bhagwat Karat ji. Honorable Speaker, sir, with your kind permission, I rise to lay the papers mentioned against my name in the list of business for today. Item number 9, Mahasachiv ji. Sir, I have to report that Rajya Sabha at its sitting held on the 8th December 2022 agreed without any amendment to the Wildlife Protection Amendment Bill 2022 as passed by Lok Sabha. Item number 10, Shri P.P. Chaudhary ji. Sir, with your permission, I rise to present the 16th report, Hindi and English version of the Committee on External Affairs, 17 Lok Sabha on the subject India's soft power and cultural diplomacy, prospects and limitations. Item number 11, Shrimati Rama Devi ji. सभापति महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सामने क्रम संख्या 11 पर यथासूचीबद्ध सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी अस्थायी समिति 2022-23 38वां 39वां 40वां एवं 41वां प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी संस्करण में मैं प्रस्तुत करती हूँ। आइटम नंबर 11A, श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। Honorable Chairman, sir, with your permission, I rise to present the 36th report of the Business Advisory Committee. Thank you.
सर हमारी ये मांग है सर कि हिंदुस्तान की आज जो बिगड़े हुए कानून व्यवस्था की हालत है, इसके मद्देनजर सर आंतरिक सुरक्षा पे सदन में एक बड़ी चर्चा होना जरूरी है सर। वजह ये है सर, कश्मीर से देखो पंजाब तक हालत दिन पे दिन बिगड़ते जा रहे हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ये सरकार खुद ने ये स्वीकारा कि जम्मू एंड कश्मीर में 370 हट जाने की बाद जो टेरर कैंप इसका भी इजाफा हो चुके हैं। पहले 150 था, आप 225 हो चुके हैं। 370 हटने की बात सर 116 ऐसा हत्या हुई है। ब्राह्मण है, कश्मीरी पंडित है, हिंदू है, सिख है, लगातार ये चल रहे हैं सिलसिला सर। और सर कुछ दिन पहले सर ये पंजाब में सर तरन जिले में रॉकेट लॉन्चर ग्रेनेड भी फेंका जाते हैं। पिछले 13 महीने में 8 बार इस तरह की घटना घटी है सर। ये सारे मुद्दे को देखते हुए हमें लगता है कि हिंदुस्तान की आज जो कानून व्यवस्था की बुरी हालत हो रहे हैं, आंतरिक सुरक्षा पे सर एक बड़ी चर्चा सदन के अंदर होना चाहिए। ये दिन पे दिन ये हालात बिगड़ते जा रहे हैं सर। श्री मार्गणी भरत जी, श्री आर.के. सिंह पटेल जी। महोदय, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में माननीय मोदी जी ने और माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। महोदय, मेरे जनपद चित्रकूट में केंद्र सरकार द्वारा 200 शैय्या का मातृ शिशु एवं चिकित्सालय खोह में निर्मित कराया गया है। महोदय, कोरोना काल के दौरान इस निर्मित चिकित्सालय में कोरोना सेंटर बनाया गया था, किंतु वर्तमान में उक्त अस्पताल की उपयोगिता नहीं हो रही है। मैं चित्रकूट जिले के साथ साथ बांदा में भी 300 शैय्या का मेरे लोकसभा क्षेत्र में एक चिकित्सालय बना करके भारत सरकार और प्रदेश सरकार ने तैयार किया है। महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि ये चिकित्सालय बनकर के तैयार है। मातृ शिशु कल्याण केंद्र हमारा पिछड़ा क्षेत्र है, कांछा जिला है चित्रकूट, और बांदा बुंदेलखंड का पिछड़ा क्षेत्र है, और इन दोनों चिकित्सालयों में भवन बनकर के निर्मित है। वहाँ पर उपकरण और जो स्टाफ की आवश्यकता है उसको जल्द से जल्द पूरा करा करके इनको चालू कराया जाए, मैं आपके माध्यम से मांग करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री चंदन सिंह जी। मुझे शून्यकाल में मौका देने के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आभार प्रकट करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से मांग करना चाहूँगा कि नवादा जिले के नवादा जमुई पथ पर रेलवे गुमती नंबर 3 बस स्टैंड से पहले एसेट 8 जो नवादा जमुई पथ है के लेवल क्रॉसिंग नंबर 33 पर आरोग्य खानेमान का बिहार सरकार के BSRGCL द्वारा कराया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, उक्त आरोग्य खानेमान हेतु कई बार GPR बनाया गया है, परंतु अब तक आरोग्य खानेमान नहीं हो सका है। अध्यक्ष महोदय, मैं खुद BSRGCL के अधिकारियों से मिला तो मुझे बताया गया कि आरोग्य खानेमान हेतु रेल मंत्रालय के पास भेजा गया है, एवं रेल पदाधिकारियों से जब मिला तो उनके द्वारा बताया गया कि विभाग के द्वारा ड्राइंग आया है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह बताना चाहता हूं कि यह तीसरी बार ड्राइंग बनाया गया है, परंतु पूर्ण खानेमान नहीं हो सका है। केवल अधिकारियों द्वारा बार बार उसको तोड़ मटोड़ किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह करना चाहूँगा कि इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी करें ताकि रेलवे गुमती नंबर 3 बस स्टैंड से पहले SH8 नवादा जमुई पथ जो है लेवल क्रॉसिंग नंबर 33 पर आरोग्य खानेमान जल्द से जल्द हो सकें, एवं मेरे संसदीय क्षेत्र
नवाजा खजोख जाम से मुक्ति मिल सके। धन्यवाद। श्री दिनेश चंद्र यादव जी। धन्यवाद सभापति महोदय। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर अंतर्गत समस्तीपुर डिवीजन के सहरसा जंक्शन पर कोई न कोई गाड़ी आने से सभी रेलवे ढाला बंद कर दिया जाता है। सहरसा सोनबरसा कचहरी के बीच परमिनिया हाउस से सटे उत्तर ढाला को सील कर दिया गया है, जिससे परमिनिया एवं दुधौला के किसानों को खेती कार्य से भी आने जाने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। सरवा ढाला प्रायः बंद रहता है। वही हाल सहरसा से सहरसा कचहरी के बीच गंगजला ढाला बराबर बंद रहने से आम लोगों को भारी दिक्कत होती है। अतः जनहित में मैं रेल मंत्री से मांग करता हूं कि सोनबरसा कचहरी सहरसा जंक्शन के बीच परमिनिया ढाला, सरवा ढाला एवं सहरसा कचहरी के बीच गौतम नगर से उद्योग कार्यालय के बीच अंडरपास और गंगजला ढाला पर लाइट आरओबी का निर्माण कराई जाए। धन्यवाद। सुश्री कनिमोजी जी। Thank you, sir. The safety matches industry, a century-old industrial sector that has put the country on as one of the top countries in terms of safety matches production and export, is at a peril. While a kilo of cardboard which cost 40 rupees in January has already increased to 90, and red phosphorus from 400 rupees to 1000 rupees. And this matches, it depends on 14 raw materials, and all the costs have gone up. And the inflated capital and the costs have made the situation of this industry really bad. And the matches industries in Thoothukudi district, my constituency, give employment to over 10 lakh people. And most of the employees in this industry are women. Nearly 90% of the workforce is being women, and they get employment through this. And especially these areas are drought-prone areas, and this is the only source of income for these people. There is a lot of illegal import of one-time use plastic non-refillable lighters, which is big. This affects this matchbox industry in a very big way. One side, they're being affected because of the inflation of prices of raw materials. The other side, these one-time use plastic imports lighters have impacted them in another way. And the GST, we've made repeated requests, and even the Chief Minister of Tamil Nadu has written to the Union government, but we've had no response. So this industry is really, being ambushed from all sides. I request through you that the Union government has to ban this one-time use plastic lighters, and also support the matchbox industry by reducing the GST, and also ensure that the raw material cost does not go up. Thank you. श्री उदय प्रताप सिंह जी। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से एक महत्वपूर्ण विषय सदन के सामने रखना चाहता हूं कि सहारा इंडिया ने पिछले अनेक वर्षों में जमाकर्ताओं से करोड़ों अरबों रुपए की राशि अपने बैंकिंग सिस्टम के माध्यम, सोसाइटीज के माध्यम से पूरे देश भर में जमा कराई थी। हालांकि मामला सब जुडिश है, लेकिन चूंकि न्यायिक विलंब के कारण हिंदुस्तान में लाखों लोग ऐसे हैं जिनका करोड़ों रुपया उनके बैंक में जमा है, और कई लोग तो आज हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन जो हैं वो भी संघर्ष कर रहे हैं, उनका पैसा वापस नहीं मिल रहा। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। मेरे संसदीय क्षेत्र में करेली एक जगह है जहां पर श्री संजय जैन ने अपने जीवन की जमा पूंजी लाखों रुपए सहारा इंडिया में जमा कराई। कोविड के समय उनको कोरोना हुआ, उस जीवन मौत से संघर्ष किया, लाखों रुपए में उनकी मुश्किल से जान बची। बाद में ब्लैक फंगस के शिकार हुए, और उसके बाद उनकी एक आंख चली गई, और आज वो आर्थिक संकट से जो गुजर रहे हैं। सहारा इंडिया न्यायालय में मामला होने के नाम पर भुगतान नहीं कर रहा। संजय जैन जैसे देश में कितने लाखों लोग हैं जो सारी जमा पूंजी
उस बैंकिंग यूनिट में जमा कर दी है और आज अपने जीवन यापन के लिए पैसा नहीं निकाल पा रहे। मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं, कोई ऐसा मैकेनिज्म डेवलप हो कि जिसमें जिनके करोड़ों रुपए बड़े पूंजीपति बड़े व्यवसायियों का जमा है वो राशि उसको सेकंड प्रायोरिटी रहे, लेकिन जिनका कम पैसा है 20 लाख 30 लाख 40 लाख रुपए जो जीवन की सारी संपत्ति उसमें जमा कर चुके, प्राथमिकता के आधार पर ऐसे लोगों का भुगतान पहले हो जिससे कि वो अपना जीवन यापन कर सके। और बैंकिंग सेक्टर पर जो अविश्वास हुआ है, प्राइवेट सेक्टर की बैंक्स के ऊपर जो अविश्वास, सोसाइटीज पर जो अविश्वास हुआ है, उसका अविश्वास को दोबारा से हम विश्वास में कायम कर सकें। सरकार को ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करे और जिनको पहले आवश्यकता है उनको भुगतान पहले हो, ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करते हुए लोगों की मदद करें। आपके माध्यम से मैं वित्त मंत्रालय और न्याय मंत्रालय दोनों के माध्यम से कहूंगा कि इसको थोड़ा तेज गति से न्यायिक प्रक्रिया को निपटाते हुए लोगों के भुगतान की प्रक्रिया को आसान बनाया जाए, यही अनुरोध है। चेयरमैन साहब बहुत शुक्रिया जी। स्लिप भेज दीजिए, जो भी संबद्ध करना चाहते हैं कृपया अपनी स्लिप भेज दीजिए टेबल पर। जी जनाब, जो 5 अगस्त 2019 के बाद जो लंबा लॉकडाउन हुआ उसको देखते हुए एक योजना बनाई गई, प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम, PM-SSS के नाम से जाना जाता है। बड़ी अच्छी स्कीम रही। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख से, उनको भेजा गया बाहर इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए सारे मुल्क के कॉलेजेस में। बड़े मेरिटोरियस जो स्टूडेंट्स थे। जनाब, मामला ये हुआ कि 2 साल 1 साल से वो भी ये कोर्सेज कर रहे हैं। उन्होंने इसके अलावा NPS नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर भी अप्लाई किया स्कॉलरशिप के लिए, जो कि उन्हें मिला कहीं कहीं। अब ये हो रहा है कि AICT इनका ये रद्द कर रही है, इनका जो एडमिशन है उनको हॉस्टल से निकाला जा रहा है। एडमिशन रद्द करना क्यों, किस वजह से? कह कि आपने क्यों नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर अप्लाई किया था जब अब कि आपने लाभ लिया था इसका? मुमकिन है उससे कोई इनएडवर्टेंटली उनसे कोई भूल चूक हुई हो, लेकिन ये एक कंपैशनेट मसला है। इसको उनको बाहर करने से 2-2 1-1 साल से वो वहाँ के कोर्सेज कर रहे हैं, उससे ये ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सकता है कि वो आप कंडोन करें उनका जो लैप्स हुआ है। स्टूडेंट है मेरिटोरियस है, अगर लैप्स नहीं कर आप कंडोन भी नहीं करेंगे तो ये कहिएगा जी अगर आपने नेशनल पोर्टल स्कॉलरशिप पर कोई लाभ लिया है वो आप रिटर्न कीजिए। तो जनाब वो इस वक्त बड़ी पीड़ा में है, उनको हॉस्टल से निकाला जा रहा है, कॉलेज से निकाल रहा है। तो ये बात है। तो पहले मेरी गुजारिश ये होगी ये ना किया। तो दूसरा बड़ा अहम मामला है जनाब, आप तो बड़े मेहरबान हैं, 1 मिनट दे दीजिए मुझे। जनाब, कुलगाम में हेपेटाइटिस बीमारी फैल गई है, 2 बच्चे मर गए हैं। बड़ी बदकिस्मती की बात है और ये सब हुआ इस वजह से क्योंकि अनफिल्टर्ड वाटर सप्लाई किया जा रहा है। फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो लॉकड है, उसको ऑपरेशन नहीं बनाया जा रहा है। तो जनाब, एक तो ये है कि जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसके लिए उपाय करे, और दूसरा जो लोकल है वहाँ पर वो साहब जो हम कहते हैं कि चमकता कश्मीर, नया कश्मीर, 2 मंत्रालयों से संबंधित विषय हो गया ना। नहीं, आप तो मेहरबान है ना, तो ये मेहरबानी करके जनाब उसकी तरफ तवज्जो दी जाए। जो आप विषय रखते हैं उसकी तरफ वो संबंधित मंत्रालय को भेजा जाता है टू रिस्पॉन्ड, और यदि आप 2 मंत्रालयों से संबंधित विषय रखते हैं कठिनाई होती है। बस एक मिनट दीजिए जनाब। जी। बस जनाब, मैं चाहूंगा कि स्टूडेंट्स को रिलीफ दिया जाए, कैंसिल नहीं किया जाए उनका एडमिशन, और यहाँ उपाय किए जाए ताकि हेल्थ केयर के लिए बारे में वो एक तवज्जो दी जाए। श्री PP चौधरी जी। धन्यवाद सभापति महोदय। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में हमारे देश में रेलवे के क्षेत्र में अनेक नए आयाम स्थापित हुए हैं। महोदय, मैं आपका ध्यान मेरे लोकसभा क्षेत्र पाली में वर्षों से लंबित बिलाड़ाबर रेल लाइन की ओर आकर्षित करते बताना चाहूंगा कि इस रेल मार्ग को वर्ष 1997 में तत्कालीन रेल मंत्री जी द्वारा स्वीकृत कर शिलान्यास किया गया, लेकिन इस पर ठोस अमल नहीं हो पाया। महोदय, मेरे प्रथम बार सांसद बनने से लगातार मैं इस मांग को सदन एवं माननीय रेल मंत्रियों के समक्ष उठाता रहा हूं। मैं धन्यवाद दूंगा उन सभी मंत्रीगणों को जो वर्ष 2014 से अब तक जब ये मुद्दा उठाया उस पर नया सर्वे कर इस कार्य को आगे बढ़ाने हेतु प्रयत्न किए, लेकिन रेल मंत्रालय द्वारा 5-6 बार अलग अलग वर्षों में सर्वे कराए जाने पर भी नेगेटिव प्रतिफल के कारण प्लानिंग कमीशन द्वारा इस योजना को कॉमर्शियली नॉट वायबल बताकर छोड़ दिया जाता रहा। महोदय, फिर बिलाड़ाबर के विकल्प के रूप में मेरे आग्रह पर हमारे वर्तमान रेल मंत्री माननीय अश्विनी वैष्णव जी द्वारा वर्ष 2021 में बिलाड़ा से रास नई रेल लाइन जो 50 किलोमीटर है का सर्वे स्वीकृत किया है। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।
मान्यवर इस क्षेत्र में अब काफी मात्रा में लाइमस्टोन, सीमेंट, हैंडीक्राफ्ट आदि के उद्योग विकसित होने के कारण ये रेल मार्ग कॉमर्शियली वायबल हो गया है। ये लाइन सामरिक दृष्टि से भी विशेष महत्व रखती है। महोदय, बिलाड़ा से रास को नई रेलवे लाइन से जोड़ दिया जाता है तो हजारों की संख्या में लोगों को रेल सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा। साथ ही जोधपुर से अजमेर को सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी व जोधपुर से जयपुर, दिल्ली की दूरी भी काफी कम होगी। अतः मेरा आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से निवेदन है कि इस आमजन हिताय और वर्षों से लंबित बिलाड़ा रास रेल लाइन को अति शीघ्र स्वीकृत करने की कृपा करें। धन्यवाद। डॉक्टर मोहम्मद जावेद जी। हाँ, वैसे तो क्वेश्चन आवर में आपका विषय उठ चुका है सर। क्वेश्चन आवर में चर्चा होगी, लेकिन चलिए। हाँ सर, यस यस। नहीं, ये दूसरा मुद्दा है जी, उसी को सर। एएमयू शाखा जो है और उसके साथ में पुलिस लाइन में एनजीटी से रोक है, और रोक इसलिए है क्योंकि किसी ने कंप्लेन किया कि वो नदी किनारे है। लेकिन उसको देखते हुए 2017 में एनएमजीसी से ये निर्देश दिया गया कि उसको साइंटिफिक स्टडी करा दिया जाए एक्सपर्ट्स के द्वारा। एंड इन नवंबर 21, 2019 उस रिपोर्ट को एनएमजीसी को दिया गया, जिसमें ये बताया गया कि दैट एरिया डज नॉट फॉल ऑन द फ्लड प्लेन्स, नाइदर डज इट फॉल ऑन द रिवर बेड। उसके अलावा सर, ये सब मुद्दों को देखते हुए बिहार सरकार और एनएमजीसी के द्वारा कई मीटिंग्स हुई ये डिमार्क करने के लिए कि कौन सा फ्लड प्लेन्स है। तो बिहार सरकार और एनएमजीसी जल शक्ति के दौरान जो मीटिंग हुई सितंबर 22, 2 महीने कबल, तो उसमें बिहार सरकार ने ये कहा कि 76% ऑफ द लैंड एरिया इन द नॉर्थ बिहार, wherein 2/3 of Bihar reside, which is approximately 8.5 crores, उसमें वो रिवर बेड पे है। और वही नहीं कि 50% ऑफ द पीपल स्टेइंग इन बिहार, वो 8 करोड़ में सर, वो रिवर बेड पे हैं। तो इसको देखते हुए वही नहीं, तो उसने रिपोर्ट ये किया कि ये फीजिबिलिटी रिपोर्ट करना मुनासिब नहीं, पॉसिबल नहीं है, फीजिबल नहीं है इन बिहार। उसके अलावा सर, इसको देखते हुए बिहार गवर्नमेंट ने, बिल्डिंग डिपार्टमेंट ने बायलॉज चेंज करते हुए 2022 में फरवरी में ये निर्धारित किया कि गंगा किनारे कम से कम 25 मीटर दूर होना चाहिए कंस्ट्रक्शन, और ट्रिब्यूटरीज में एटलीस्ट 30 मीटर दूर रहना चाहिए। तो मेरा कहना ये है सर कि जो एएमयू और पुलिस लाइन है किशनगंज में, ये उसके रिपोर्ट के आधार पे इट डज नॉट फॉल ऑन द रिवर बेड और नाइदर फ्लड प्लेन। तो मेरी आपके द्वारा गुजारिश है जल शक्ति मंत्रालय को कि इस मुद्दे को जल्द से जल्द रिजॉल्व कराया जाए, ताकि वहां पे फंड दिया जा सके और कंस्ट्रक्शन हो सके और हमारे बच्चे पढ़ सके। सर श्री अमर सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सभापति जी। मैं आज सर मनरेगा ਦੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਚ ਔਰ ਮੇਰੀ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਚ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਰ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ UPA 1 ਚ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਜੇ ਫਸਟ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਚ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੁਝ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਜਦੋਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਹੈ ਸਰ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਚ और खासकर सर फतेहगढ़ साहब, आपने हलवारा विमानपत्तन के बारे में लिखा है सब्जेक्ट, तो सर यू आर चेंजिंग दैट। सर आई हैव इन्फॉर्म्ड सर द ऑफिस, बट हियर इज नॉट नोटेड दैट। ओके जी सर, मैं हलवारा पे भी बोलना है, अगली बार बोल दूंगा सर। कल ही गया था। चलिए चलिए या दोनों का मौका दे दो सर। ना ठीक है सर। हुआ क्या है, होया किया सर, दिसंबर बीत गया हैगा, लेस देन 50% फंड्स यूज हुए हैं पंजाब च और माई कंस्टिट्यूएंसी, मेरी कंस्टिट्यूएंसी। मटीरियल पेमेंट हो नहीं रहा किते भी सर। मजदूर में कल भी सरहंद च एक मीटिंग ले रहा सी भारत जोड़ो दी सर, 200 सरपंच मिलिया मैनू, ओ कहंदे कि साहब सानू 100 दिन तक की देना, सानू 25 दिन भी मजदूरी है नवी सरकार नहीं दे रही ना। असी जो पंचायत रेजोल्यूशन पास करके भेजते आ
क्योंकि सर लॉ ये है कि जो पंचायत रेजोल्यूशन पास करेगी वो काम होना चाहिए, ना कि कोई सरकारी आदमी बताएगा। सर वो नहीं दे रहे है कि इन्नी ज्यादा इंटरफीरेंस है पंचायतां च नवी सरकार दी, और ये तो सारी सरकार पहला हुण गुजरात तुरी फिरदी सी। उस गल नूं मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता। मैं सर जड़ियां 3-4 बेनतियां कर रही वो बोलना चाहना कि एक तो मेरी कंस्टिट्यूएंसी एक स्पेशल टीम मनरेगा दे लई भेजी जाए कि मजदूरां दी इन्नी हालत बुरी क्यों करती जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे फंड्स ने। सेकंड, मजदूरां दी डिमांड है कि 100 डेज तो 150 डेज करना चाहिए। तीसरा, मजदूरां दी डिमांड है कि इस मजदूरी ने 300 रुपए करना चाहिए। जी जी। और मैं सर एक होर भी सुजेशन देना श्री सुनील सोरेन जी, सर एक होर सुजेशन देना चाहना। धन्यवाद सभापति महोदय। हमारे संसदीय क्षेत्र दुमका थर्मल पावर प्लांट स्थापित करना नितांत आवश्यक है। संथाल परगना प्रमंडल अति पिछड़ा हुआ आदिवासी बहुल क्षेत्र है। वर्तमान में संथाल परगना प्रमंडल में एनटीपीसी कहलगांव एवं डीवीसी मैथन स्थित विद्युत संयंत्रों से बिजली की आपूर्ति हो रही है, जबकि दुमका लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत देवघर जिला के सारठ प्रखंड क्षेत्र के सिकटिया बराज थर्मल पावर के लिए उपयुक्त स्थान है, जहां जमीन और पर्याप्त पानी की उपलब्धता है। एनटीपीसी द्वारा पावर प्लांट स्थापित करना अति आवश्यक है, जो महज 14 किलोमीटर की दूरी पर कोयला का भंडार है। एसपी माइंस चित्रा कोलियरी है। यहाँ से थर्मल पावर प्लांट के लिए आसानी से कोयला उपलब्ध हो सकेगा। संथाल परगना में पावर प्लांट के स्थापना होने से क्षेत्र के विकास भी होगा, बेरोजगारों को रोजगार भी प्राप्त होगा। अतः महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार से मांग करता हूं कि हमारे संसदीय क्षेत्र दुमका में थर्मल पावर का स्थापित किया जाए, विद्युत संयंत्र आपूर्ति की समस्या का निदान हो। धन्यवाद। श्री गौतम सिगामणि पोन जी। Thank you, sir. I would like to express important issue regarding Life Insurance Corporation of India through you, sir. So LIC is just not like other public sector undertaking. It is connected with every common individual with its motto, even with life, even after life. Such a vital PSU is slowly being disinvested by the union government. Privatizing a profit-making PSU does not make sense. This move not only affects common public, but also affects lakhs of agents. Insurance Regulatory and Development Authority of India, IRDAI, is also ruining LIC by bringing Bima Sugam and operate insurance activities online. Bima Sugam, controlled by IRDAI at an investment of 85 crores. 30% of investment by Life Insurance Council, 30% by General Insurance Council, 35% by banks, and 5% by brokers. Fact is, Life Insurance Council and General Insurance Council were formed to strengthen human life and insurance sector. But the opposite is happening, sir. Sir, once this Bima Sugam portal comes to act, policyholders will face huge problem as agents will not be available to serve them as will be made online. Livelihood of agents will be erased. Already, the unemployment rate is increasing day by day. So this new scheme will not bring any good to the policyholders, but will put LIC on closure, which has an asset value of 42.54 lakh crores, sir. So this union government is selling every PSU one by one. Already union government has sold 3.5% of LIC shares at very low price. When LIC, the largest insurance company in the country, reported a massive net profit of rupees 15,952 crore for the quarter ended September 30, 2022, and recorded a net profit of just rupees 682.9 crore in the June quarter. Hence, Speaker, sir, through you, I request the Union Government and the Finance Minister to stop the moves of privatizing LIC and bringing in Bima Sugam, etc., and save the policyholders and agents of LIC. Thank you, sir. श्री हनुमान बेनीवाल जी। हाँ ठीक। They are listening. Okay, okay. हाँ हो गया। Not. हाँ हनुमान बेनीवाल जी। प्रेमचंद्र जी थकते ही नहीं है। आप 10 बार नहीं बोलो तो मजा ही नहीं सर। सभोज महोदय।
मैं आपके माध्यम से सेना में अग्निपथ योजना के माध्यम से संविदा भर्ती के निर्णय को वापस देने के संबंध में प्रधानमंत्री जी और रक्षा मंत्री जी की तरफ ध्यान आकर्षित करते हुए बताना चाहता हूं कि सेना जैसे संस्थान में अग्निपथ योजना के माध्यम से संविदा भर्ती का निर्णय किसी भी दृष्टि से सही नहीं है और ये निर्णय न तो सेना में जाने के इच्छुक युवाओं के हित में और न ही सेना के लिए सही है। महोदय, केंद्र सरकार के फैसले के विरुद्ध में राजस्थान सहित देश भर के युवा आंदोलित थे, बड़े आंदोलन हुए और ऐसे में सरकार को युवा वर्ग की भावनाओं को ध्यान में रखने की भी जरूरत है। महोदय, अग्निपथ के माध्यम से ली जाने वाली भर्ती में 4 वर्षों के बाद युवाओं के भविष्य पर भी सवालिया निशान है, क्योंकि इस योजना के तहत भर्ती होने वालों को न तो कोई रैंक मिलेगी, न ही कोई प्रमोशन और न ही कोई पेंशन मिलेगी और 4 वर्षों के बाद किसी को रिटायर करके सरकार भेजेगी तो उसका आगे का भविष्य कैसे सुनिश्चित होगा, ये चिंता का विषय। सरकार ने इस योजना को आनंद फन में लागू करके देश के युवाओं के हितों के साथ अन्याय किया। सरकार के इस निर्णय के विरुद्ध राजस्थान में प्रदेश भर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने लोकतांत्रिक रूप से प्रदर्शन किया। 27 जून को जोधपुर में 2 लाख लोगों ने इस निर्णय के विरुद्ध आरएलपी द्वारा आयोजित रैली में सम्मिलित होकर एक कड़ा संदेश केंद्र को दिया। आज सरकार अग्निवीरों को रिटायरमेंट के बाद सार्वजनिक उपक्रमों में नौकरी देने की बात करती है, लेकिन मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि पूर्व सैनिकों के लिए ग्रुप सी और डी में कर्म से 10 और 20% आरक्षित होने के बावजूद हकीकत में 1.92% और 1.66% नौकरी दी जा सकी। केंद्रीय सुरक्षा बलों में भी पूर्व सैनिकों को 10% नौकरी देने की बात कही गई, लेकिन हकीकत यह कि 1% भी कम पूर्व सैनिकों को नौकरी मिल पाई है। महोदय, मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है, मेरा लॉटरी में सर 1 सेकंड लूंगा मैं, कि पुरानी तर्ज पर सेना भर्ती रैलियों का आयोजन 2 वर्ष की छूट आयु में देते हुए, कोरोना काल के अंदर भर्तियां नहीं हुई थी, हमने जोरदार एक मामले को उठाया था साहब, 2 वर्ष की छूट आयु में देते हुए प्रारंभ की जाए और भारतीय सेना के साथ नेवी और वायुसेना की सभी लंबित भर्तियों को पूरा किया जाए। इस टीओडी अग्निपथ योजना के फैसलों को वापस लिया जाए। श्री रंगप्पा बारने जी, 1 सेकंड साहब, एक सेकंड साहब, 1 सेकंड। लॉटरी में है साहब, हम बिना फालतू परेशान नहीं करते। और मुझे तो चिंता इस बात की साहब, मनीष जी बैठे हैं, अग्निपथ का जैसे ही मामला आया सारी कांग्रेस बाहर चली गई। आपने विरोध किया था। श्री बारने जी, एक मिनट, बोलिए बारने जी। माननीय सभापति महोदय, होगा पत्रकार दिन रात अपने अपनी बात कह घर परिवार से दूर रहकर वो उनकी बात रिकॉर्ड में जा रही है, प्लीज अपने कर्तव्य का निर्वहन करते। महोदय, कोविड काल में के समय में जब पूरा देश लॉकडाउन में था, तब भी इन पत्रकारों ने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए देश भर के लोगों को जागरूक करते हुए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की और सदैव अपने कर्तव्य के प्रति सजग रहे, जबकि देश में बहुत सारे पत्रकार कोविड के महामारी में शिकार भी हुए। महोदय, कोविड काल से देश में मान्यता प्राप्त पत्रकारों को लंबी दूरी तक एक्सप्रेस रेल गाड़ियों की यात्रा करने के लिए 50% की छूट मिलती थी और पत्रकार अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए कोविड के समय में रेलगाड़ियों को बंद होने के साथ और बाद में पत्रकारों को रेलवे के किराए पर 50% छूट मिलने की रुकावट लगा दी और ये बंद किया गया, जबकि देश में कोविड की स्थिति सामान्य हुई है और सभी रेलगाड़ियां पूर्णतः चलने लगी है, लेकिन पत्रकारों को मिलने वाली 50% छूट बंद हो चुकी है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं, खासकर रेल मंत्री जी को, जो पत्रकारों को 50% छूट बंद की थी वो फिर से चालू करने की मांग करता हूं। धन्यवाद। श्री अजय निषाद जी, अजय निषाद जी नहीं है। श्री जयंत सिन्हा जी। सभापति महोदय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने 0R में एक महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं सदन का ध्यान झारखंड और विशेष रूप से मेरे निर्वाचन क्षेत्र हजारीबाग के सांस्कृतिक गौरव सोहराई कला की ओर आकर्षित करवाना चाहता हूं। सोहराई और खोवर चित्रकला आदिवासी महिलाओं द्वारा प्रचलित पारंपरिक कला के रूप हैं। वर्ष 2020 में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिलने के बाद अब इन स्थानीय कलाओं को वैश्विक मान्यता मिल रही है। महोदय, आपके माध्यम से मैं इस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड में इन कला रूपों को प्रदर्शित करने हेतु केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही मैं केंद्र सरकार से यह अपील करना चाहता हूं कि इन महिलाओं कारीगरों को और अधिक प्रोत्साहन प्रदान किया जाए
ताकि उनके लिए एक स्थिर आजीविका का साधन उपलब्ध हो। इस संबंध में मैं अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड से अनुरोध करता हूं कि यह महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादकों के बेहतर प्रचार प्रसार के लिए कदम उठाए ताकि उनके मासिक आयु को सुनिश्चित हो सके। इसके साथ ही दूसरे कलाकारों को अपने कौशल को और अधिक विकास करने और बेहतर मुद्रीकरण करने में सक्षम बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन किया जाए। अंततः विदेशों में चित्रकला की मांग को देखते हुए इन विदेशी बाजारों को कलाकारी के लिए अधिक सुलभ बनाया जाए। ये कदम न केवल झारखंड की आदिवासी महिलाओं के लिए बेहतर आजीविका सुनिश्चित करने में बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखने में भी काफी मददगार साबित होंगे। धन्यवाद। श्री जयदेव गल्ला जी। Thank you, sir, for giving me this opportunity. Sir, India is the world leader of seafood exports, and AP, with 39% share, is the highest producer of seafood and shrimp in the country, sir. In 2021-22, India exported 13.69 lakh metric tons of seafood, worth $7.76 billion, an increase of 32% over 2020, and is an all-time high export by value, sir. And the US, with 44%, and China, with 16%, are the main markets for India. But this year, import restrictions put by China due to COVID and US importing shrimp from Ecuador really hit the aquaculture industry, particularly shrimp exports, sir. Since AP is the largest producer and exporter of shrimp and prawns, also known as prawns, the aqua farmers are suffering like anything, sir. Fluctuations in the international market crashed the price of prawns and exporters and processors. Citing fluctuations in the international market, they reduced the price of 100-count shrimp to 160 to 180 per kg, which is not at all viable, sir. The viability for a 100-count shrimp is 280 rupees, sir. On the other hand, the price of feed has gone up. This proved to be a double whammy on the aqua farmers and needs to be addressed. And increase in lease prices of ponds, labor cost, etc., has only added fuel to the fire, sir. In view of the above, and to protect the struggling aquaculture sector, I request the Honourable Prime Minister to immediately intervene to hold talks with importers of other countries and ensure that our aqua products are exported smoothly with remunerative price, and also request to direct MPEDA to hold meetings with the Indian exporters and aqua farmers without any further delay to resolve the problems. Thank you. Shri Dulal Chandra Goswami ji. सभापति महोदय, बिहार राज्य अंतर्गत हमारा सांसदीय क्षेत्र कटिहार और पूर्णिया प्रमंडल में प्रचुर मात्रा में जूट और प्राकृतिक रेशे का उत्पादन किसानों के द्वारा किया जाता है। पूर्वोत्तर बिहार में अधिक मात्रा में जूट उत्पादन होने से यह भारत का दूसरा अधिक जूट उत्पादन राज्य है और इसी वजह से भारत सरकार ने कटिहार में आरबीएमएस जूट मिल का स्थापना किया था। लेकिन 2016 के बाद ये जूट मिल बंद पड़ा हुआ है और इसका वैकल्पिक कोई अन्य उपाय भी भारत सरकार के द्वारा नहीं की गई। महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कटिहार जिला एक आकांक्षी जिला है और केंद्र सरकार इन रेशों के उत्पादन में और उस क्षेत्र को बढ़ावा देने का कोई दूसरा वैकल्पिक काम भी नहीं करे। इसीलिए मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग करता हूं कि मेरा संसदीय क्षेत्र कटिहार में देश का पहला जूट और नेचुरल फाइबर पार्क का स्थापना करे ताकि वहां स्वरोजगार हो और जूट और फाइबर उत्पादक किसानों को लाभ मिले और देश का भला हो। धन्यवाद। तो एंटोनी जी, एक मिनट, 1 minute only, please. Make your submission within 1 minute. Very serious issue. Okay, serious. Chairman. छोटे में रखिए जी, make it more serious. Compact कीजिए उसको, please. Chairman, I take this opportunity to invite the kind attention of this House to the pathetic condition of 13 lakh rubber growers and 5 lakh 13 lakh farmers and 5 lakh laborers in the country. Due to continuing fall in prices of natural rubber, lakhs of families in the country are in acute financial crisis. 10 years back, per kg, 240 is the price of rubber.
production cost doubled. Now it is 140 rupees. Chairman, actually the rubber industry is one of the fastest growing sectors in the country. The greed of rubber-based industries to amass more profit is a real reason for the fall of prices natural rubber in the country. Chairman, I request the government to kindly take following steps to help our rubber growers and support the economy. First, the restriction of large-scale rubber imports to arrest further sinking rubber prices. Second, to protect rubber cultivation by including it in the Make in India scheme. Third step, to increase the subsidy amount for natural rubber replantation. In Northeast, it was 1.5 lakh per hectare. In Kerala, it is only 25,000. Srimati One more, Ramadevi. last point. The natural rubber is included under the category of agriculture crop. If it is included in the agriculture crop, it will. सभापति महोदय, आपने समय दिया शून्यकाल में बोलने के लिए। जी, मैं सदन का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र अंतर्गत शिवहर, सीतामढ़ी एवं पूर्वी चंपारण जिले में मनरेगा योजना में व्याप्त अनियमितता की ओर आकृष्ट कराना चाहती हूँ। महोदय, शिवहर, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण जिला एक पिछड़ा हुआ इलाका है, जहाँ वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 में मनरेगा योजना से कराए गए योजनाओं के क्रियान्वयन में काफी अनियमितता बरती गई है। क्षेत्र भ्रमण के दौरान समीक्षा करने पर इन योजनाओं में व्यापक भ्रष्टाचार साफ प्रतीत होता है। मुझे जानकारी दी गई है कि जल संरक्षण, बागवानी, लघु सिंचाई, तालाब निर्माण जैसे अधिकांश मिट्टी वाले कार्यों में मजदूरों के स्थान पर ट्रैक्टर, जेसीबी इत्यादि का उपयोग करके मजदूरों को दिए जाने वाले मजदूरी की राशि का अधिकारियों की मिलीभगत से बंदरवाट किया गया। पक्के कार्य योजनाओं में निर्माण में गुणवत्ता का घोर अभाव है। बकरी शेड निर्माण, पोखर निर्माण, उड़ाही, गौशाला निर्माण कार्य, बागवानी एवं वृक्षारोपण सहित कई योजनाओं का निर्माण कार्य पूरा किए बिना पुरानी योजनाओं को दिखाकर राशि उठाव हो चुका है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार मनरेगा योजना से अधिक राशि का आवंटन करके ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले गरीब कमजोर परिवारों को लोगों को कम से कम 100 दिनों का रोजगार प्राप्त करने सहित गांव का विकास के लिए कृत संकल्प थे। परंतु कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के कारण सरकार इतने महत्वपूर्ण योजना के माध्यम से निर्धारित लक्ष्य को बस सरकार से मांग कर लेते हैं, प्राप्त नहीं कर पाई। अतः सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध होगा कि मेरे संसदीय क्षेत्र में शिवहर, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण जिला में मनरेगा योजना में विगत 3 वर्षों का निर्माण किए गए योजनाओं की। Thank you, Chairman, sir. The railway ministry. एक मिनट प्लीज, माइक ऑफ हो जाएगा अदरवाइज। जी, Thank you, Chairman, sir. The railway ministry cruelly exploiting the Lord Ayyappa devotees proceeding to Sabarimala from various parts of the country, especially from southern states including Andhra Pradesh, Telangana, Karnataka and Tamil Nadu. Sir, it is a fact that there are special trains deployed for the purpose of facilitating easy access to devotees Sabarimala, but the trains are few and the ticket charges are very high, and the railway has no moral concern when it comes to exploiting the Lord Ayyappa devotees, even doubting the most important festive season of Mandala Magaravula Kalam, where Ayyappa devotees prepare themselves several months before the pilgrimage. Sir, I request an urgent the government to immediately intervene, reverse the excess fare on railway special trains scheduled to Sabarimala season by the railways and other devotees of Ayyappa pleasant journey. Profiting must not be done it and expenses Ayyappa devotees by the railways. Sir, श्रीमती गोमती साहब, सभापति महोदय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सभापति महोदय जी, आज देश में चौथा सबसे प्रदूषण शहर का खिताब प्राप्त हो चुका है। रायगढ़ जिला वर्तमान में प्रदूषण जनित बीमारियों से तेजी से ग्रसित हो रहा है। देश में जब भी प्रदूषण की बात होती है तो केवल दिल्ली पर ही आकर चर्चा सिमट जाती है, जबकि छत्तीसगढ़ का सुदूर वनांचल जिला रायगढ़ औद्योगिकीकरण के चलते प्रदूषण की विकराल समस्या का सामना कर रहा है।
लगभग 150 से ज्यादा छोटे बड़े उद्योग के अलावा दर्जनों कोयला खदानों से कोयला उत्खनन और परिवहन भी यहाँ के पर्यावरण का बहुत बुरा प्रभाव डाल रहा है। जल के स्रोत भी प्रदूषित हो चुके हैं। जिले की जीवनदायिनी केलो नदी पीने योग्य रह नहीं गया है। फ्लाई ऐश के अवैध भंडारण में आम जन जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डाला है। औद्योगिक विस्तार के लिए जन सुनवाई में औद्योगिक अवैध मैनेजमेंट पर्यावरण के नियम को तार अनुमति प्राप्त कर रहे हैं। छोटे झाड़ के जंगल के नाम पर जंगलों की अवैध कटाई की गई है। जर्जर हो चुकी सड़कों में हो रहे कोल ट्रांसपोर्टेशन और उद्योग की वजह से रायगढ़ जिले में प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में रियल टाइम फॉल्स की रेटिंग 363 तक पहुंच गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जिले की आबोहवा में सेहत के लिए खतरनाक है, लेकिन फिर भी इस दिशा में पर्यावरण संरक्षण विभाग कोई पहल नहीं कर पा रही है। दरअसल औद्योगिक हब कहे जाने वाले मेरे संसदीय क्षेत्र रायगढ़ जिला में फाउंडेशन की अध्ययन कर रही IIT खड़गपुर के एक्सपर्ट भी रिपोर्ट कहती है कि जिले के तमनाक तराई पर जाम। 1 मिनट, अपनी मांग रखिए जी महोदय जी। इसके लिए मैं पर्यावरण मंत्री जी से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहती हूँ। 1 मिनट, आपको पता है कितना होता है? प्लीज सर, प्लीज ट्राई टू सर। ड्यू टू drastic price fall of cardamom, our farmers are facing a crucial situation there, sir. Sir, the 80% of cardamom production is from my area, Idukki district, all over. Compare with this nation. Sir, I am the member of Spices Board also because I am representing that particular constituency, but I am feeling there is no meaning to continue in that particular post because Spices Board are also helpless. They are not pumping, they are not distributing any incentives, any benefits to our farmers. Government is not at all supporting Spices Board, but it is quite unfortunate. So I would register here, government should support by announcing a minimum support price to cardamom farmers, at least 1,500 rupees. As per Swaminathan formula, production cost plus 50% is enough. That means 1,500 rupees at least should announce as MSP. Otherwise, it will be a survival crisis of our cardamom farmers. Thank you, sir. नाम बुलाते समय आपका ध्यान कहीं और था। अध्यक्ष महोदय, आज आपने 0 आवर्स में मुझे बोलने का मौका दिया। आपके माध्यम से अपने रेल मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं सरकार से कि कानपुर शताब्दी हमारे यहाँ अप में रुकती है, डाउन में नहीं रुकती। जाते समय जब दिल्ली से जाती है वो नहीं रुकती है, जिससे कि लोगों को, यात्रियों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। दूसरा, अलीगढ़ रेलवे स्टेशन 2 लाइन से जुड़ा हुआ है। एक माल गोदाम आ रहा है, अगर वो माल गोदाम मेहराबल पर शिफ्ट हो जाता है तो उस तीसरी लाइन से कनेक्ट होगा। जो स्टेशन पे ट्रेनें लेट होती हैं उससे जल्दी आना शुरू हो जाएंगी। तीसरा, रेल विभाग का एक और मामला है। हमारे यहाँ पर ताला नगरी है, डिफेंस कॉरिडोर है। मोदी जी के द्वारा डिफेंस कॉरिडोर और ताला नगरी में बहुत उत्पाद बढ़ा और आगे जाके सरकार का डिफेंस कॉरिडोर में अलीगढ़ NCR के नजदीक है। राजधानी वहां पर नहीं रुकती है। अध्यक्ष महोदय, केवल आपके माध्यम से एक मांग है कि बेशक टिकट हमारी दिल्ली से बने, लेकिन बोर्डिंग अलीगढ़ हो जाए, तो जिससे हमारे व्यापारियों को आने जाने में सुविधा होगी हावड़ा राजधानी के लिए। श्रीमती हरसिमरत कौर बादल। शुक्रिया सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सर, 9 दिसंबर 2021 को किसानी आंदोलन में किसानों को उठाया गया था और उन्हें एक आश्वासन दिया गया था कि एक कमेटी बनाई जाएगी जिससे C2 + 50% आपको MSP का गारंटी एक कानून लाया जाएगा। लेकिन दुख की बात है सर कि उस चिट्ठी में जितने भी आश्वासन लिखे थे, चाहे ये कमेटी का गठन जिसमें अभी तक किसानों के साथ कोई तालमेल हो के ना MSP की बात ना गारंटी की बात, अब वो एक बार फिर आंदोलन के लिए दिल्ली के बॉर्डर में आने के लिए मजबूर हो रहे हैं सर। दूसरी बात, जो इसमें जिन्होंने अपनी जानें गंवाई थी, 850 किसान जो शहीद हो गए थे, उनके लिए कॉम्पनसेशन उन्होंने मांगा था। जिनके खिलाफ केस करे गए थे उनके केस वापसी की बात करी गई थी। और सर, सबसे जरूरी इसमें यह था कि जो बिजली अमेंडमेंट बिल जो इस चिट्ठी में लिखा था कि इसको पार्लियामेंट में तभी लाया जाएगा जब किसानों की जो इसमें तकलीफें हैं, उनके जो एप्रीहेंशन है, उसको एड्रेस किया जाएगा। लेकिन बिजनेस में मैंने देखा भाई, जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई कि उसको पिछले सेशन में ऑलरेडी टेबल कर दिया गया, अब उसको इस सेशन में लाने। सो मैं आग्रह करती हूँ सर, इमीडिएटली ये किसानों के साथ
एक जबान होती थी एक टाइम पे, अब तो सरकार की रिटर्न एश्योरेंस पे भी कोई भरोसा नहीं होगा, तो सरकार क्या करेगी? श्री गिरीश चंद्र जी। इसी तरह बंदी सिखों पे भी उन्होंने कहा था कि उनको रिहाई की जाएगी, लेकिन आज तक ना बंदी सिखों की रिहाई की रिटर्न। ओके, गिरीश चंद्र जी। सर माननीय सभापति महोदय जी, आपने मुझे बोलने का समय दिया, मैं आपका आभार करता हूँ। विगत 6 दिसंबर को बाबा साहब अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर साहब का 66वां परिनिर्वाण दिवस रहा है। न केवल अपना देश भारत बल्कि पूरे विश्व में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को नेता के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने समाज में दबे कुचले लोगों, महिलाओं, कामगारों के हकूकों की रक्षा के लिए आवाज उठाई। साथ ही जब भारत के संविधान सभा में मौका मिला तो भारतीय संविधान में उनके हक और हकूकों की रक्षा के लिए व्यवस्था की। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में समाज को सुधारने के लिए तरह तरह के जतन और उपाय करते रहे। उनके समाज सुधारक कार्यों में एक कार्य यह भी है कि हिंदू कोड बिल पर सरकार के समक्ष अपने विचारों को त्यागने की बजाय अपने राजनीतिक जीवन में विधि मंत्री पद को त्याग कर उदाहरण प्रस्तुत किया। समाज को सुधारने के लिए वह किस प्रकार कटिबद्ध है। माननीय सभापति महोदय जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से मेरी ये मांग है कि एक युग पुरुष, एक फिलोसफर, एक लेखक, एक अर्थशास्त्री तथा एक समाज सुधारक और करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र बन चुके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की परिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर को राष्ट्रीय विकास घोषित करने की मैं आपके इस माध्यम से सरकार से मेरी मांग है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद चेयरमैन साहब, तुसी टाइम दिता। मैं एक बहुत अहम विषय किसानां दे उत्ते गल करना चाहती हैं। पिछले महीने दे विच 3 वारी इन्हां दे आए ने अपने लैके मंग पत्तर, तो उन्हां दे उत्ते मैं गल करना चाहती हैं। सब तो पहले जो स्वामीनाथन कमीशन सी ਉਹਨੂੰ लागू करना चाहिए है और MSP सारे जेड़े फसलों के लिए देनी चाहिए है, पर यह तद लागू करना चाहिए है जब किसानों के नाल गलबात हो चुके। जो किसानों ने कर्जे लिते थे वो सारे माफ़ करने चाहिए ने। बिजली का बिल जो टेबल किया गया है उसनू फिर रिव्यू करना चाहिए है किसानों के नाल गलबात करके। लखीमपुर खेड़ी दे विच जो बेकसूर किसान अंदर दिते गए उन्होंने रिहा करना चाहिए है और जो उन्होंने उत्ते केस ने वो वापस लिते जाने चाहिए ने। जो क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम हैगी है उसनू जरूर लागू करना चाहिए, वो भी किसानों नाल गलबात करके, क्योंकि जैसा मौसम चल रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रही है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और बाकी जो फॉल्स केस सारे किसानों के उत्ते अंदोलन के टाइम दे कीते है उन्होंने वापस लेना चाहिए। निहाल चंद जी। धन्यवाद। धन्यवाद सभापति महोदय। सर, मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार का ध्यान सीमा अंतरक्षण योजना की तरफ मैं दिलाना चाहूँगा। सभापति जी, मेरे लोकसभा क्षेत्र में 2 ऐसे जगह हैं, एक नग्गी पोस्ट है, एक हिंदूमल कोट। सर, 1971 में नग्गी के समीप भारत ने युद्ध में जो वीर जवान शहीद हुए थे, मैं उनकी ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा, जहाँ पे 21 वीर सैनिक शहीद हो गए, जिनकी याद में एक स्थल पर स्मारक बनाया गया है, जहाँ प्रतिवर्ष 28 दिसंबर के दिन शहीदों की याद में वहाँ पे एक नागरिक मेला भी लगता है। और मैं समझता हूँ कि जहाँ पे शहीद स्मारक बनाया गया है वहाँ पे एक बहुत बड़ा मंदिर भी बना है और हमारे सब लोगों की एक आस्था का केंद्र है। मैं आपके माध्यम से मैं केंद्र सरकार का ध्यान मेरे सीमावर्ती क्षेत्र श्री गंगानगर की तरफ दिलाना चाहूँगा, जहाँ सीमा अंतरक्षण योजना में नग्गी को एक पर्यटक स्थल घोषित किया जाए, एक हिंदूमल कोट को पर्यटक स्थल घोषित किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री विजय वसंत जी। Speaker sir, I urge upon the government not to scrap the scholarship for minority students of class 1 to 8 pre-matric. It is the duty of our government to provide free education to all children and also to encourage students to come to school. The UPA government under Dr. Manmohan Singh had initiated the welfare schemes of providing education with scholarship for economically weaker students of minority communities. I would like to bring the notice of this August House that 24% of boys and 15% of girls drop out of classes 1 to 8 due to financial constraints. Sir, the Standing Committee of Education and NEP strongly recommends scholarships are must to tackle the dropouts. So to attract students and to avoid dropouts, our former CM Kamraj sir started the midday meal, and now our Honorable CM Stalin sir brings, along with the midday meal, he brings a breakfast also. So the scholarship is provided for great encouragement to the families and to send their wards to school without any burden. The justification given by the union government that the students are being provided free education under RTI is very fragile.
So government should take initial steps to attract students from all sections of the society to go to school. Continuation of scholarship for minority students is a big step for the India to become a nation of scholars. Sir, India can become a superpower only if we have 100% education. Thank you. Make your demand. Thank you. Thank you. हो गया. श्री सौमित्र खान. थैंक यू सर. सर हमारा बिष्णुपुर में हावड़ा चक्रधरपुर जो ट्रेन था वो जो पिछले 50 साल से चल रहा था उसका स्टॉपेज थे, लेकिन सर ये कोविड का बाद हमारा जो हावड़ा चक्रधरपुर जो ट्रेन है उसको स्टॉपेज नहीं दे चुका है. सर मैं जो मासरदा बिष्णुपुर में उतरते जारामाटी जाते थे, सर मेरा विनती है बिष्णुपुर में हावड़ा चक्रधरपुर का स्टॉपेज और उसके साथ साथ हमारा मोसाग्राम जो कनेक्टिंग रेल जो नहीं हुआ 1 किलोमीटर, सर उसका जल्दी होने के लिए मेरा दावा करता हूं. मनीष तिवारी जी. Thank you very much, Mr. Chairperson, sir. Mr. Chairperson, sir, in addition to the permanent commissioned officers in the Indian Armed Forces, there are 3 other categories of officers. They are the short service commissioned officers, emergency commissioned officers, and the women special entry officers. These officers also perform the same role and responsibility as the permanent commissioned officers. Unfortunately, they have been denied pensionary and health benefits in terms of what is available to the permanent commissioned officers. Most of them are, there are about 10,000 of them in number. Most of them are veterans of the 62, 65, 71 and the 99 wards. My request to the government, my appeal to the government is that these officers or these category of officers should also be given 1 rank, 1 pension on a pro rata basis. Health benefits should be extended to them so that they can live their lives in dignity and with the respect they deserve. Thank you, Mr. Chairperson, sir. थैंक यू माननीय उपाध्यक्ष महोदय. मैं आपके माध्यम से माननीय सड़क व परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी का ध्यान अपनी लोकसभा के एक बहुत ही जरूरी विषय की तरफ लगाना चाहता हूं. मेरी कुरुक्षेत्र लोकसभा के गांव उमरी में हरियाणा का ही नहीं बल्कि पूरे उत्तरी भारत का एकमात्र राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान है, जिसमें पंचायती राज विभाग का एक रास्ता जो ग्राम पंचायत की भूमि पोलीसरी झिंडा बाजीगर की तरफ से NH 44 GT रोड तक ही जाता है और आगे संस्थान तक जाने के लिए NH 44 को जो पार करना पड़ता है और इस रोड को पार करते समय कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं और हर समय दुर्घटना हादसा होने का डर बना रहता है. गांव उमरी की जनसंख्या लगभग 15,000 के आसपास है और लगभग 135 एकड़ ग्राम पंचायत की जमीन NH 44 GT रोड के दूसरी साइड है. इस ग्राम पंचायत का एक डेरा झिंडा बाजीगर है जिसकी जनसंख्या लगभग 1400 के आसपास है और डेरा झिंडा बाजीगर व आसपास के गांव के जो विद्यार्थी पढ़ने के लिए रोजाना गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी उमरी में आते हैं उन सबको NH 44 GT रोड क्रॉस करना पड़ता है. इसलिए आपसे निवेदन है कि इस रास्ते का निर्माण, भूमिगत रास्ते का निर्माण जल्द से जल्द कराया जाए. Thank you, sir. Sir, this is regarding genetically engineered crops. Sir, there is no policy clarity on this genetically engineered crops. आपने प्लीज नहीं थोड़ा कोई बात नहीं उनको बोलने जी. Sir, there is no policy clarity on the genetically engineered crops, sir. When we suggested in the last 6 months to 8 months, when the prices of feed costs for the poultry as well as for the shrimp has gone up, we suggested to the Agriculture Ministry and the Commerce Ministry to import the corn from other countries, sir. But the Agriculture Ministry and Commerce Ministry said we cannot import because they are all genetically modified crops, sir. But now, sir, recently Genetic Engineering Appraisal Committee (GEAC) has granted approval for the environmental release of genetically engineering mustard, sir. The reason that has been given was to decrease the import costs of the cooking oil, sir. So there is no clarity on which ones we are allowing and which ones we are not allowing, sir. Because of non-allowance of GE crops, there is a lot of free trade agreements also been stalled, sir. So there is need to clarity from the Agriculture Ministry on the genetically modified crops. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी. मैं आपका ध्यान मेरे संसदीय क्षेत्र जो कि दोनों आकांक्षी जिले हैं करौली और धौलपुर, उनके स्वयं सहायता समूह की समस्याओं की ओर दिलाना चाहता हूं.
माननीय अध्यक्ष महोदय जी, स्वयं सहायता समूह की मेरे धौलपुर जिले में 60,000 महिलाएं जुड़ी हुई है और करौली जिले में 30,000 महिलाएं जुड़ी हुई है। और प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से और मार्गदर्शन से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम ये स्वयं सहायता समूह कर रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय जी। लेकिन मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि कुछ बैंक्स वगैरह जब ये महिलाएं खाता खोलने जाती है तो बैंक के कुछ अधिकारी लापरवाही करते हैं, उनको खाता खोलने में डिले करते हैं, परेशान करते हैं, और जब स्वयं सहायता समूह को लोन देने की बारी आती है तो वो बैंक के अधिकारी और वो बैंक और जो लीड बैंक भी उन चीजों का कोई नियंत्रण नहीं रख पाते। जिला कलेक्टर महोदय की मीटिंग में भी उनके भी ये नियंत्रण में नहीं आते। मेरा आपसे आग्रह है, माननीय वित्त मंत्री यहाँ बैठे हैं, कि इन बैंकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं माइनॉरिटी स्टूडेंट्स जो लाखों की संख्या है उनकी आवाज बनकर यहाँ पर खड़ा हूँ, जो सरकार से सिर्फ एक निवेदन करना चाह रहे हैं कि हमें पढ़ना है। अध्यक्ष महोदय, कुछ दिन पहले माइनॉरिटी मिनिस्टर ने एक फैसला लिया है कि प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर माइनॉरिटीज बंद कर देंगे। उसके कुछ दिन के बाद उन्होंने फैसला लिया है कि मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप ये बंद कर दी जा रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं, उन्होंने जो तर्क दिया है कि आरटीई के अंदर, राइट टू एजुकेशन के अंदर, ये फैसिलिटीज 1st to 8th स्टैंडर्ड के बच्चों को दी जा रही है, लेकिन हर माँ बाप चाहता है कि अपने बच्चों को अच्छे स्कूल के अंदर पढ़ाया जाए। आरटीई के अंदर सरकारी स्कूल्स के अंदर तो आपको मिलता है, प्राइवेट स्कूल्स के अंदर ये मौका नहीं मिलता है। इसीलिए हम आपसे ये अनुरोध करना चाहते हैं, सरकार से ये अनुरोध करना चाहते हैं कि हम पढ़ना चाहते हैं। अगर ये बच्चों को अगर हम पढ़ाई से दूर रखेंगे तो हम आपसे इतना ही अधिष्ठाता महोदय, भारत और नेपाल के या हमारे पड़ोसी देशों के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं और उसी का नतीजा है कि जिस तरह से अभी G20 की इस वैश्विक परिस्थितियों में हमें प्रेसिडेंसी मिली है, तो हमेशा भारत अपने पड़ोसियों के साथ पारगमन का हो, व्यापार का हो, इनके हितों के साथ हमेशा प्रतिबद्ध है। भारत नेपाल की हमारी 1850 किलोमीटर की सीमा जुड़ती है। उस पार लुम्बिनी है, इस पार कपिलवस्तु है, और गौतम बुद्ध से जुड़े हुए पूरी दुनिया के देश के जो बुद्धिस्ट हैं वो आते हैं और उस तरफ लुम्बिनी जाते हैं और उसके बाद उनको गोरखपुर होकर के कपिलवस्तु जो गौतम बुद्ध का जन्मस्थान वहाँ आते हैं, श्रावस्ती आते हैं, सारनाथ, कुशीनगर जाते हैं। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि भारत सरकार 13 इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बना रहा है, नेपाल के साथ भी, म्यांमार के साथ भी, बांग्लादेश के साथ। विराटगंज, वीरगंज में बन चुका है। आज सबसे एक महत्वपूर्ण भारत और नेपाल के लिए ककरावा है, जो लुम्बिनी उस तरफ है और इस तरफ कपिलवस्तु है, सिद्धार्थनगर। इसको जोड़ने के लिए मैं एक इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट उस ककरावा में स्थापित करने की मांग सभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
Namaskar, hello and a very warm welcome viewers. You're watching the special presentation of Sunset TV, Samvad, with your host Kriti Mishra. And on today's show, we have a very special guest, Civil Aviation and Steel Minister, Mr. Jyotiraj Scindia. So welcome to Sunset TV and thank you so much for joining us. Having me. So today, let me limit my questions to Civil Aviation Ministry. And let's begin talking about Digi Yatra that you recently launched for 3 airports. That, of course, is meant for providing seamless processing of passengers. But I was reading a few articles. A lot of them raise concerns on the privacy aspect of it. How do you allay those concerns? Very good question, Kirti. So let me tell you first of all that what Digi Yatra is doing is going to transform the experience for our customers. Using FRT, facial recognition technology, we are going to make the experience from when you enter the airport till when you board the aircraft both a seamless and a contactless process. And what I mean by that today is as opposed to 3 or 4 points of call where your identity is checked, your boarding pass is checked, through FRT you will gain a contactless process all the way till when you board. There certainly was concerns with regard to privacy, not only privacy but confidentiality. That's true. And on both counts, what we had started with first was that we would be centralizing your data and your information on a server. Once that decision was taken, these concerns were raised. And understanding that, we decided not to go with a centralized aggregated system, but a decentralized and a disaggregated system. Now, what do I mean by that? Now, to make it simple for our viewers, what we have decided to do is that you will download a app on your phone called Digi app and Digi Locker. Based on that, you will then raise and put in place your Aadhaar details onto that app. You will then take a recent photograph of yours, which will be then matched with your Aadhaar details. And that's it. 24 hours before you travel, you will upload that information on a blockchain system with the airport, only the airport that you're traveling with. When you reach the airport, the airport server will have your information residing in it immediately. When your photograph is taken, that photograph at that entry point will then be matched with this information, and the doors will immediately open and you'll pass seamlessly through till you board. Once you have boarded and once you have completed your journey, within a period of 24 hours, all the information that you have uploaded only onto that airport will be completely purged. And that takes care of all the issues with regard to confidentiality as well as with regard to privacy. So all those concerns are assuaged that our data is of course safe. So talking about another aspect, the consolidation in this sector. After years of cutthroat competition, we saw the merger of former Air India, the national carrier, and Vistara. So how do you view the impact of this consolidation on the overall sector, on the civil aviation space? I think it's a very positive sign, and the very fact that you will have a aggregated carrier, if you will, that looks at the merger on the one hand between Air India and Vistara, and on the other hand between Air Asia and Air India Express. And you will have a single airline that will offer a bouquet to our customer, both on the FCC side, which is the full cost carrier, which will be Air India plus Vistara, and on the ULCC side, the ultra low cost carrier, which will be the combination of Air Asia and Air India Express. And I think that the value proposition will only be enhanced through this combination of an offering for our customers. You are probably reading the papers as well as I am of their fleet expansion plans. Yes. And the very fact that what gives me a degree of confidence that along with the narrow-bodied aircraft that they're acquiring, which are the Boeings and the Airbuses 320s as well as the Boeing 737s,
They have a very aggressive plan on wide-bodied aircraft as well, yes, with the Boeing 777s that they're acquiring. Now that to me is a sign of a resurgence for us, because what is important for me as Civil Aviation Minister is for our carriers to be able to carry our Indian flag across the 7 seas. And India must endeavor to create herself a hub within India for our domestic and international travelers, as opposed to our current international hub being in our neighboring countries. So I need to ensure that we are able to recreate that hub within India. And I think that both the combination of Air India as well as all our other carriers that are slowly moving towards the wide-bodied market and the long-haul market is a very, very encouraging sign to be able to achieve that objective. Absolutely, sir. Point well taken. Let me focus on the concerns of the passengers now. Sure. Sir, I buy all those arguments that supply chain disruptions, high jet fuel prices, demand. But sir, the airfare, they're absolutely off the roof. So many of us, many of the air travelers want the price capping back. Do I get some commitment from the Civil Aviation Minister? So, first, Kirti, let me just take you back in time. Yes. If you look at how our industry has evolved, and let me give you the analogy of what you and I can, or for that matter, any citizen in our country can no longer live without, which is this box. Absolutely. Okay. Unfortunately, I will say, because I think rather than that box becoming our slave, we become a slave to the box. True. In 1993, when I returned from university and I took on my first job as a banker, fortunately till then we did not have this box in India, right? Yes. And you see when this box entered, as a mobile phone entered our lexicon and our lives, initially it was a product that was priced out of our reach. Each one of these instruments costed roughly about a lakh of rupees. You used to pay 16 rupees a minute to be able to use them. And as you saw economies of scale come in, and the oft repeated concept in economics of low margin, high volume, low margin versus low volume, high margin, that transformed the sector as well. Today, you can get a mobile phone or a handset for 3,500 rupees, and voice today is free. A similar transformation, if you will, has taken place in the area of civil aviation. In the mid-90s, when you or I would have to travel, forget about tertiary cities, but even within metros, you would be paying upwards of 30,000, 40,000 rupees per ticket. That no longer is the case. Yeah. Why? Because if I don't take you way back to the 90s, but let's say in 2013-14, when Prime Minister took over government, we had 74 airports in our country. Right. Over the last 8 years, we have built out close to about an additional 71 airports, waterdromes, and heliports. That means we've doubled our capacity almost from 74 to 145. It took our country 70 years to build 74 airports, and we built 71 airports, waterdromes, and heliports in a period of 8 years. That's the transformation that's taken place. Right. Similarly, if you look at the fleet size, in 2013-14, we had 400 aircraft in our fleet. Today, we have close to 700. And we are going to grow, going back to your earlier question, between all our carriers, whether it's Indigo, SpiceJet, Air India, Akasa, other carriers hopefully that will come in. We are going to grow at roughly between 75 to 100 planes on an annual basis. So when you are going to see that volume come in, couple that with the fact that pre-COVID we had touched a high of 4,07,000 passengers per day. Yes. Yesterday we have broken that ceiling. Yeah. Yesterday we had 4,13,000 people travel in our country, right? So you're looking at a robust demand as well as supply increasing both on infrastructure and carriers. Both together will, I'm sure, provide a value proposition for both sectors to be able to evolve a robust market. Today our fares are nowhere close to where they used to be in the mid-90s. That's right. They're a fraction of that, if you will. But certainly there are structural issues, pricing issues that do play their part.
Now, let me explain what I mean by structural or pricing issues. Our sector is a seasonal sector. So you have a lean season in monsoon, let's say starting in late May, early June, all the way till early October. And then once the festive season kicks in, you see a hockey stick transformation in demand, which is what we are going through currently. And therefore, seasonal variations also have their effect on prices, because when there is no pressure on the number of seats, then the pricing obviously goes down. But when there's immense pressure on seats, and you know that ticket pricing is done on a bucket basis, then the pricing also does go up. The second factor that is playing its part is that in 2019-20, air turbine fuel, which constitutes close to 50% of the cost structure of an airline, okay, was priced at roughly 53,000 rupees a kiloliter. That ATF today is priced at 1,17,000 rupees a kiloliter. So if 50% of a enterprise's cost structure has doubled, that is going to have an effect on pricing. But let me tell you that the multiplier effect on pricing has not happened, because there's only so much that a market can absorb in terms of increase in pricing. So even though ATF has gone up 2 times, pricing has not gone up twice. But it certainly does have its effect on pricing. Right. Which is why I have taken, over the last year, our ministry has worked tremendously with our state governments to at least reduce the effect of VAT on ATF pricing. And let me give you the data on that. In July 2021, we had 12 states that priced VAT on ATF between 1 to 4%. And we had 26 states that priced VAT on ATF between 20 to 30%. So assume a 2 times delta on ATF pricing plus a 20-30% hammer on that, 2x pricing with respect to VAT. Within the last year and a half, with huge persuasion, literally pleading with state governments how if you lower VAT, you will incur the economic rationale of the Laffer curve, where if you lower taxes, you will have higher revenues through greater refueling, you will have greater economic activity by greater connectivity coming into your state. And I must, through you, put on record and through you thank all the state governments that have moved from a 20-30% VAT regime to a 1 to 4%. And we've had 16 states that have moved from that basket of 20 to 30% VAT regime to a 1 to 4%. So in July 2021, we had 12 states in a lower basket and 26 states in a higher basket. Today, we have, with 16 moving over, 28 states in the lower basket of 1 to 4%, and only 8 remaining states in the higher basket of 20 to 30%. And through you, I'd like to implore and plead with the balance 8 governments, kindly come on board on this side so that you can also experience what civil aviation brings to your economy, as well as higher revenues in the years to come. Well, I just cannot dispute that economic theorem that you've given me, sir. But, sir, from January, extra levy on the airlines for the regional connectivity, that may also push prices. Well, what you have to understand is, at the end of the day, what is it that we want? Would you like civil aviation to be limited only to metros? Not at all. Would you like civil aviation only to be limited to a few that are traveling? Or would we want all of India to be part of this exercise? But, sir, I wouldn't want to pay exorbitant prices as well. So let me finish. If it is the latter that we want, which is all of India to be part of this initiative, which is very much the Prime Minister's sankalp and his vision, which is why he inspired the Udan Yojana, which is Ude Desh Ki Aam Nagrik. And the real democratization of civil aviation has taken place in the last 8 years of Narendra Modi ji's government. And that has seen a huge transformation, as you yourself have experienced.
earlier towns and smaller cities that were way off the civil aviation map. Let me cite some examples for you, whether it is Darbhanga, whether it is the only city on the western coast of Orissa, Jharsuguda, whether it is Rupsi in Assam, whether it is Kishangarh in Rajasthan, which houses Dargah Sahib of Ajmer, and a huge marble trading manufacturing community. Many examples such as these would never have crystallized. So therefore the RCS levy that is at 5,000 going to 10,000 will then aid many more Udan Yojanas taking off, both for tertiary cities and connectivity to unserved or underserved markets. And let me give you the data. In the last 6 years that Udan has been in place, we have flown close to 1.1 crore passengers, many of whom would have seen a plane above their head, but never have been able to travel on those planes. We have flown close to about 2,15,000 flights. And the Udan Yojana, as an offshoot, which many people have not noted, has given birth to close to 11 new airlines on a regional basis, which is something that is not talked about. So there have been many dividends of the Udan Yojana, which will contribute to the national task of development. So before I talk about manufacturing, I'll quickly focus on safety. So we saw a spate of incidents, smoke in the flight cabin, we saw emergency landings. Do you think that perhaps you need to tighten oversight? Well, let me say this, that the primary responsibility of safety in terms of conducting processes lies with the airlines. Our regulator, our safety regulator, which is DGCA, has been on top of things, has been making sure that processes are followed. And let me give you an example of that. In 2021 calendar year, DGCA on an annual basis has something called an annual surveillance plan, based on which it checks engineering, it checks processing, it checks all of that. We had planned close to about 2,700 checks through the annual surveillance plan. For calendar year 22-23, which is going on now, calendar year 22, we have increased that 2,700 number to close to 3,742. So there has been almost a 50% increase in the annual surveillance plan. If you take the calendar year number of 3,742 and you prorata it, we've just finished the month of November. So let's say 8 months out of the 8 or 10 months out of the 12 months. It would work out to a number close to roughly about 2,800 or so. As on date, November 30th, we have completed 4,219 checks across all parameters. In the last 6 months, DGCA has put in place a full oversight across all airlines. The engineering staff that do the engineering checks on aircrafts at all airports, which were initially type A AMEs, has been changed to B1, B2 type, which is a much higher level. The CAMO audits and the AMO audits have been increased across all airlines. With regard to safety, all the safety officers across all airlines have been given a protocol that needs to be followed. So DGCA, I believe, is doing its job of making sure that on a safety wavelength, airlines are practicing exactly the protocol that needs to be in place. Some manufacturing. Now we saw the Airbus unit in Vadodara. We also have the PLI scheme for drones in place now. So how do you further plan to push manufacturing, because that has the multiplier impact? Well, I think you're absolutely right, Kirti. And I think that manufacturing has tremendous potential in our country. But for that, in any country, civil aviation needed to achieve scale. We have now achieved scale in India. And I think the time is ripe to put in place and concentrate not only on airlines and airports, but to concentrate on the full ecosystem of civil aviation. And that civil aviation ecosystem entails
FTOs, flying training organizations, entails helicopters, entails ground handling, entails MRO, entails manufacturing. And as far as manufacturing is concerned, I think, again, Prime Minister's vision of Atmanirbhar Bharat, make in India, but make for the world. I think that transformation has happened over the last 8 years. The very fact that today Boeing, along with Tata and other companies, have multiple facilities in India, export goods over $1 billion made in India. Airbus exports goods worth roughly about $650 million from India. One of the largest MRO majors, Safran, is putting in place a $150 million facility in India for their CFM LEAP engines. Along with that, this facility in Vadodara will really be a quantum leap forward. It is for the first time in history that Airbus is actually putting up a facility in India, the C295 facility for transport aircraft, replacing our aged old Avro fleet, 56 aircraft, almost 23,000 crores in terms of investment. 16 of them will be brought in fully built from their Spanish facility, but the balance 40 will be made in India. Now, what does that entail? That entails close to about 13,000 parts being made domestically. Right. That entails 4,600 sub-assemblies being made domestically. Right. That entails companies like Bharat Dynamics and Bharat Electronics building the electronic warfare systems that will go into these aircraft indigenously. What that entails is close to about 5,500 jobs domestically. What that entails is close to about 300 of our engineers being taken to the Spanish facility and being trained there and brought back. So think of exactly the point that you made in your question, the multiplier effects that this will have across not only the ecosystem of civil aviation, but across the value chain, across multiple industries. Because do not forget that it is the area of space and the area of civil aviation that is on the cutting edge in terms of new technology. And from applications in space and on aviation follows the adoption of those technologies into multiple areas. A case in point for you is automobiles. Yeah. Today, many of us have head-up displays that are put up in cars. Where have those HUDs come from? They've come from space technology and fighter technology and airplane technology, which have now been adapted to automobile technology. So the spin-offs of that will be great for India in the days to come. Well, on that note, thank you so much for joining us, and thank you so much for this candid conversation. Thank you very much for having me. Thanks a lot, sir. Well, viewers, that's all I had for you in this edition. Thanks for watching and stay tuned to Sunset TV. Goodbye for now from my side.
शिक्षा का प्रयोग करते हैं। काशी और तमिलनाडु ये भारत की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत के प्रमुख केंद्र हैं। दोनों के बीच सदियों से अटूट रिश्ता है। इस रिश्ते को पुनर्जीवित करने के लिए, इस रिश्ते को और मजबूत करने के लिए काशी तमिल संगमम का आयोजन किया जा रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी में। मैं हूं नवविक्रम सिंह। आज अपने विशेष कार्यक्रम में आपको बताएंगे काशी तमिल संगमम के बारे में। काशी और तमिलनाडु की विशेषताएं, विचारधाराएं, दर्शन और पौराणिक धरोहर इन क्षेत्रों को विशिष्ट बनाती है। ये जो आज यहाँ विरासत मौजूद है, दरअसल वो सैकड़ों वर्षों की यात्रा है। इस विरासत को सहेजने और जन जन तक पहुंचाने के लिए सरकार ने एक अहम शुरुआत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को वाराणसी में 1 महीने तक चलने वाले कार्यक्रम काशी तमिल संगमम का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि चाहे वो नदियां, विचारधारा, विज्ञान या ज्ञान का संगम हो, भारत में संस्कृति और परंपराओं के हर संगम का उत्सव मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि वास्तव में ये भारत की शक्ति और विशेषताओं का उत्सव है और इस प्रकार ये काशी तमिल संगम को अद्वितीय बनाता है। हमारी सांस्कृतिक राजधानी काशी है, तो दूसरी ओर भारत की प्राचीनता और गौरव का केंद्र हमारा तमिलनाडु और तमिल संस्कृति है। ये संगम भी गंगा यमुना के संगम जितना ही पवित्र है। ये गंगा यमुना जितनी ही अनंत संभावनाओं और सामर्थ्य को समेटे हुए है। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने पुस्तक तिरुक्कुरल का 13 भाषाओं में अनुवाद का भी विमोचन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि काशी तमिल संगम आजादी के अमृत काल के दौरान हो रहा है। उन्होंने कहा कि अमृत काल में हमारे संकल्प समूचे देश की एकता से पूरे होंगे। उन्होंने कहा कि भारत एक ऐसा राष्ट्र है जो हजारों वर्षों से सहज सांस्कृतिक एकता को जी रहा है। प्रधानमंत्री ने जोर दिया कि काशी तमिल संगमम हमें हमारे कर्तव्यों का बोध कराने और राष्ट्रीय एकता को मजबूती देने वाले संकल्प का एक मंच बनेगा। हमें आजादी के बाद हजारों वर्षों की इस परंपरा को, इस विरासत को मजबूत करना होगा। इस देश का एकता सूत्र बनाना था, लेकिन दुर्भाग्य से इसके लिए बहुत प्रयास नहीं किए गए। काशी तमिल संगमम आज इस संकल्प के लिए एक प्लेटफॉर्म बनेगा। ये हमें हमारे इस कर्तव्यों का बोध कराएगा और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के लिए ऊर्जा देगा। स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। काशी तमिल संगमम का मकसद देश के 2 सबसे महत्वपूर्ण और प्राचीन शिक्षा केंद्रों तमिलनाडु और काशी के बीच सदियों पुराने संबंधों का उत्सव मनाना, फिर से इसे मजबूत करना और खोज करना है। तमिलनाडु से 2500 से ज्यादा प्रतिनिधि काशी की यात्रा कर रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें आधुनिक प्रणालियों के साथ भारतीय ज्ञान परंपरा भी युवा पीढ़ी तक पहुंच रही है। शिक्षा मंत्रालय की ओर से किए जा रहे प्रयासों के सार्थक परिणाम काशी में दिख रहे हैं। अलग रहन सहन, अलग भाषा यहाँ कोई मायने नहीं रखती। भाव और अपनत्व ने तमाम दूरियों को खत्म कर दिया है। काशी तमिल संगमम देश की महान विरासत से जोड़ने और उसे समझने का मौका है। यहाँ कला संस्कृति के अलग अलग रंग दिखाई दे रहे हैं। काशी तमिल संगमम उस भावना को मजबूत करता है जहाँ एक भारत और श्रेष्ठ भारत की भावना को प्रगाढ़ करने का संकल्प है।
मोटरसाइकिल पर सफर करते ये तमिलनाडु की होसूर के रहने वाले रमा और राजन हैं। ये दंपति देश को जानने और करीब से समझने की जिज्ञासा की वजह से पूरे भारत का सफर कर चुके हैं। रमा और राजन ने जब काशी तमिल संगमम के बारे में सुना तो पहुंच गए काशी इस अनूठे उत्सव में शामिल होने के लिए। हमें यहाँ आने को कैसा प्लान करे सो वाराणसी में तमिल संगम जाकर देख दाल को फिर नेपाल जाने को प्लान करे। This was the plan. There are so many borders we can enter Nepal, but we plan to see the Kashi Tamil Sangam, how it has been, because I am big fan of Modi ji, Yogi ji and all. I am impressed about their governance, how they are running this one. So I want to see in direct Kashi Tamil Sangam. So we have it is in our list to enter here, see here, visualize all these things and go to Nepal. This is the plan. यहाँ पहुंचकर काशी तमिल संगमम के विशेष उत्सव और मनपसंद खाने ने रमा और उनके पति की थकान को दूर कर दिया। रमा और राजन की यात्रा सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि समाज को संदेश देने के लिए भी है। All the night we ride 18,857 kilometers in 32 hours. We reached Varanasi. The another one reason why we ride in night means we want to let the fear down of the people who are living there. If you ride in night also, there is no fear to ride. Even a woman with a husband can ride. There is no fear. You can drive all the way. रमा और राजन के अलावा तमिलनाडु से हजारों लोग इस उत्सव का आनंद लेने के लिए आ रहे हैं। तमिलनाडु से 12 ग्रुप के 2500 से ज्यादा प्रतिनिधि काशी का दौरा कर रहे हैं। हर ग्रुप से संबंधित सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है जिससे कि ज्ञान का आदान प्रदान बेहतर तरीके से हो। साथ ही कोई भारत के उत्तर में बसा हो या दक्षिण में रह रहा हो, हमारी जड़ें कैसे एक ही हैं, इस पर वैज्ञानिक तरीके से मंथन भी हो रहा है। If we talk about the Kashi and Tamil, specifically the DNA ancestry, you see there are 4 colors. These 4 colors, the blue color comes from Indus Valley region, and you see that Indus Valley has given equal amount of ancestry to the either Kashi people or Tamil people, whereas you can see that the Andaman related ancestry is there, North Indian related ancestry is there, even European common related ancestry is there. So overall, if we talk about the commonality between cuisine, commonality between languages, commonality between culture, then there is one more thing which connects Kashi and Tamil, that is our DNA. Thank you very much for your kind attention. तमिल कैलेंडर के अनुसार अभी चल रहे कार्तिकेय महीने में धार्मिक यात्रा का विशेष महत्व है। इसलिए तमिलनाडु से आया हर यात्री काशी विश्वनाथ के दर्शन कर खुद को धन्य मान रहा है। Actually, I visited Kashi for the first time during the year 2012. Now, when I'm visiting Kashi, I rethink or I am not able to categorize whether I visited the same place. So we all belong to the same country. We we respect each other, and I'm personally so happy to be part of this particular festival. Rather, it's not the trip. Rather, it's just a festival. It was all organized meticulously, so nicely
that even smallest grievances also has not arisen. So thanks to Narendra Modi ji and Yogi Adityanath for such event, and we are proud to be participant here. And this will definitely in the future it will confluence of various people from Tamil Nadu to Kashi and Kashi to Tamil Nadu. दरअसल मान्यता है कि दक्षिण में बसे हुए हर शिव भक्त को काशी की धार्मिक यात्रा करना बेहद जरूरी है। दक्षिण भारत से प्रचुर मात्रा में जो दक्षिण भारतीय जो दर्शनार्थी तमिल, दक्षिण कन्नड़, मलयालम, कई प्रकार के जो दक्षिण भारतीय जो भक्त हैं वो भगवान के परम भक्त होते हैं। उन लोगों की दृढ़ इच्छा रहती है कि 9 दिन 9 महीना 9 वर्ष काशी में निवास करेंगे। तो क्योंकि काशी काश्याम मरणान्मोक्ष जीविते अन्नदातृत्व मृते मोक्ष ददामि हम, भगवान विश्वेश्वर तथा माता अन्नपूर्णा प्रतिज्ञाबद्ध है कि जब तक व्यक्ति जीवित रहेगा मैं अन्न प्रदान करती रहूंगी, मृत्यु को प्राप्त करेगा तो उसको मैं मोक्ष प्रदान करूंगा, भगवान विश्वेश्वर कहते हैं। तमिलनाडु में भले ही भाषा का अंतर हो, लेकिन वहां भक्तों में काशी को लेकर अगाध श्रद्धा प्राचीन काल से रही है। जो काशी नहीं आ सकते थे उस जमाने में, तो तेंकाशी, वृद्धकाशी, शिवकाशी ऐसे कई स्थान हैं तमिलनाडु में जहां चोल राज और अन्य राजाओं ने ऐसे काशी विश्वनाथ मंदिर बनाए। उसके बाद भी ऐसे है तमिलनाडु में सैकड़ों नगरों में काशी विश्वनाथ मंदिर है, और सभी मंदिरों में जो विष्णु मंदिर हो, शिव मंदिर हो, मुरुग मंदिर हो, कार्तिकेय, सभी मंदिरों में काशी विश्वनाथ का एक छोटा सा मंदिर रहता है। गांव-गांव में व्यक्तियों का नाम रहता है काशीनाथ, विश्वनाथन। ये तमिलनाडु में जितना एक पॉपुलर नाम है वो पूरे देश में शायद अन्य प्रांतों में इतना नहीं मिलेगा, वहां इतना मिलता है। तो ऐसे देखिए तो कई प्रकार के, काशी में जब विश्वविद्यालय था तब कांची में विश्वविद्यालय था, और व्यापारिक संबंध था, कांची की बनारस साड़ी। काशी तमिल संगमम का मकसद ये है कि प्राचीन भारत में दोनों के संबंधों पर अनुसंधान हो और प्रगाढ़ता भी आए। तमिल संगमम यह कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी की संकल्पना का परिणाम है। ये दोनों का बहुत बड़े हजारों सालों से संबंध है, आदिकाल से ही। जैसे तमिल ग्रामर जो लिखे अगस्त्य जी, वो काशी से शिवजी के प्रेरणा से वहाँ जाके तोलकाप्यम नाम का तमिल व्याकरण पुस्तक लिखा 5000 साल पहले। और पूरे दक्षिण भारत से जो काशी यात्रा करते हैं वो पहले रामेश्वरम जाके वहाँ कोटि तीर्थ स्नान करके वहाँ से वो तीर्थ लेकर काशी आते हैं। यहाँ विश्वनाथ जी का अभिषेक करते हैं उस तीर्थ से, और यहाँ से गंगा जल लेके रामेश्वर जाके वहाँ रामेश्वर जी का अभिषेक करते हैं। इससे ही, इस पद्धति से करने से तीर्थ यात्रा पूर्ण होती है। ये इस प्रकार की एक श्रद्धा तब से अभी तक। काशी में तमिलनाडु से आए यात्रियों का स्वागत बाहें फैलाकर किया जा रहा है। तमिल यात्री वाराणसी के मंदिर का पूरा चिटफंड कंपनी है। मेरा आपसे आग्रह होगा कि जब आप डार्क वेब पर है, जिसको कि हम कंट्रोल, उदासी साहब यहाँ हैं जो कि हम लोग लगातार इनको आगे बढ़ाते रहे, मेरा आपसे केवल आग्रह रहेगा कि आपने इकोनॉमी को इतनी मजबूती दी है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतनी मजबूती दी है, अब ये क्रिप्टो को जो है कंप्लीट बैन करने का समय आ गया है। क्रिप्टो को बैन करिए। आपने मुझे मौका दिया, आप ये सप्लीमेंट्री बजट लेकर आई, इसके लिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी का, हम अपने प्रधानमंत्री जी का और पार्टी का बधाई और धन्यवाद देना चाहते हैं कि इस बुरी परिस्थिति में भी आपने 130 करोड़ लोगों की जान बचाई। आपको पुनः एक बार धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Thank you, Tirudayani Maran. Thank you, Chairman Sir, for giving me an opportunity to speak on supplementary demands for grants for 2022 and 2023. Sir,
the Finance Minister has put forward an additional gross expenditure plan for almost worth 4.36 lakh crores. Because of your higher receipts and savings from existing outlays come up to 1.1 lakh crores. Hence, the government is seeking Parliament's approval for a net cash outgo of 3.26 lakh crores as supplementary demands. So these are mainly going towards higher subsidy bills, especially 3 Fs, sir. Fertilizers, food and fuel, which are taking a chunk of out of the demand. So fertilizers alone, our finance minister is now going to give additional subsidy of 1.09 lakh crores. So this expenditure rose, especially, sir. Our finance minister in our reply will definitely say this is not in our hands. This is because of the global scenario, because these are all out of our means, because of the war with Russia and Ukraine, and because of global scenario, our hands are tied, and hence she was forced to increase the subsidy. So yes, sir, we have to accept that, sir. Because whatever explanation she gives it last, so that we can't give our counter argument, and always she gets the last word. We accept it, sir. But, sir, when my good friend Nishikant Dubey spoke, he was talking about that this government has brought nano fertilizers. Sir, we are very, very happy you're bringing this subject. Sir, my colleague, Mrs. Kanimuri, is also a chairman of the Fertilizers Committee, and she had given a report to the government saying that nano fertilizers is the way to go. But, sir, who is producing the nano fertilizers in India? Only one company, IFCO. IFCO is the only company which is producing nano fertilizers, which are not enough. Sir, to distribute the nano fertilizers, we need drones. A drone technology so that, sir, in fact, it's very good, sir, because where you use one bag of fertilizer, regular, normal fertilizers, you just have to use a handful of nano fertilizers which directly get absorbed by the plant. Sir, but now the same thing has to be distributed by hand. It takes more than 2 to 3 times that. So, if the government was so serious, my colleague has said, then they should have got all out. They should have increased the subsidy and made sure all the other fertilizer plants switch to nano fertilizer. But, sir, what do we do? What does NDA government do? Sir, they sell. Today, we have a Bengal Chemicals, which is a profit-making fertilizer company. So what do, sir? We sell it. Sir, instead of focusing on nano fertilizers, we are only selling all our good fertilizer companies, sir. And naturally, where are we making in India? The very fact that our Prime Minister says we make in India, everything should be made in India. Sir, all along, we are still handicapped, dependent, purely dependent on our imports. And this theory, there's no full stop to it. If they have 8 years they are in government, they should have had a fast side. You had the lead. You had the best brains. You should have found a solution, sir. And for the food subsidy, sir, nearly 80,000 crores for the Department of Food and Public Distribution, sir. Nearly 3/4 of this is going for the government's Pradhan Mantri Gharib Kalyan Anna Yojana, sir, which was started to give free rations during the COVID, sir. Sir, we welcome that. It was a very good scheme because during the COVID, people were suffering. They gave it, and they were very, very clear that this will stop after COVID pandemic stops. But, sir, they can't. Because our finance minister is using this as a tool to fight inflation. She knows that because the high prices which are in the market, she has to do it. And more and now, the elections are going to come, sir. But I'm appreciate. We are for it. We are for it. We say we should give more, sir. Because they are the ones who come and go in public and say they are against subsidies. Subsidies is what killing the nation. So we never said that. We always said the poor needs us. As long as poor people are there, it is the duty of the government to ensure they are taken care. That is the way principle of the Dravidian model, and that's how we go forward for it. You are double-tongued. You say one thing when during the election times, and after the election, when you have to win, everything is rushed inside under the carpet. So, next F, sir, fuel. So, all the 3 Fs affects the common man directly, sir. So, 22,000 crores have to be paid to the oil marketing companies, sir, for the subsidy of the gas. So, this is where we have been talking, and sir, all the political parties have been said, when the Prime Minister came forward and said that please give your concession gas so that a poor woman
in a village who is cooking with firewood will begin wipe out her tears. Sir, today the prices of gas is more than 1,200 rupees. Sir, and what is happening? Every woman, including your wife, is crying because the gas price is so high. So this has to be brought to them. Sir, here, I really appreciate the government, sir. For the first time, I appreciate it. They were so smart, even though the previous argument of global war, the global price. Now, sir, we were smart enough to understand and use our good friendship with Russia and get the cheapest price in oil, which every other country could not get. So the price of oil really reduced for us. Sir, even then, that benefit has not been passed to any common man. It is only going back to the checker. Sir, during the COVID period, sir, when the price of oil really went down, sir, our union government mopped up 1.8 lakh crores. Sir, in fact, our finance minister in a question, for a question, written answer, has said that 2,10,282 crores was mopped up, but just for fuel excise, cess and excise for 2018-19, 2,90,750 crores for 1920, and 3,71,000 crores and 71,908 crores for 2020-21. Sir, the government is making huge windfall because the price hike. Sir, poor men, common men are paying as fuel because everyone is dependent on petroleum products on one way or the other, and the government is mopping up. So, in fact, as Indians, we can proudly say, Indians never received free COVID vaccine injection. They paid for it. They paid for it through the cess and excise collected by this government, which came back as free. So we paid for it. So you don't take the credit. The credit will go to Indian, the common man, sir. Sir, we saw, sir, the government which was collecting so many fuel on revenue on excise, sir. November last year, for Deepavali, sir, they slashed the prices. And they were bragging about it. We have brought the prices down. What did you state governments do? They have been increasing the price every month. They have forgot that. Even in the finance minister's answer, she said, what did your state do? But you have been increasing every month. We also did our part because we have a very less, your area is very, very big. Sir, but before the 5-state elections, sir, they reduced the price. And that was a Deepavali gift so that they can win the elections. Sir, now one wonders whether the fuel price are controlled by the markets or by the government. So you say that the fuel prices are controlled by the market related. When the international price, sir, today, in March of this year, sir, the international price was $129. So today, the international price of barrel of oil is $76. There's any price reductions for the last 200 days. There's not been a big price reduction. Sir, we know why. Because the elections just got over. They ensure that the Gujarat elections gets over. They ensure that, sir, if it's really market-driven, when, sir, everyone knows that if the market price is $76, sir, the Indian basket is $10 less. Mr. T.R. Bal, my leader, knows that when he was a finance minister, when he was a petroleum minister, this was the way. So it is technically $66. Sir, where is the benefit for the common man? If you really want to control inflation, finance minister should reduce the burden, sir. Everyone is now crying by using fuel, sir. Sir, today we are buying fuel 18.5% from Russia, which is only second to Saudi Arabia. We have made sure, sir, when throughout the world, every part of it, from USA to UK to Europe, are suffering with high price of fuel. The only country in the world which has got the lowest price of fuel is India. Even then, sir, no benefit for the common man, sir. So, in fact, sir, I should say, sir, because of this, Indians are paying in a different way. So, for young students who are planning to go to US, or young people who are going to work for US, their visas cannot come within the stipulated time. It takes nearly 3 years because the other NATO countries have decided to punish our Indian students by ensuring that they don't get their visa on time, sir. Sir, in fact, I was very, very happy because my good friend Nishikant Dubey has said that about the 5G
that India has a homegrown technology. So it's a proud movement, sir. In fact, our finance minister, when she had gone to US, she said she is ready to give the homegrown 5G technology, transfer it to developing US or UK, to all the foreign countries who want to benefit out of our 5G. Sir, it was a proud moment, very proud moment for me that our finance minister offered this to that. So to show that our own homegrown 5G technology is so good. But why can't you give to BSNL and MTNL? You can't even give it to both 3G or 4G to MTNL and MTNL. But you want to give 5G to the entire world. Yeah, 5G is, sir, this is all, sir, this I have to say, sir. Sir, the next is, sir, Manrega. Sir, as my good friend said that it's a very bad scheme because for only one reason, UPA brought it. Whatever UPA brings is a very, very bad scheme, sir. It's not at all good for the country. But today, sir, 45 crores, sir, today, sir, the rural development will get allocated increase of more than 45,000 crores with an additional 16,400 crores to be earmarked, providing additional funds for Manrega and 28,000 crores for others under it. Sir, when you say this is a bad scheme, why are you supporting it? Simple thing, sir. They have failed. The NDA government has failed in providing employment. The NDA government is not providing any skilled employment. So the only way to keep employment under control is going back to Manrega and ensuring you work in the farms. We are giving you the money. So this is what, sir, I'm sure that if they have data, they would have definitely come and given it to us. Sir, see, this is the data which we have, sir. Sir, I'm sure that, sir, I'm always with the thing that, sir, rural should get the best help and more employment should be given to the rural people, sir. Sir, in the subject side, I would like to say, sir, railways, sir, about 10% of the sum is going towards capital expenditure sector like roads and railways, with allocation of 12,000 crores for the railway. Sir, in my constituency, sir, we have the Elephant's Gates Bridge. For 9 years, the bridge has been closed. So, sir, my chief minister, M.K. Stalin, has spoken about in the assembly when he was the opposition leader. We have been trying to, sir. Till now, sir, nothing is happening. See, it is the most artery road connecting the North Chennai to the other parts of the Chennai, sir. Severe traffic jam is there. Sir, lives has to be changed, saved. Sir, several lives are getting killed. People are getting killed because in the suburban trains, because with the overcrowding, and since we are from Tamil Nadu, less trains have been operated, and sir, no automatic doors have been provided. Sir, if they only provide automatic doors, sir, there will be no people standing on the footboards, which can save lives, sir. I request that, sir, the finance minister allocates to or instructs the railway ministry to do something about it, sir. And more, sir, I do not want to say anything, sir. Sir, the nation will remember our finance minister's response. Rupee is not sliding. US dollar is strengthening. So I would like to set my differences aside and aside with a statement and ask a simple question to the finance minister. Sir, did the government utilize the I-dollars exports? Sir, when we are usually, it's a common sense that when the dollar price increases, exports should also increase. This has been a common thumb rule which there. So if you look at all the net imports and the net exports, there lies a very sad story. Despite all the talk about Make in India and the promotion of manufacturing, there were only hollow promises and empty words. Sir, India's trade deficit widened to $26.91 billion in October, with exports down to 17%, and imports during October increased to 56.69 billion against 53.64 billion in October 21 as of the previous year. So the growth of the dollar, the rise in the dollar, should have reflected positive. So you are from Andhra, Telangana. So positive in the IT sector. But Andhra, sorry. I correct myself, sir. Andhra. So you should say refer to the IT sector. But there too also we see bad news. So the Nifty IT index has plummeted almost 24% so far in 2022, putting in all the bad signals, sir. So as far as the railways, sir, it has been a tradition the last 8 years to ignore Tamil Nadu, sir. Always, sir, my founder leader, Sir Anna, always said,
vadakku vazhigirathu, terkku theigirathu. The same thing is happening, sir. All the railway projects are going to the northern part of the country and southern part, especially, sir, our part. Your state, sir, and my state are suffering, sir. So, in fact, I like to say, request through the finance minister, sir, in the coming budget, sir, please include Tambaram Chengalpattu lines of this, which where always a proposal is being given for 600 crores, sir. Sir, again, Attipattu Gumudipudi, third and fourth line, sir, for cost of 500 crores. New lines from Tirupattur, Krishnagiri and Osur at a cost of 1,486 crores, sir. Doubling of Arakonam, Kanjipuram, Chengalpattu line at 1,360 crores, sir. Vande Bharat train from Chennai to Madurai. Vande Bharat train from Chennai to Coimbatore, sir. Sir, again, sir, I would like to emphasize to the finance minister the credit line guarantee scheme for MSME in the garment sector. The garment sector, sir, especially Tirupur, is facing severe hardship, sir. We are, sir, totally, sir, after post-COVID, they are really suffering, sir. There's been a sharp incline month on month in the growth rate as a result of the COVID and Russia-Ukraine war, sir. Lakhs of jobs, particularly for rural women who significantly depend, have gone. I urge the union government to announce a special emergency credit line guarantee scheme for the MSMEs in the garment sector with 20% additional collateral credit-free in the upcoming budget. Sir, in Tamil Nadu, sir, after our chief minister has come, sir, Tamil Nadu is now progressing so well, sir, and we need your support as well. And we have been always a progressive state, sir, in Tamil Nadu, and our chief minister, M.K. Stalin, is ensuring that everyone comes and invests in Tamil Nadu. Sir, Tamil Nadu is the first international furniture park in the country, sir. The furniture industry is a fast-growing industry with high potential for employment generation. Reduction in duties on imported wood will support in attracting more investment in the sector. Further, it will increase India's competitiveness in the international furniture market, sir. So I request the union government to reduce the duties on imported wood to attract investment in this sector, sir. Sir, again, PLI. Sir, we have got a good scheme, the production-linked incentive schemes for leather sector, sir. Leather sector, sir. Again, Tamil Nadu comes from, sir, we are the largest finished garments, finished leather, and we are dependent on leather, sir. And leather exports contribute to our country also, sir, where we all live together. Sir, I would like to, I request Finance Minister to extend the production-linked PLI scheme for the leather, non-leather footwear sector, and for the green hydrogen and electrolyzer manufacturers, sir. Sir, Chennai Metro Rail Phase 2, sir. I urge the union government, sir, the government of Tamil Nadu, thanks to the union for recommencing the loan negotiation for Chennai Metro Rail Phase 2 project as a state sector pending approval of the Union Cabinet for Government of India's participation in the project. I urge the union government to immediately sanction the project as a 50-50 equity share between the Government of India and Government of Tamil Nadu and ensure adequate provisions are made in the Union Budget 2022-23. So, my good friend spoke about aims, and after our Prime Minister, a lot of aims have been built in the cross-country. Sir, but Tamil Nadu comes with a very sad story, sir. See, already my leader has spoken about aims. Only a compound wall has been built, sir. Sir, the state has the state has been accommodating. Sir, in fact, sir, there's an illegality in the functioning of aims in Tamil Nadu, sir. Finance Minister knows that if anyone has started a medical college, they have to have the infrastructure before admitting students into the college. Sir, ma'am, some abnormality is happening. The first time, because his aims, permission is being granted, students have been admitted, professors have been taken, but there is no infrastructure. In fact, the state government has given permission to use premises of Medical College Ramanathapuram temporarily to accommodate 50 students. And the irony, ma'am, these 50 students will complete the degree without even stepping their foot in the newly constructed aims. They'll be graduating from Ramanathapuram. Now, sir, ma'am, this is, we request you on part of Tamil Nadu. So, ma'am, I know it's a JICA project. There are a lot of, let's speed up, man, because the Honorable Prime Minister came and laid the foundation stone, and it's quite a irony that nothing is happening. When you talk about aims, this is a sad story, which we would like to highlight for you. Sir, again, sir, on behalf of our Tamil Nadu government, I have certain demands, request to make the Finance Minister. I thought this will be the right opportunity to take our thing, sir. On Civil Supplies Department,
The CMR subsidy for 2018-19 to 21-22, around 5,903.48 crores still pending with you, madam. Please ensure that you give it to Tamil Nadu. Sugar subsidy from January to September 2022, 31 crores still pending. And fortification of rice, 7.3 crores. Intra-state movement of PDS, PMGKY from 2022-2022, 251.04 crores is pending. Interstate movement NFSA from November 2016 to 2021, 621 crores are still pending from the Union government. Of this, Civil Supplies Department alone, we are 6,814 crores are pending from your side, ma'am. We humbly request you to expedite the process. And the Finance Commission's grants for urban local bodies for 2022-23, this Million City Plus, the utilization certification for the year 2021-22 have been sent to the Government of India, and all conditions have been complied to avail the grant for the year 2022-23. The Government of India is yet to release the grant. For air quality, we still release of 122 crores, and SWM sanitation 313 crores, and again for the non-million plus cities tied 550 crores, untied 370 crores, for total of 1,360 crores are still yet to be released after giving all the utilization certificates from the Tamil Nadu, ma'am. GST compensation, and every time we have to make a request for 2020-21, 5,000 crores is pending, ma'am. For 2021-22, 2,098 crores, ma'am. For 2022 to 23, April-June, ma'am, around 3,675 crores, ma'am. A total of 10,879 crores is still pending. Ma'am, I request you that to consider Tamil Nadu, and before I end, I like to say, strong states make a strong union, and expect you to make all the states strong. Ma'am, it's not only good that you make Gujarat strong. Make every state, every Tamil Nadu strong, and make sure that southern India doesn't get deprived. Thank you, Chairman, sir, for giving me this opportunity. Shri Saugataraji. Sir, I like to speak on the supplementary demands for grants. This is not an opportunity to criticize the minister or any other ministers. This is an opportunity to take a stock of the economic situation in the country. Sir, there is a total supplementary grant of 39.45 lakh crores. Out of this, 1.1 lakh crores go towards fertilizer subsidy, and it has been mentioned that this is due to rise in urea prices in the Ukraine-Russia crisis. Extension to Garib Kalyan Yojana will cost 44,000 crores. More capital needed for general insurance as their solvency margins have dipped. Sir, 1,80,348 crores towards food subsidy, including Garib Kalyan Yojana, which is a good scheme. For petroleum, though we are buying the cheapest petroleum in the world, still 29.9 lakh crores extra subsidy. Rupees 13,669 crores towards telecom to bring 5G to Jio, not to BSNL and MTN. 12,000 crores in railways, good thing. Only you have to be careful that the Vande Bharat trains do not collide with cattle. You must find out a technical solution to this cattle problem. Rupees 10,000 crores towards GST compensation. CapEx, capital expenditure, has been augmented by rupees 31,000 crores. Now, nobody can have any quarrel with this demand. This is necessary. The government will have to spend it. But if I may remind the finance minister that 2 years ago, we had the corona pandemic. We saw pictures of migrant labor walking to their village homes, all on foot, dying on the road, being run over by railways.
Abhijit Binayak Banerjee, the young economist who is a Nobel Prize winner, suggested that these people should be given a cash subsidy of at least 10,000 crore. This cash subsidy of 10,000 would not only put money in their hands, allow them to buy a few things, that would also allow the economy, the money to circulate. The finance minister remained impervious to this plain demand of the most hapless people that I have seen. It is worse than any migration in the history of mankind. This did not happen. Sir, now we'll have to discuss about the economic situation. How is the economic situation under Finance Minister Nirmala Sitharaman? I would say that India as a country has withstood the headwinds. Throughout the world there has been economic recession. The Russia-Ukraine conflict has affected the world economy. And it is said, when our rupee is falling against the dollar, some people have said that even the yen is down. Chinese currency falls 15%. British pound has fallen by 17.7%. So it's a general problem. But I have not had one statement from the government to say what they are doing to improve the rupee's value vis-a-vis the dollar. Government has remained totally silent to this, and now economists are saying that it will remain flat. It's now 81.1%. I remember a few years back, it was 45 rupees to a dollar. Now it is 81 rupees. The government has not expressed the concern that it should have in this matter. The other thing is with regard to GDP growth. Any country's economy is measured by GDP growth. World Bank estimates GDP growth for FY 23 at 6.9%. Now, this will depend on whether inflation will moderate. Inflation was 6.77% in October 22. It came down a little compared to 7.41% in September 22. The rise is mainly in food. And I saw the very pleasant picture of the finance minister going like a common housewife to a market in Chennai buying vegetables. She must have realized how bad it is for the common middle class people who are hit by inflation. The Reserve Bank has repeatedly raised the repo rate, the rate at which it lends to bank, but it has failed to control the inflation. I admit that it's not a runaway inflation, but it's inflation all the same, and it is having an impact on the common man's pocket. The other thing is that agriculture has been, RBI's tolerance band was 6%. We have not been able to reach RBI's tolerance band. WPI was slightly, wholesale price index was slightly down to 8.39 in October from 10.7 in September 22. Inflation, as I mentioned, is 6.77% in October 22. Have we left to the Reserve Bank alone, through their monetary policy, to control inflation? Or does the government have anything to say about inflation? I've been hoping, I read the papers every day, expecting the finance minister to come out with a bold statement. I don't see it. I see the Reserve Bank governor speaking more than he should.
but never the finance minister speaks anything about inflation. The other thing that I should mention, that the core sector is in a bad way. Its growth slowed down to 0.1%, 20-month low in October. Urban employment is still very high. Unemployment rate rose to 8% in November, highest in 3 months. Urban employment rate rose to 8.9%. I have not seen a single statement from the government as to what they are doing vis-a-vis the employment situation. Yes, I say that there are some steps taken by the government were good. Capital expenditure stood 46.8% higher than the same period last year. The GST revenues have increased significantly. And a good side is that MGNREGA declined in October by 7.5%. That means less people are going for this wage employment. There is more buoyancy in the rural areas in agriculture, which is a good thing. But again, sir, ours seems a roller coaster ride. Good in something, bad in something else. Like merchandise exports fell to a 20-month low in October 22. Exports are at the worst, and Indian rupee depreciated 2.6% against US dollar. Sir, what I want to say is that our economy, yes, the global headwinds are not nice. Indian economy has shown resilience. Overall, agriculture has been excellent. For 2 years, we have had good agricultural production. Our farmers have shown a lot of strength. But we are claiming to be the third biggest economy. We are already the fifth. And $5 trillion economy by whenever 2027, 26. But our GDP growth has slowed to 6.3%. Fiscal deficit at 45%, 45.6% of a full year's target already in October. Manufacturing sector, I told you, has declined. It needs policy support from the government. None has been forthcoming. Services sector alone, trade, hotel, transport services, they have kept our post-COVID situation, they have kept up the growth momentum of the economy. They need to be congratulated. So, we need to think out of the box. Main problem is this percentages mentioned do not fill the common man. Two primary problems, one inflation, the other unemployment. Job creation has slowed down after uneven recovery. The other sector which needs the finance minister's attention is the banks. I saw a statement, I don't know whether it's economically correct. He said NPAs up by 365% under PM Modi. That is Mr. Kharge's statement, I don't know. You will clarify. But in the last 5 years, 10 lakh crores were write-offs to keep banks half their NPAs. So you have written off 10 lakh crores, and thus banks have halved their NPAs. Banks have recovered only rupees 1.32 lakh crores from write-offs in 5 years ending March 22. Sir, the industry is pressing for two things.
They have said decriminalize GST law, slow personal IT rates, lower personal IT rates. They say the industry, shining exports, shrinking exports with high deficit call for a policy reboot. Food and fuel inflation must be confronted. Having said all this, sir, let me state quite clearly that Indian economy and the world economy is at a crossroads. Instead of boasting that we are going to be $5 trillion economy, we have to remember that globally, you see, the US tech companies, Twitter, Meta, they are all cutting down employment. This will also have an ultimately effect on Indian IT firms like TCS, Infosys, and Wipro. The manufacturing contraction shows why RBI should pause rate hikes. Having said all this, sir, I posed the main problems of the Indian economy before the finance minister. This is the last time he will make a detailed statement in the House before she presents the budget. I do hope that she has already started the pre-budget consultation. I do think that she will clear the cobwebs in our mind, our doubts regarding the position of the economy. And last point, I would urge the finance minister that be more charitable and fair towards West Bengal. She has no particular constituency to cater to. She is a Tamil based in Andhra, stays in Delhi, so she can be fair to everybody. And now we have this huge dues from, and in upper house, from Karnataka, as Anish pointed out. So we have this huge pending dues from the central government. Some say it's 1 lakh crores, 7,300 crores in NREG alone. Huge amounts in House for All. I would request her. We don't have a full cabinet minister now in finance in West Bengal. There is a minister of state working. She can call and she can sort out some of the financial demands. And lastly, my friend Dayanidhi Maran mentioned the many projects in railways that were started. I would request the finance minister, you have given some extra money to railways, to Ashwini Vaishnav's effort for modernizing the railways, where Vande Bharat trains are being hit by cattle. We have many ready projects in West Bengal awaiting completion. The rest of the part of Calcutta Metro, including the suburbs, the Arambagh-Bishnupur line, all these lines are pending completion for a long time. We have been neglected. Now, elections are still, Lok Sabha elections are a year and a half away. It is the time to bury old enmities and put the country on a pedestal to march towards a better country in the 75th year of our independence. Let us forget our old rivalries. Let the state, as my friend Dayanidhi rightly mentioned, strong states mean a strong center. On behalf of West Bengal, I plead with the finance minister to help us become strong in the state of West Bengal. Thank you, sir. श्रीमती शर्मिष्ठा सेठी Government is claiming that it is confident of accelerated growth, and several international agencies
see India as a bright spot amidst the adverse impact of COVID-19 and Russia-Ukraine war. This is a positive thing. But high unemployment, increase in the number of poor people, less private investment, decline in public sector investment, and record-breaking food inflation in recent times have affected all sections of society. Rupee is falling like never before. Now, in this situation, what corrective measures is the government taking? We have become the 5th largest economy, but at the same time, nearly 18 lakh children in India are severely malnourished. Dropout rate of children in primary school has increased from 1.9% to 3.02%. I am hopeful Honorable Finance Minister will address these issues in her reply. Sir, several state governments have taken initiative on their own to heal the wounds of the people. Odisha government, under the leadership of Honorable Chief Minister Sri Naveen Patnaik ji, has taken many pro-people and pro-development measures. Some of them are as follows. So first, the state is leading in reducing poverty, and it has come down from 63% to 29%, while 80 lakh people have climbed out of the poverty line. So second, Odisha is the only state in India to have doubled farmers' income. Third, Odisha is increasing in the steel production by nearly 10 times in the last 2 decades. Recent Make in Odisha conclave has generated investment intents of 10.5 lakh crore with potential for 10.50 lakh direct and indirect employment. Fourth, through Mission Shakti, government is working tirelessly to empower women to be model entrepreneurs and leaders. Fifth, Sir, Odisha is committed to provide a pakka ghar to every household. Odisha is the only state where beneficiaries are getting financial assistance not only for the construction of the houses but also for their repairing. Rupees 1,444 crore has been directly credited to the bank account of 31 lakh household beneficiaries under Biju Pakka Ghar Yojana for repairing of their houses. Sir, when developmental activities of such a large scale are going on, the people of Odisha also expect same support and cooperation from central government in a federal structure. In 2019, Centre has promised Odisha in the aftermath of cyclonic storm Fani for approval of 1.84 lakh houses under the special PMAY Gramin program. So many people had lost their houses in the 14 districts of Odisha, which were affected by the cyclone. People are still waiting for the central assistance. I request the central government to immediately sanction 1.84 lakh special PMAYG houses as promised to Odisha in the aftermath of cyclonic storm Fani, and also to open hours plus window to incorporate those who were not included in the list of beneficiaries under this scheme. Sir, delay in MGNREGA payment is another issue. Odisha is yet to get its dues of around 1,700 crore from the centre. Our Honourable Chief Minister has already written to Honourable Prime Minister to release the fund and also requested to review the provisions for the withdrawal, utilization and recoupment of budgetary allocation towards states revolving fund to prevent delay in payment of wages under MGNREGA. Odisha government, in order to address the distress migration in 20 migration-prone blocks of our 4 districts, namely Balangir, Bargarh, Kalahandi and Nuapada, has approved a new state sector scheme, State Support to MGNREGAs, wherein it has decided to provide additional 200 days of work over and above the guaranteed 100 days of work mandated under MGNREGAs Act 2005. The entire cost towards the payment of wages beyond the guaranteed 100 days of wage employment under MGNREGA will be borne by the state government. When the state is being proactive in providing employment opportunities, non-payment of dues by the central government has become an obstacle. Through you, sir, I would like to request the government to take necessary steps as proposed by Honourable Chief Minister. Sir, Odisha has sought 60% of coal sales share from this centre, and also wants coal-bearing states to be assigned reasonably lower limits for the renewable power obligation, that is RPO. Further, renewable energy projects in the coal-bearing states should be funded from National Clean Energy Fund, NCEF,
While the rate of royalty on coal has not been revised for more than 4 years, the central government has enhanced the clean environment cess on coal. Odisha's demand should be considered as the same, is based on merit. Sir, at present, GST on kendu leaves has been fixed at 18%. Central tax on kendu leaf was earlier 0. Considering the difficulties of the tribal people and the livelihood problems they are facing after GST, I request the central government to place the matter before the GST Council and reduce the GST on kendu leaves from 18% to 5%. I also demand that Jagannath International Airport in Puri to be completed in a timely manner, and another airport may be considered in Jajpur, keeping in view of the importance of district from industrial, religious, and tourism perspective. That is my constituency also, sir. Further, I urge the government to add direct air routes from Bhubaneswar to Dehradun and Bhubaneswar to Sirdi. Tourists from Odisha visit religious pilgrimages in Uttarakhand and Sirdi, and vice versa. However, due to no direct flight connection between these cities is proving to be costly for the people. Direct flights would be cost-effective and time-effective for the people of Odisha. Sir, I will raise some issues of my constituency. Sir, Jajpur is famous for tourism. Vaishnav, Saiva, Sakta, all the tourist destinations are there in my constituency. Besides, the district has a rich legacy so far as Buddhism is concerned. I demand that these tourist spots to be developed with central assistance and Buddhist sites be covered under Buddhist circuit. Ministry of Railway had announced that it would redevelop railway stations in Odisha. The ministry had narrowed down 12 stations in Odisha, namely Puri, Bhadrak, Barampur, Cuttack, Jajpur Keonjhar Road, Khordha Road, Rayagada, Sambalpur, Baleshwar, Jharsuguda, Raurkela, and Bhubaneswar. The ministry had said that modernization and redevelopment would be up to the international standards. An MOU was also signed between Bhubaneswar Development Authority and East Coast Railway to construct a modern station building at Bhubaneswar at the cost of the state government. However, no steps have been taken by the Ministry of Railways to modernize the other 11 stations. I request the Ministry of Railways to put into motion the redevelopment and modernization of other 11 stations as well. Through you, sir, I also request the Honorable Railway Minister for urgent action on Jajpur-Dhamra line. Sir, to conclude, recently in Padmapur, Odisha, Honorable Railway Minister had announced that railway projects are pending because of lack of land under allotment. Once the land is allotted, projects will take off the next day. However, I have a question here. Why are the projects for which land has already been allotted still lagging and have not been completed yet? As on 1st April 2021, railway projects costing rupees 55,219 crore for 4,643 kilometers length, falling fully or partly in the state of Odisha were pending for completion. These include 11 new line projects covering a length of 1460 kilometers at a cost of rupees 20,346 crore. One GC project covering a length of 159 kilometers at a cost of 1455 crore, and 25 doubling projects covering a length of 3024 kilometers at a cost of rupees 33,418 crore spending. Different railway projects in Odisha are in incomplete stage. I request the central government to look into the matter. With these words, I conclude. Thank you. श्री मालूक नागर जी। धन्यवाद साहब, आपने बोलने का मौका दिया। और कोरोना महामारी के बाद देश जिन हालातों से निकल रहा है, उसमें देश जो तरक्की कर रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। और भारत सरकार ने देश के तमाम उपक्रमों को, तमाम विभागों को बहुत सहायता दी, लेकिन किसानों को कोरोना कार्यकाल में उनकी फसलें सड़ी, उनके दूध फट गए, उनको जो कंपनसेशन मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। लेकिन देश की स्थिति ने और जो किसानों ने अपने आप को संभाला, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और देश के काफ़ी हिस्सों में गन्ना किसान हैं और गन्ने का रेट पिछले 7 सालों से
पिछले 7 सालों से केवल 10 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा है, जबकि कोरोना कार्यकाल में पिछले 2 सालों में चीनी का रेट करीब 1.5 गुना और 1.25 गुना हुआ है। तो जो पिछले 7 सालों की सरकार के द्वारा बढ़ी गई महंगाई का जो आंकड़ा है उसके हिसाब से भी लगाएं तो 7 साल में करीब 55 और 60% के करीब बैठता है। तो जो गन्ने का रेट 340 था और 350 केवल हुआ है, तो 1.5 गुना करके 500 से ऊपर बैठता है। तो एक तो गन्ने किसान के बारे में सोचा जाए, उसके खाद के भी रेट बढ़े, बिजली के बिल के रेट बढ़े, मशीनरी के रेट बढ़े, जीएसटी लगी, तो गन्ने का रेट बढ़ाया जाए और कम से कम 500 रुपए क्विंटल प्रति करा जाए। और जहां से मैं आता हूं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, अध्यक्ष जी, वहां मेरठ और आगरा और दिल्ली कभी बराबर की हैसियत में देश में हुआ करते थे, और कोरोना कार्यकाल के बाद में केसों की संख्या, कोर्ट केसों की संख्या इतनी बढ़ गई, इतनी पेंडिंग हो गई, यहां से इलाहाबाद जाने के लिए इतनी दिक्कतों का सामना उठाना पड़ता है। और जो लखनऊ और इलाहाबाद थोड़ी सी दूरी पे ही जो 2 जगह हाई कोर्ट है, तो ये अच्छी बात है, लेकिन ये बहुत बुरी बात है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों को 12-12, 14-14 घंटे ट्रेनों में जूझ करके उनके सीटें नहीं मिलती, बहुत परेशान हो जाते हैं। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और मेरठ में हाई कोर्ट की स्थापना कराने के बारे में सरकार जरूर सोचे। आज मैं ये मांग कर रहा हूं। और हस्तिनापुर है वहीं पे, अभी दिल्ली से मेरठ के लिए रेल चली है, तो मैं मांग करता हूं कि दिल्ली से मेरठ जो रेल गई है उसको हस्तिनापुर और बिजनौर तक ले जाया जाए और सीधा उठा करके मेरठ से मुजफ्फरनगर को भी जोड़ा जाए, जिससे वहां की जो पूरा इकोनॉमी में जो योगदान है उसको देखते हुए उन लोगों को वंचित ना रखा जाए। और साहब मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जो वहां पे किसानों में ही जो पिछड़े आते हैं, जिनमें जाट, गुजर, यादव, पाल, सैनिक, कश्यप, सुनार, लोहार, कुम्हार, वे तमाम दलित और अकलियत समाज के लोग वहां पे हैं और उनको भी न्याय मिलेगा। और 1-2 चीज में यहाँ पे वित्त मंत्री जी बैठे हैं, कहना चाहता हूं कि सरकार एक अमेंडमेंट लेके आई, एक नया बिल लेके आई एनसीएलटी से रिलेटेड, सरकार एक बिल लेके आई रेरा से रिलेटेड। अब उसमें जो 100 लोग हैं और 2 लोगों को रिलीफ देने के लिए 98 लोगों को मार देते हैं, तो सरकार 2 लोगों को रिलीफ दे और को अच्छी बात है, लेकिन 98 लोगों को कैसे बचाया जाए इसके बारे में जरूर सोचें। और सही इसी पैटर्न पे रेरा में 4 लोगों को रिलीफ देने के लिए 96 लोगों को मार देते हैं, तो इसके बारे में जरूर सोचें, 4 को रिलीफ दें और जो बाकी बचे हुए 96 हैं वो ना मरें, उनके लिए कैसे उनको सुविधा दी जाए। अब मान लो एक कंपनी है और उसमें 4 लोग कोर्ट में चले गए रेरा के में या एनसीएलटी के में, और उन्होंने रिलीफ ले लिया कि इनके पैसे तुरंत वापस करे जाएं। कंपनी पे पैसे वापस करने को है नहीं, वो ऑक्शन लगा दी और सबको पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया प्रोपोर्शनेटली प्रो डेटा बेसिस। तो जो 96 लोग थे वो सब मर गए। तो इसमें जरूर सोचें कि जो सरकार जनहित की वजह से जो दोनों इन लॉ को लेके आई है वो जनहित में नहीं है, कहीं ना कहीं शेडो दूसरी डाल रहे हैं। तो इस बारे में भी जरूर सोचें। और जो अपना पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों के बारे में जो माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि किसान की आय डबल हो, तो मैं मांग करता हूं कि मेरठ में बिट्टू थैंक यू, कि मेरठ में एक प्रशिक्षण शिविर लगाया जाए जिसमें किसानों को ट्रेंड करें और जिसमें नए नए तरीके के फूल, नए नए तरीकों की सब्जियां, नए नए तरह की फसल और कैसे आय डबल हो इसके लिए किसानों को ट्रेंड करे जाएं। अभी जो अपने बिट्टू भाई बिट्टू भाई बैठे हैं, जब ये पूरी चर्चा चल रही होती है कांग्रेस में अकेले बिट्टू भाई है, जब बैठते हैं भी एक और आ गए हैं, नहीं पूरी कांग्रेस खाली पड़ी होती है। तो सब मैं ये don't get distracted, go on with your speech. हाँ बस सब कंक्लूड कर रहा हूँ, बस एकदम मैं कंक्लूड कर रहा हूँ साहब। तो मैं कहना चाहता हूँ कि अभी दिन में हमारा एक प्रश्न था ट्राइबल यूनिवर्सिटी का, तो देश में 370 हटने के बाद जो देश में एक
बहुत एक अच्छी शुरुआत हुई है। जम्मू कश्मीर में आज़ादी मिली है तमाम पिछड़ों को, एससी को, एसटी को, और पूरा देश उधर देख रहा है। तो मैं ये भी मांग करता हूं यहाँ पे मंत्री जी से कि जम्मू कश्मीर के जो एसटी में आते हैं गुजर मुसलमान या गुजर बकरवाल, उनके लिए भी जो देश की सीमा हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर जो सारे लोग हैं वो 29.4%, उनके लिए एक यूनिवर्सिटी बनाई जाए जिससे उनके बच्चे पढ़ लिख करके देश के लिए जो जान देते हैं, देश के लिए जो फौजियों की तरह लड़ते हैं, वो भी पढ़ लिख करके देश में अच्छी मुख्य धारा में आ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। Shri B.B. Patil ji. Chairman, sir, thank you. Sir, we find ourselves in the midst of the worst financial crisis that the nation has witnessed. Much has been said, but little has been done by the central government out of its complacency at this point, which will only reduce the global investors' confidence and look like a sign of the central government's fatigue, depression to the common man, who is looking towards the government for some sign of hope and relief. It is complicated maze of compliance and tax extortion that is leaving both the industry and the state with little ability to plan and implement growth strategies. The government of Telangana is getting tax and non-tax revenues as expected this fiscal year, sir. However, the central government is reportedly trying to disturb Telangana in grants and contribution in various ways. As a result, additional financial burden is being imposed on the state government. It is to be mentioned that only 85 crore was approved as a grant by the central in October. However, because of state government's tax income, the development activities are going on without any hindrance. Telangana state was supposed to get Rs 40,000 crore in financial year 22-23 from the center by way of fiscal responsibility and budget management (FRBM) rules. Initially, the FRBM was fixed to 54,000 crore, but later it was reduced to 39,000 crore by the union government, which resulted in direct cut of 15,000 crore. Based on the FRBM limit, the state government was planning to implement some welfare programs and schemes. Now all that has been derailed. Similarly, the center announced 0.5% of FRBM to best performing states and also to those states which implementing reforms in electricity sector by fixing meters to agriculture pump sets, etc. As the state government has refused to implement power reforms, it has lost another 6,000 crores, sir. The state was also deprived another 20,000 crore assistance from various financial institutions for taking up irrigation projects and thermal power plants. Institutions such as Power Financial Corporation, Rural Electrification Corporation have not disbursed loans for the last several months on the ground that they come under FRBM limits, sir. I would like to state that under the Andhra Pradesh Reorganization Act 2014, which provides special assistance for the development of 9 backward districts of Telangana under the BRGF. The central government has released so far Rs 450 crores in 4 installments each. The installment for year 19, 20, 21, 22, 22, 23, Rs 1350 crores are due for release. I request the government to kindly release the pending installments at the earliest. Even the Niti Aayog has recommended to the Department of Expenditure, Ministry of Finance and Government of India to release the said amounts. Secondly, Mission Bhagirath, which is to supply drinking water to all the households in Telangana state, is a unique initiative to fulfill the basic needs of people, and this scheme is being lauded at the national level also. Telangana government has already projected the requirement for the operation and maintenance of the project around Rs 12,772 crores for the year 21-22. 25-26, considering the unique nature of the projects, for which our Honorable CM KCR Saab has already submitted the representations to Finance Commissioner requesting additional allocation. It may kindly be taken up as no action has still been taken in this regard. Further, I would like to mention that the geographical terrain of Telangana is such that the major rivers like Godavari and Krishna flow deep below the ground level, and therefore irrigation is possible only with multi-stage lift irrigation schemes, which requires large capital investment as well as provision of operation and maintenance and power consumption. These lift irrigations are crucial for the improvement in the farmers' income and growth in agriculture, sir.
representation by our Honorable CM KCR sir has already been submitted. Finance Commission requesting additional allocation for 40,169 crore towards the operation and maintenance for lift irrigation projects. I request the government to kindly intervene and get the needful done, as this will help in farmers' income and growth in the agriculture. I urge the government to adopt consultative approach with the opposition parties, the state government and the industry representatives to boost confidence in our economy. It is imperative for us to analyze where we stand if the economy must revive. With these few words, I conclude, sir. Thank you, sir. Thank you. Thanks a lot. श्री श्रीरंग अप्पा परने जी। धन्यवाद सभापति महोदय जी। अनुदानों की मांगों पर मुझे बात रखने के लिए अवसर दिया, इस पर मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूँ। अध्यक्ष जी, गए 8 सालों में प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में प्रगति पर काम कर रहा है और कई सारी योजनाएं, जैसे कि रोड की या रेल की हो, कई सारी योजना धीमे गति से काम कर रही। जैसे कि माननीय गडकरी के नेतृत्व में पूरे भारत में रोड का काम जलद गति से हो रहा है, लेकिन जलद गति से होने से क्वालिटी मेंटेन नहीं होती। इस पर भी मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। रेल विभाग द्वारा कई सारे काम मंजूर हुए, लेकिन ये काम धीमे गति से चल रहे। मेरे चुनाव क्षेत्र में करीबन 3-4 साल पहले तीसरा और चौथा ट्रैक को लोनावाला से पूना तक मंजूरी मिली थी, लेकिन आज उस पर काम नहीं हो रहा है। कई सारे ऐसे काम हैं उस मार्ग पर, जैसे कि अंडरपास के, ओवरब्रिज के, वो धीमे गति से चल रहे। तो मेरी मांग रहेगी खास कर कि ये सभी जितने ठेकेदार काम लेते वो समय पर काम नहीं करते, वो समय पर काम होना आवश्यक है। कोविड काल में जैसे कि कई सारे ट्रेन, पूना से मुंबई तक चलने वाली ट्रेन, दूरी की ट्रेन बंद की गई थी, तो उसमें से कई सारी ट्रेन चालू हुई, लेकिन आज भी कई सारी ट्रेनों चालू करने की आवश्यकता है। वहाँ करजत लोनावाला में ट्रेन का ठहराव बंद किया है, वो भी चालू करने की आवश्यकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं खासकर वित्त मंत्री से ये भी कहना चाहता हूँ कि मेरा क्षेत्र पर्यटकों के दृष्टि से बहुत अच्छा क्षेत्र है। जैसे कि लोनावाला, खंडाला, माथेरान जैसे हिल स्टेशन है, कार्ला, भाजा, घारापुरी जैसे ऐतिहासिक स्थल है, और शिवाजी महाराज के टाइम से वहाँ जैसे किले, कई सारे किले, तो पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सरकार द्वारा ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जाता। मुंबई और पुणे के करीब होने के कारण कई सारे पर्यटक दुनिया और देश में से आते, उनको सुविधा की कमी होने के कारण या पर्यटक आते नहीं, तो ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा अगर मिल जाती, केंद्र सरकार द्वारा वहाँ रास्ते की सुविधा देनी आवश्यक है, पार्किंग की सुविधा देनी आवश्यक है, और ये सुविधा अगर मिलती तो पर्यटकों को चालना मिलेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूना और पिंपरी चिंचवड शहर महाराष्ट्र में मुंबई के बाद सबसे बड़े शहर है, और इस शहर में जाने वाले पूरे जितने रास्ते वो नेशनल मार्ग है, और एनएच होने के कारण पुणे के करीब, जैसे कि पुणे से नगर रोड, पुणे से चाकण रोड जो सीधा चलता है नासिक तक, दूसरा कात्रज से कोल्हापुर लेके बेंगलोर तक चला जाता है, उस मार्ग पर अगर ओवरब्रिज बना दिया जाए एनएच पर, तो निश्चित रूप से एक सुविधा प्राप्त होगी, जो ट्रैफिक जाम की समस्या है वो छूट जाएगी। दूसरा, पूना पिंपरी चिंचवड को ट्रैफिक की जाम समस्या ये भी होती है
कि हिंजवड़ी जैसे आईटी पार्क, तळेगांव, चाकन इंडस्ट्री, ये बहुत सारे इंडस्ट्री हब है दुनिया के और देश के विभिन्न राज्यों में। कई सारे वहाँ नौकरी के लोग आते, और वहाँ अगर उस मार्ग पर, उस सेक्टर पर अगर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम हो जाए, केंद्र सरकार द्वारा मेट्रो का काम चल रहा है, जैसे कि पुणे से हिंजवड़ी तक मेट्रो का काम चलना है, पुणे से पिंपरी चिंचवड तक मेट्रो का काम चल रहा है। अगर इस मेट्रो को बढ़ावा दिया जाए चाकन इंडस्ट्री, तळेगांव इंडस्ट्री तक, तो लोगों को सुविधा प्राप्त होगी। दूसरा एक कहना चाहता हूँ कि जो मेट्रो को मंजूरी मिली है पुणे से पिंपरी तक, वहाँ पिंपरी से निगड़ी भक्ति शक्ति तक मंजूरी के लिए केंद्र सरकार के पास कई दिनों से फाइल पड़ी है। ये मंजूरी अगर मिलती तो निश्चित रूप से सुविधा प्राप्त होगी। दूसरा एक मार्ग है जैसा कि NH4 जो देवरोड से चाकन तक जाता है, हेवी ट्रैफिक वहाँ रहती है। ये मार्ग पिंपरी चिंचवड शहर से गुजरता है। या इस शहर पे, इस मार्ग पर अगर नया DP बनाया जाए और उसमें सर्विस रोड और अंडरपास किया जाए तो लोगों की समस्या दूर होगी। यहाँ कई सारे ऐसे मार्ग है, इस मार्ग पर हमेशा ट्रैफिक जाम होती है, इस मार्ग पर काम करने की आवश्यकता है। ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि पिंपरी चिंचवड शहर में से पवना इंद्रायणी नदी गुजरती है। इस नदी की सुधार के लिए केंद्र सरकार के पास मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेजा है। अगर ये मंजूरी मिलती तो ये सिटी हार्ट की ये पूरी नदियाँ हैं, अगर अच्छी हो जाएगी और जो नदी में से गंदगी फैलती है वो दूर हो जाएगी। मेरे क्षेत्र में नया एयरपोर्ट बन रहा है पनवेल नई मुंबई के करीब, और उस करीब राज्य सरकार द्वारा मुंबई से कोस्टल रोड भी बन रहा है। और ये पूरा भारतवर्ष के लिए एक महत्वपूर्ण शहर आगे चलकर बन रहा है नई मुंबई के करीब। केंद्र सरकार द्वारा नया मार्ग अगर जो पनवेल से पूना तक, पनवेल, खोपोली, लोनावला नए मार्ग अगर बन जाता रेलवे का, तो पूरी सुविधा मध्य महाराष्ट्र को होगी और एक अच्छा मार्ग निर्माण होगा। और आगे चलकर जो JNPT पोर्ट, नया एयरपोर्ट, ये मुंबई के करीब पूरा ये इलाका जैसे कि अच्छा हब है, तो उनको एक सुविधा प्राप्त होगी। केंद्र सरकार द्वारा जो काम चलते उस पर निगरानी रखने के लिए अलग एजेंसी की भी प्रावधान होनी चाहिए। जैसे कि कई सारे रोड के काम चालू है और रोड के काम में ठेकेदार द्वारा सब ठेकेदार दिए जाते और उनसे काम अच्छी तरह से क्वालिटी में नहीं होते, तो ये इस पर निगरानी रखने के लिए अलग से एजेंसी का प्रावधान किया जाए। मैं फिर से सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि गए कई सालों में एक देश भर में अच्छा काम जो पिछले कई सालों में नहीं हुआ, वो अच्छा काम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। मैं धन्यवाद देता हूँ, वित्त मंत्री को भी इस बारे में धन्यवाद देता हूँ और मेरी बात खत्म करता हूँ। धन्यवाद। क्या बात है अप्पा। श्री के सुरेश जी। Thank you, Chairman, sir. Give me opportunity to participate supplementary demands grants. It was moved by Honorable Finance Minister in this House. Sir, at the very outset, let me express my strong objection and disapproval of Finance Minister Madam Nirmala Sitharaman ji's statement today in the House morning question and answer time. So, honorable members, raise doubt about the nation's economic performance. Are jealous countries increasing economy? Honorable Finance Minister, nobody is jealous. India's economy or India's progress, and it is not just the BJP who can stake claim to the nation's economic development. Every single Indian citizen has the right to question anyone in the executive, including Prime Minister, the Finance Minister, or any cabinet minister for that matter. It is called democracy, where people's rights are supreme, and we
the members of the parliament are the representatives of the people will India's voice and the symbols of India's poor and downtrodden. So you must not to antagonistic to expression of dissent and counter arguments as we are still living in Democratic Republic of India. Sir, now let me come to the main points of the debate wherein Finance Minister has claimed Indian economy is undergoing a rest and we are growing faster than ever. Our currency and India has fastest growing economy. If this is the case, then we are not jealous, but we are worried that Finance Minister is fond of relying upon window dressing than addressing the deep wounds of India working class, the scheduled castes and scheduled tribes, unemployed man and woman, and more significantly, the owners of the small and medium business who are committing suicide as they are suffering the triple attack of demonetization, faulty GST, and COVID, wherein the government of India did not anything to address the concern of these classes. Sir, Madam Finance Minister is so confident of Indian economy. Then why physical ground realities? Where growth projections in financial year 2024 in percentage-wise is as percentage-wise is Moody's 4.8%, S&P 6%, Nomura 5.1%, OECD 5.7%, Fitch 6.20%, World Bank 6.6%. It can be seen that most global financial rating agencies have downgraded India's financial year 24 GDP growth estimate sharply. Some are even projecting a sub 5% growth for next fiscal. This means that there is concern about India's economic performance among the world leading rate agencies who keep track of Indian economy development and performance. I would also state that Nomura rating agency is one of the latest reports said that India's growth rate cycle has packed and broad-based slowdown is underway. I must further state that various reports state that revenue growth has already started slowing down and GST revenues have pleated with the inflation and there is a fall in import growth and corporate profits. Another area where the government failed in the disinvestment and the government is finding it difficult to achieve the disinvestment target of rupees 65,000 crores in the current fiscal. The government can't keep on raising the disinvestment targets year after year as there are limited central public sector enterprises left to be monetized in future. Sir, so now we can assume the government's revenue are drying up and the new avenues of revenue are hit by domestic and international pressures. Let us further examine other indicators that deflate the government's claim of the resilient India. According to RBI August bulletin, funds raised for capital expenditure through banks, financial institutions, external commercial borrowing, foreign currency, convertible bonds and initial public offers dipped 28% from rupees 2071 2,71,374 crores in financial year 2022, 1,094 crores financial year 2022. In this growth, despite corporate tax cut from 30% to 22%. Mr. Chairman, sir, the CMI data says, CMIE, not CME,
CMIE data says capital expenditure on new projects nearly halved from 8.18 lakh crore in January-March financial year 22 to 4.2 lakh crore in April-June financial year 23. So, Honorable Member Jayant Singh Jaji's keenly listened to my arguments. I hope that he will give a reply when he is going to speak. According to the World Bank, private sector gross fixed capital formation in GDP dip from 31% to 2011 to 22% in 2020. Total gross fixed capital formation came down from 34.3% to GDP in financial 12 to 30.4% of financial year 22. Is this something that anyone must be jealous? We must be worried. Employment scenario. As per CMIE data, the urban employment rate rose to 8.96% of the November from 7.21% of the previous month, while the rural unemployment rate slipped to 7.55% from 8.0%. The data showed. So again, that talks on India rising and progressing in economic development fund in a fake projection, as there is no jobs in urban areas and people returning to rural areas push demand in rural areas, which is caused by a sudden surge, and that cannot be called as growth. So the data clearly shows that the unemployment rate is far higher than the government to feel happy. So we are not jealous at all. We are very much worried, Madam Finance Minister. Apart from these areas, let me also highlight the public sector where the government can actually create employment in banking of area, as now there are 9,079.327 vacancies in central government with 22,093.943 in the Ministry of Railways, followed 2,264 defense and 143.536 in home affairs. The data indicates unemployment in the public sector is equally severe, and government is failure to addressing the concern the youth who are employed. The Congress Party is experiencing a pain and disappointment of the youths as Bharat Jodo Yatra, led by Shri Rahul Gandhi, supported by lakh and lakh of unemployed youths who are telling us about their existential crisis and agony they suffer, and the finance minister still calls our economy to be the greatest and call us jealous. So, apart from this, I would like to state that owing the financial crisis, the Indian government must be not grant to financial support Kerala state, and the government of Kerala has submitted the wasted precious public resources introducing Silver Line rail project, which is nothing but a wasteful expenditure of public money. I am pointing out the Kerala issue, sir, in the supplementary demands grants. But, sir, the government of Kerala pressurizing to central government. I am concluding. The government of Kerala is pressurizing to central government to get a sanction from Ministry of Finance as well as Ministry of Railways for Silver Line. That is highly objectionable. That is anti-people project. That's why I would like to request Honorable Finance Minister through you, sir. Silver Line is anti-people project. That project will not clear from Government of India. Sir, Vande Bharat train, Kerala is not considered. Sir, All India Medical Institute, Kerala is not considered. And our railway zone, Kerala request is not considered. And also flood relief during 2018 flood. At that time, central government has given a rice and wheat. Now they are asking money. Central government is asking money for flood relief materials. That is very, very objectionable, sir. Sir, you know, sir, Andhra is also very important about the NRIs. Gulf Malayalis earning crore and crore rupees for the government of India. But at the same time, after COVID, lakh of Gulf Malayalis returns from Gulf to Kerala. There is no rehabilitation package for Gulf returnees in Kerala. That also, so many proposals has been given.
Sir, what is the natural rubber price is falling day by day. Earlier, 240 to 250 per kg they are getting the small and marginal farmers. Now they are getting 100 rupees or 140 rupees. What is the situation, sir? 100 and 140 rupees. How they can live? How they can cultivate the rubber, sir? And also, sir, in Kerala, cashew industries are also facing severe crisis. Cashew. There is no financial support from government of India to reviving the cashew industry. Cashew industry also earning crore and crore foreign exchange to India. But at the same time, government of India is not supporting the cashew workers as well as cashew entrepreneurs. That also we are facing big issues, sir. Sir, in my parliamentary constituency, Kuttanad, farmers is crying. There is no any package for paddy farmers in Kuttanad. So I would like to request Honorable Finance Minister, her next budget, 1,000 crores rupees to be included in the budget proposal for the package of Kuttanad paddy farmers. Sir, in my parliamentary constituency is a very backward constituency. So government of India is going to start 140 medical colleges. So I am requesting through you, sir, to one medical college should be set up in my parliamentary constituency, Changanur. Sir, finally, Shabarimala, I don't know, you are very much aware of Shabarimala. Majority of the devotees are coming from Andhra Pradesh, Telangana and Karnataka. Shabarimala is part of my constituency. All the devotees coming to my place, Changanur, from there they are going to Shabarimala. But so far, Shabarimala pilgrims are facing so many problems. But the government of India is not supporting Shabarimala package. There is a need for a package for Shabarimala pilgrims. So Shabarimala also in this season already pilgrims have started. Lakh of devotees are coming every day from Andhra, Karnataka, Telangana. So there is no facility to provide all the devotees in Sannidhanam and Pamba and Changanur, other places. So government of India and state government should come forward to make a package for the providing facilities for our action plan, Shabarimala action plan, to provide the facilities of Shabarimala pilgrims. With these words, I thank you, sir. Give me opportunity. Thank you. Shri Jayant Sinha ji. बहुत धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। आज आपने सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स को समर्थन देने के लिए मुझे एक अवसर दिया है बोलने के लिए, उसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। सभापति महोदय, अभी चुनाव के परिणाम आए और जब चुनाव के परिणाम आने लगे तो हम सबके सामने एक ऐतिहासिक दृश्य हम सबको नजर आया। और वो क्या था वो ऐतिहासिक दृश्य? वो ऐसा था कि जो हम लोगों ने भारत में कभी देखा ही नहीं था, वो हमको नजर आया कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी और साहसिक और कुशल नेतृत्व के कारण छठे बार लगातार भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई और हम लोगों ने इतिहास रचा। और मैं इस चुनावी परिणाम के बारे में, सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स के बारे में मैं क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आज भारत में सर्वांगीण विकास, संपूर्ण विकास का अगर कहीं भी उदाहरण है, नीतियां बनाने का कहीं कोई भी उदाहरण है, कुशल बजट रखने का कहीं कोई भी उदाहरण है, तो वो गुजरात में है, जहां हमारी डबल इंजन की सरकार चली है। और अब वही कुशल नीति, वही नेतृत्व अब भारत को भी मिल रहा है और इस सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स में वो नजर आ रहा है। और वही जो हमें सफलता गुजरात में मिली है, वही सफलता मुझे पूरा विश्वास है और मुझे लगता है माननीय सदस्य भी मेरे साथ इसमें सहमत होंगे कि जो सफलता हमें गुजरात में मिलती आई है चुनावी परिणाम में, वो हमको भारत में भी मिलती आएगी, क्योंकि वही कुशलता, वही जनहित, वही सार्वजनिक सोच के साथ हम लोग ऐसे बजट बनाते हैं। इस बजट में 3-4 ऐसे बिंदु हैं जिस पे मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं और जनता का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। पहली बात तो ये है कि जो हम लोगों ने खर्चे बढ़ाए और कई वक्ताओं ने इसके बारे में कहा है
कि जो खर्चे थे वो फर्टिलाइजर सब्सिडी में 1 लाख करोड़ और हम लोगों ने खर्च किया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में हम लोगों ने 80,000 करोड़ और खर्च किया। हम लोगों ने एलपीजी सब्सिडी में और पैसे दिए, हम लोगों ने रेलवेज में निवेश दिया, हमने नरेगा में पैसा दिया। ये सब जो खर्चे थे वो इसलिए थे क्योंकि विश्व में एक माहौल पैदा हुआ, विश्व में एक उथल पुथल हुआ, जहां हम लोगों को अपनी जनता को सुरक्षित रखना था, महंगाई पे अंकुश लगाना था और साथ साथ विकास में और उत्पादन की बढ़ोतरी में हम लोगों को पूरी तरीके से प्रोत्साहन देना था। और ये हम लोगों ने अपनी नीतियों के द्वारा और इस सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स के द्वारा हम लोगों ने किया है, महंगाई पे अंकुश लगाया है और विकास के लिए और ग्रोथ के लिए जो हम लोगों को निवेश करना था, जो हम लोगों को राशि देनी थी, वो भी हम लोगों ने इस बजट के द्वारा दिया है। और इस कारण अगर विश्व में अर्थव्यवस्था के नजरिए से आप देखें, अगर कहीं चमकता हुआ सितारा आपको नजर आएगा तो वो भारत ही नजर आएगा। और इसलिए क्योंकि माननीय सभापति महोदय, अगर आप देखें तो विकसित देशों में 40 साल में जो महंगाई का दर नहीं आया था, जहां 2-3% महंगाई का दर होता था, आज का समय 8-10% वहां महंगाई का दर चल रहा है। जहां 3-4% का उनका जीडीपी का ग्रोथ रेट होता था, आज के समय वो 0-1 के कगार पे आ गया है। और दुखद बात तो यह है कि अगर हम अपने पड़ोस में देखें, पाकिस्तान को देखें, श्रीलंका को देखें, बांग्लादेश को देखें, उनकी जो हालत हो गई है उसके बारे में आपको बताने की कोई जरूरत ही नहीं। ये दुनिया की परिस्थितियां, एक इस प्रकार का युद्ध चल रहा है जो लगता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध है, इतनी बड़ी एक लड़ाई चल रही है, इतने बड़े वहां जोरों से खर्चे हो रहे हैं और उस पर पूरे वर्ल्ड के ट्रेडिंग सिस्टम पे प्रभाव पड़ रहा है। ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आया। इन परिस्थितियों में कोविड के बाद तब भी इस डिमांड फॉर ग्रांट्स के द्वारा, बजट के द्वारा और कुशल नीतियों के द्वारा हम लोगों ने सब जो हमारे मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो हम लोगों का ग्रोथ रेट हो, चाहे वो निवेश हो, चाहे वो शेयर बाजार हो, चाहे वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो, अगर आप आंकड़े को देखें, आज उन सब आंकड़ों में भारत पूरे विश्व में नंबर 1 आज के समय हम लोगों को माननीय वित्त मंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व के कारण हम अपने को पा रहे हैं। तो ये हम लोगों ने काम किया है। और कई बार मुझसे लोग पूछते हैं कि अगर हम लोगों को भारत की नीति को समझना है तो हम इसे कैसे समझें, कौन से ऐसे विशेष जो आपकी नीतियां हैं जिसके द्वारा ये जो चमकता हुआ सितारा जो हमारा भारत बना है, ये कैसे बना है। तो मैं सरलता और लोगों को समझाने के लिए जनसभाओं में कहता हूं कि आप 6x3 यानी आप 6x3 को याद करिए। अगर 3 ऐसे आप नीतियों को याद रखिएगा जो 3-3 अक्षर के हैं, 3-3 शब्दों के हैं, ऐसे 6 नीति हैं। अगर आप इनको याद रखिएगा तो पूरी हम लोगों की नीतियों को आप समझ जाइएगा। पहला डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जिसके द्वारा चाहे वो जनधन योजना हो, किसान सम्मान निधि योजना हो या कोई भी हमें सब्सिडी देनी हो, वो हम सीधा लोगों के बैंक के खाते में दे देते हैं बिना किसी दलाली की और बिचौली की। डीबीटी। दूसरा यूपीआई, मैंने कहा ना कि 3-3 अक्षर के हैं। डीबीटी, यूपीआई, यानी कोई फ्रिक्शन नहीं है, एकदम फटाफट आपको पैसे मिल जाते हैं। आप आज घूमने जाएं, आपको सब्जी वाला नजर आएगा वो यूपीआई का उपयोग कर रहा है, आपको दुकानदार नजर आएगा यूपीआई का उपयोग कर रहा है, आपको टैक्सी वाला दिखेगा वो यूपीआई का उपयोग कर रहा है। हमने फ्रिक्शन अपनी अर्थव्यवस्था में काफी कम कर दिए यूपीआई के द्वारा। तीसरा जीएसटी। अभी निशिकांत जी बता रहे थे कि अपेक्षा थी कि जीएसटी में 1 लाख करोड़, 1.25 लाख करोड़ आएगा, लेकिन इस कुशलता से हम लोगों ने इसको अमल किया है, इसको निरंतर हम लोग बेहतर बनाते चले गए कि आज 1 लाख, 1.25 लाख करोड़ नहीं, 1.5 लाख करोड़ तक हम लोगों का रेवेन्यू कलेक्शन हो रहा है। ये जीएसटी का हम लोगों का फायदा हुआ है। फिर आगे हम लोग आते हैं एक और नीति पे, आईबीसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। इसके द्वारा जो कंपनियां बैंकरप्ट होती हैं, जो कंपनियां डिफॉल्ट करती हैं, एनपीए होती हैं, उनके एसेट्स हम लोग लेकर उनको फिर रीपर्पस करके अच्छी तरीके से उनको हम लोग चला सकते हैं। और इसका मैं कई आपको उदाहरण दे सकता हूं। इलेक्ट्रो स्टील का प्लांट ही है हमारे बोकारो में, जिसको वेदांता ने लेकर आज फिर नए सिरे से चला दिया है। तो ये आईबीसी के कारण ये एसेट्स का जो हम लोगों ने पूरी तरीके से रिफर्बिशमेंट कराया है, ये भी अनोखी एक बात है। फिर मैं 5वीं बात पे आता हूं, AIL, एयर इंडिया लिमिटेड। इस पे भी चर्चा हुई थी, माननीय शशि थरूर जी ने इसके बारे में कहा, माननीय निशिकांत जी ने भी इसके बारे में कहा। मैं सिर्फ आप लोगों का इस पे एक महत्वपूर्ण निवेश के बारे में बताना चाहता हूं।
कल ही अगर आपने अखबार में पढ़ा होगा, आपने देखा होगा कि एयर इंडिया अब टाटा ने जिसने ले ली है, उसमें 500 प्लेन का एयर इंडिया कह रहा है वो ऑर्डर करेगा। 500 प्लेन में आपको नैरो बॉडीज भी मिलेंगे, वाइड बॉडीज भी मिलेंगे। ये निवेश हो रहा है क्योंकि हम लोगों ने एयर इंडिया का प्राइवेटाइजेशन किया, एयर इंडिया टाटा के पास गया, टाटा अब निवेश कर रहा है। इसमें रोजगार का भी सृजन होगा, इसमें निवेश भी होगा और दूर दूर तक अगर आपको जहां भी जाना होगा आप विमान सेवा आपको मिल जाएगी। ये भी हम लोगों ने एविएशन में एयर इंडिया के प्राइवेटाइजेशन के द्वारा हम लोगों ने किया है। ये भी एक 3 अक्षर का शब्द है, AIL, इसको भी आप समझ लीजिए। और अंतिम, और अभी सुरेश जी ने कहा कि उनको चिंता है रोजगार के बारे में, हम सबको चिंता है रोजगार के बारे में। हम चाहते हैं कि हमारे युवा जो हैं, प्रतिभावान ऊर्जावान हमारे युवा वर्ग के लोग हैं, इन लोगों को बेहतर से बेहतर रोजगार मिले और उनकी प्रोडक्टिविटी वर्ल्ड क्लास हो और उनको आगे के समय भी, आज सिर्फ नहीं आगे के समय भी उनको अच्छे करियर के अपॉर्चुनिटीज मिले। और इसमें माननीय वित्त मंत्री जी ने बहुत बढ़िया एक नीति बनाई है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी घोषणा की और वो है एक और 3 अक्षर का एक मामला और वो है PLI, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव सिर्फ एक क्षेत्र में नहीं, अनेकों क्षेत्रों में, करीब 15 क्षेत्र में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स को हम लोगों ने लागू किया है। इसके द्वारा नए नए कारखाने खुल रहे हैं जो हम लोगों के लिए, हमारे अर्थव्यवस्था के लिए, आगे के भविष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्टर्स हैं, जैसे कि सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग, जैसे बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, जहां सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग है। उसके बारे में मैं सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बताऊं कि गुजरात में फॉक्सकॉन और वेदांता का सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का शायद 1 लाख करोड़ का कारखाना आ रहा है, वो भी PLI के द्वारा आ रहा है। और इसके कारण गुजरात को तो विकास मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन हम भी अपने देश को, अपनी टेक्नोलॉजी को सुरक्षित रख पाएंगे क्योंकि सेमीकंडक्टर्स के लिए हमें बहुत जरूरत है। अगर हमारी आधुनिक अर्थव्यवस्था होनी है, अगर हमको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हम लोग चाहते हैं, कंप्यूटर हम लोग चाहते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी अपनाना चाहते हैं, तो जब तक हम अपने देश में सेमीकंडक्टर्स नहीं बना पाएंगे तो हम आगे विकास नहीं कर सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा 6 x 3, ये 6 नीतियां हैं 3-3 अक्षरों वाली। इनको मैं विपक्ष के सब अपने साथियों को मैं कहूंगा, ये कुंजी बना लीजिए, इनको लिख लीजिए। जब भी आप भूल जाएं कि विकास क्या हो रहा है तो इस कुंजी को देख लीजिए। 6 x 3 सरल एक फॉर्मूला है, उसका उपयोग करिएगा, आपको पता चल जाएगा। और मुझे लगता है आप मेरे साथ पूरी तरीके से सहमत भी होंगे कि ये 6 x 3 का फॉर्मूला जो है बहुत ही कामयाब हुआ है, बहुत सफल हुआ है और बहुत प्रभावशाली हुआ है। तो माननीय सभापति महोदय, अगर हमें विकास को एक सुदृढ़ता देनी है, विकास को एक ऊर्जा देनी है, तो हमें ऐसे नीतियों को अपनाना पड़ेगा जो ना सिर्फ आज के दिन लेकिन अगले दशकों में भी भारत को आगे ले जा सकते हैं। $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी, वर्ल्ड 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी तो हम लोग बन ही चुके हैं। अब अनुमान है कि जल्द $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी, हम लोग 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी दुनिया की बन जाएंगे, आगे $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगी। ये सब बनेगी क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी सोच भारत की है और वो जब ये नीतियां बनाते हैं तो वो भारत को एक ताकत देते हैं, भारत को एक शक्ति देते हैं, भारत को एक ऊर्जा देते हैं। और जब ये माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी ऐसे कुशल नीतियां बना रहे हैं, ये बहुत दुखद बात है। और मैं अपने विपक्ष के साथियों को मैं अनुरोध करूंगा, विनती करूंगा, क्योंकि मुझे अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ मालूम है कि ये जो आप लोगों की रेवड़ी की जो नीतियां बन रही हैं, ये भारत को ले डुबाएंगी। जहां जहां डबल इंजन की सरकार है, हम लोग अपने राज्यों को हम लोग स्टेबल रखें, राज्यों में हम लोग अच्छी हम लोग नीतियां बना रहे हैं, वित्तीय परिस्थितियों को संभाले हुए हैं। लेकिन जहां जहां डबल इंजन सरकार नहीं है, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो और अब हिमाचल हो, दिल्ली हो, सब जगह चाहे वो रेवड़ी वाला मामला हो, संदेश वाला मामला हो, जलेबी वाला मामला हो, हम लोग सिर्फ यही देख रहे हैं। हम लोग सिर्फ इस प्रकार की सस्ती लोकप्रियता के लिए हम देख रहे हैं कि नीतियां बनाई जा रही हैं। और अभी जो ओल्ड पेंशन स्कीम की जो बात चली है, इसमें देखिए आप चाह रहे हैं कि आज आप इससे फायदा लें, आप इसके द्वारा अपने पैसे और अपनी आमदनी को बढ़ाएं। मैं राज्य की बात कर रहा हूं, लेकिन आप किसका पेट काट के ऐसा कर रहे हैं? आप अपने बच्चों का पेट काट के अपना आज जो है भोजन चला रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? ये कोई भी समझदार व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जो देश के बारे में चिंता करे, वो कैसे कर सकता है? लेकिन तब भी सस्ती लोकप्रियता के लिए, चुनाव जीतने के लिए
आप लोग ऐसे ऐसे वादे करते हैं जो देश को बहुत हानिकारक और बहुत ही नष्ट करने वाली ये नीतियां हैं। और आप देख लीजिए, आप हम लोगों के पड़ोस में श्रीलंका का अगर आप उदाहरण देख लें, वहां भी इस प्रकार के कुछ वादे किए गए, वहां भी कुछ ऐसी नीतियां लाई गई, और आज जो श्रीलंका की दुर्दशा है वो हम लोग सब लोग उससे परिचित हैं। तो आप अपने राज्यों को इस प्रकार नष्ट न करें, अपने राज्यों के बारे में सोचें, क्योंकि अगर आपके राज्य डूबेंगे, आपके राज्यों में ये सब संकट आएगा, तो वो केंद्र सरकार को ही, हम ही लोगों को इसको बचाना पड़ेगा। अंत में बस यही कहना चाहूंगा कि सस्ती लोकप्रियता से आप अपनी गाड़ी को ज्यादा आगे नहीं चला सकेंगे। एक बार आप भले जीत जाएं, लेकिन जब अगली बार आपको जनता का सामना करना पड़ेगा, तब आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। और मैं इसका उदाहरण अपने ही राज्य झारखंड के बारे में, मेरे झारखंड के सब यहाँ साथी बैठे हैं, मैं झारखंड के बारे में बताना चाहता हूं, जहां सस्ती लोकप्रियता के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई वादे किए, लेकिन आज एक भी वादा वो नहीं पूरा कर पा रहे हैं, चाहे वो रोजगार का हो, चाहे वो निवेश का हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का हो। क्योंकि जब आपकी नीतियां ही नहीं ठीक है, जब आपकी सोच ही भ्रष्ट है, तो आप जनता को कैसे आप लाभ दिलवा सकते हैं। हमारे ही क्षेत्र हजारीबाग में मैं आपको बता दूं कि कई जगह हम लोगों को रेलवे ओवरब्रिज बनाना है, टोकी सूद में बनाना है, कुर्से में बनाना है। जहां जहां रेलवे ओवरब्रिज बनाना है, वहां राज्य सरकार को भी योगदान देना होता है, राज्य सरकार को भी भूमि अधिग्रहण करना पड़ता है। लेकिन राज्य सरकार जो सिर्फ लूट खसोट में लगी हुई है, जो सिर्फ बेईमानी में लगी हुई है, वो राज्य सरकार इस प्रकार के विकास के काम कर ही नहीं पा रही है। और जनता की आज जो दुर्दशा है, वो झारखंड में मेरे सब यहाँ साथी हैं, वो अच्छी तरह से जानते हैं। मेरे बगल में बैठे हुए माननीय जमशेदपुर के सांसद श्री विद्युत वरण महतो जी हैं। हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। विद्युत जी के हम लोग जमशेदपुर में दालबुंगड़ में जाकर हम लोगों ने हवाई अड्डे का शिलान्यास किया, हम लोगों ने हजारीबाग में शिलान्यास किया हवाई अड्डे का। इसमें राज्य सरकार की भी योगदान जरूरी है, चाहे वो फॉरेस्ट का एनओसी हो, चाहे वो भूमि अधिग्रहण हो। लेकिन जब आप सिर्फ सस्ती लोकप्रियता के बारे में सोचते हैं, आप भविष्य के बारे में नहीं सोचते हैं, आप देश के बारे में नहीं सोचते हैं, जनता के बारे में नहीं सोचते हैं, तो आप कोई काम नहीं कर सकते हैं। और मैं अभी से भविष्यवाणी करूंगा कि झारखंड में ये सरकार किसी भी हालत में वापस नहीं आएगी। लेकिन जहां गुजरात में जहां हम लोगों ने काम करके सही नीतियों के द्वारा कुशल प्रशासन के कारण और जनता के सहयोग के कारण जहां हम लोगों ने सर्वांगीण विकास, संपूर्ण विकास हम लोगों ने दिया है साथियों, सस्ती लोकप्रियता नहीं, हम लोगों ने सही लोकप्रियता वहां पाई है। और एक चुनाव नहीं, 2 चुनाव नहीं, 3 चुनाव नहीं, 5 चुनाव नहीं, 6 चुनाव हम लोग जीते हैं। और मैं समझता हूं कि अगर लोकतांत्रिक इतिहास विश्व में देखा जाए तो कहीं नहीं आपको दिखेगा कि इतने 27 साल के बाद भी, इतने सालों के बाद भी एक कोई ऐसी सरकार हो जिसका प्रो इनकम्बेंसी इतना हो कि 156 सीट जीते, 85% सीट जीते और इतने बड़ी बहुमत से हम लोग जीते, क्योंकि हम लोग सस्ती लोकप्रियता की ओर नहीं चलते हैं। हम लोग भारत माता को सुदृढ़ बनाने के लिए, भारत माता को मजबूत बनाने के लिए, देश का सर्वांगीण विकास बनाने के लिए हम लोग अपनी नीतियां बनाते हैं। और यही इस डिमांड फॉर ग्रांट्स में भी आपको जरूर नजर आएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। श्री जयदेव गाला जी। जयदेव जी, no, nothing goes on record. Thank you, sir. Mr. Chairman, sir. Thank you, sir. Chairman, sir, I rise to support the additional expenditure the Honorable Finance Minister is seeking from the House through the first batch of supplementary demand for grants for 2022-23, and also the demands for excess grants for 2019-20. Sir, I will be brief and crisp since time given to me is very little. Sir, let me start with the issues of my state of Andhra Pradesh first. First is the issue that has been going on for the last 3 years, sir. The farmers of 29 villages who have given 33,000 acres of fertile agricultural land for the development of the capital city of Amaravati have been on a non-stop protest since December 2019, fighting to ensure that Amaravati is made the sole capital of the state and to ensure that the promises made by the Government of India are fulfilled. In a few days from now,
that is on the 18th of December 2022, we are going to mark 3 years of protest. There has never before been such a long protest by farmers for their rights in the country, sir. I appeal to the Honourable Prime Minister, through the Honourable Finance Minister, to announce that Amaravati will remain the capital of AP. I also request her to provide the funds for the development of Amaravati, as all the development projects are at a standstill. Secondly, sir, I come to Polavaram, the lifeline of Andhra Pradesh, sir. The completion of the project will turn our state into a lush green state, full of crops, and also meet the drinking water requirements of the entire state. Therefore, I urge the Honourable Finance Minister to approve the revised cost estimate amount of 55,548 crores as recommended by the TAC, which includes the cost for land acquisition and R&R for the people displaced due to the project. Finally, through you, sir, I request the Honourable Finance Minister to release the funds for the 18 commitments mentioned in the AP Reorganisation Act. Through you, sir, I would like to remind the government that this is the final budget that is going to be presented before the 10-year deadline that is mentioned in the AP Reorganisation Act comes to a close. And therefore, all of the commitments legally and through the act made by this House should be completed in full by 2020. So the next budget is extremely important for us. And therefore, I request the Honourable Finance Minister to start releasing funds to ensure that all the promises made in the Act to the 5 crore people of Andhra Pradesh are fulfilled in full. Sir, I now come to the supplementary demand for grants and the demand for excess grants. Firstly, rupees 1.09 lakh crores the FM has sought for fertilizer subsidy to farmers. This increase in fertilizer subsidy is primarily due to geopolitical reasons and logistics issues that have arisen due to the Russia-Ukraine crisis. Both are major suppliers of fertilizer to India, and the war between them has disrupted the flow of fertilizers. This demand is also justified since it is meant for farmers. But here I wish to make a point that the Honourable Prime Minister, while inaugurating the Ramagundam Fertilizer Corporation, is on record saying that we need about 2.5 lakh crores for fertilizers. If you add the 1.05 lakh crores provision as fertilizer subsidy in the 22-23 budget, with the 1.09 lakh crores proposed now, it comes to about 2.14 lakh crores. So I would be grateful if the Honourable Minister can explain how she is going to fill the gap of around 36,000 crores, sir. The next demand is about the 30,000 crores towards payment of LPG subsidy to OMCs and the subsidy under the PM Ujjwala Yojana. This is also a welfare measure which nobody can oppose and hence justified. Sir, on the one hand, we have been pushing hard to make India Atmanirbhar, while on the other hand, we are not able to tap the resources that we have. I will give an example, sir. Andhra Pradesh, with nearly 1,000 kilometers of coastline, is having the second longest coastline in India. More than 27 billion cubic meters of natural gas reserves are yet to be recovered from inland and offshore sources in Andhra Pradesh. There are also reserves in Gujarat and the Northeast. The point is, if we are able to tap these resources, we can save huge foreign exchange and also achieve the objective of becoming Atmanirbhar. I am saying this because we import 60% of our LPG requirement from other countries. Moreover, some natural gas pipelines have also been conceived, such as the Kakinada to Vizag to Srikakulam, which was to be completed in June 2021, but not yet completed. Similarly, there was also a proposal to lay a natural gas pipeline from Kakinada to Vijayawada to Nellore as a part of the government's One Nation, One Gas Grid project. I request the Honourable Finance Minister to clear these from her ministry so that they can be completed as per the schedule, which will help in reducing our dependence on foreign countries, sir. The third major head under which the Honourable Finance Minister sought approval of this House is 16,400 crore for Narega. Well, this also cannot be objected to, since it is also a welfare measure and meant exclusively for the poor. But taking advantage of this opportunity, sir, I wish to make a couple of points on Narega. How long are we going to ask poor, unskilled labour to do manual, unskilled work, sir? Shri Narendra Modi ji, after becoming the Prime Minister, is on record saying that even after 6 decades of our independence, we are still making people dig in for their livelihood.
Why cannot we provide them skills, sir, so that they can do other skilled jobs and earn even more? I agree that the government of India has started the project Unnati, but many states are not showing any interest in skilling Narega workers. Why is the question, sir? What are the reasons behind this? Secondly, the government targeted to give skill training to 20% of Narega workers who completed 100 days of unskilled work in 2020-21. But only a few thousand have been given skill training in 2021, sir. If there are any issues, I request the Honourable Finance Minister and the Rural Development Minister to convince the states for skilling Narega workers. And if there's any additional incentives to be paid to the workers, the Honourable FM can please consider it. Because in the long run, there will be less pressure on resources under Narega if we are able to skill our workforce and move them away into real jobs, sir, as they will get more money elsewhere using their newly acquired skills. I'm just 2 minutes, sir. The next point I wish to make is relating to the figure fixed in the budget about expenditure. It was proposed in the budget 2022-23 to spend 39.4 lakh crores when compared to 37.7 lakh crores in 21-22. But if one looks at the expenditure in the first 3 quarters and anticipated expenditure in the last quarter of this fiscal, there's every likelihood of crossing the budgeted figures. It means it is going to breach the fiscal deficit target of 6.4%. Even though we have better GST collections and we've got about 1.4 lakh crore collections 9 months in a row now, I wish to know to what extent will this help in keeping the fiscal deficit at 6.4%, because the expenditure may breach by around 1 lakh crores this fiscal year. I wish the Honourable Finance Minister to please shed some light on this. Sir, the Honourable Finance Minister, I'm concluding, sir, I'm on the last page. Sir, the Honourable Finance Minister is also proposing to spend about 10% of demands for capital expenditure in railways, roads, and under other heads. Here I wish to point out, and I'm sure the Honourable Finance Minister will also agree with me, that the pace of public capex has come down. I'll just finish in a minute, sir. If one looks at the budget papers, it was proposed to spend 35% higher, which was about 3% of GDP, at 7.5 lakh crores as capital expenditure for 2022-23. But public capex is not picking up. I wish to know the reasons behind this from the Honourable Minister. Moreover, sir, the Honourable Finance Minister in her budget speech at para number 113 allocated 1 lakh crores to states for capital investment. The Finance Ministry approved 58,200 crores under Part 1, but released only 26,300 crores. Under Part 2, 898 crores has been released, and another part, Ministry has approved and released 1,200 crores. Sir, we're at the fag end of the third quarter, and not even 30% was announced in the budget. So I'll just complete I'm coming to conclusion, sir. More than your allotted I'll time. just complete the conclusion, sir. There's no doubt that it is a big challenge for India to sustain high growth rate and lift millions out of poverty. And unemployment is the biggest challenge that we are facing today. Sir, around 12 million people are joining the labor force every year, but we're not able to generate jobs for even half of them. The labor force participation rate dropped from 40% from 46% 6 years ago, and the unemployment rate is hovering at 7 to 8%. The point I wish to make is it is very rare to find GDP is going up while employment is dwindling. And I think that India is one of the few countries where GDP is growing, but employment is falling. This is called jobless growth, sir. I wish the Honourable Finance Minister to please throw some light on this. Thank you for giving me this opportunity, sir. Thank you very much, Chairman, sir, for allowing me to participate in the discussion on supplementary demands for grant 2022-2023. There is no doubt we are all participating in this debate, which is most important for our country, and we need to come and we need to arrive at a conclusion that we are all putting our efforts to a common goal of development of our country, sir. Sir, as my previous speakers have already elucidated on the MSME part, sir, the most affected sector as far as the economic part is concerned is the MSME sector, sir. Especially based on the 3 reforms this government have taken place. One is the demonetization, the other one is the GST, and now the pandemic situation. At these 3 policy decisions, the most affected area is the MSME sector. So to bridge the gap of this MSME sector, to a question number 823,
by the MSME Minister Shri Narayan Rane on 2nd December 2021. He made the reply statement that the center has taken around 3,750 crore rupees borrowed from the World Bank in June 2020 for a ramp program, sir. But so far, the cabinet has not released, so the amount has not released because of the cabinet has not approved that amount so far, sir. And I would like to get the clarification from the Honorable Finance Minister why such grant is not released so far. My second point is that the center has announced nearly rupees 20 lakh crore rupees to combat the impact of the COVID in the country. My simple question to the Finance Minister through you, sir, is that how much of this rupees 20 lakh crore was actually infused into the economy since March 2020? Third, sir, the central government announced rupees 1.70 lakh crore relief package under Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana for the poor people to help them fight the battle against the pandemic. How much of this 1.7 lakh crore was actually released to the poor since March 2020, sir? So the fourth one, according to the report by the Controller and Auditor General of India, over 2.18 lakh crore collected by the central government as cess for specific purposes, as such education, sanitation and infrastructure, have either not been fully transferred to a dedicated fund or remain unutilized. For instance, I can say that to my constituency, sir. See, the education, which is the most important pillar for our societies, in my constituency alone, don't know why the administration have closed nearly 8 primary schools, which is, in a way, we have passed the Right to Education Act in 2009, wherein 1 kilometer peripheral we need to have primary schools, wherein the 8 primary schools has been closed only because there was a shortage of teachers, and to overcome the shortage of teachers, instead of appointing the teachers, they are closing down the schools, sir. This is the scenario happening. As far as scholarship for the students are concerned, sir, for the last 2 to 3 years, scholarship is pending, and scholarship pendency have gone into such a level that the students are being rolled out from the institutions, which is an alarming situation. So that why we are parked these funds, 2.18 lakh crore rupee, which is collected on behalf of the cess as education for sanitization, and why the government is not releasing is the point here, sir. So the third one, the other one is, sir, the public transport. Public transport is the vital part for any area for the development part, sir. See, in any rural area, to connect with everybody is asking about railways. For me, it is the ship connectivity, sir. So we have, in 2015, a 15-year perspective plan for the futuristic concept made by the shipping ministry, Home Ministry, Lakshadweep administration, all together made these 15 years perspective plan, looking into the futuristic development of Lakshadweep into the tourism sectors, cargo movement, all those aspects. So that 15-year perspective plan was really needed for the development of the island. Why there is no allocation in that sector in this year is a question here, because the public transport is the most important part for any financial backup for the any rural places, sir. Sir, same in the case of coming into the back of the Awas Yojana, Pradhan Mantri Awas Yojana. In this Pradhan Mantri Awas Yojana, which I have already raised in the parliamentary committees also. See, the rural areas where it is far-flung areas, the conditions, the criteria, guidelines, sir, I'm concluding. Guidelines which is prescribed in the Pradhan Mantri Awas Yojana, if a house is having a refrigerator, which is mandatory for a far-flung area to keep the food items not spoiled, a refrigerator is required. If a house is having a refrigerator, they fall in the non-eligible criteria to get the Pradhan Mantri Awas Yojana. So my request with the Finance Minister is that to come out with a special plan in the rural areas where the benefit of the Awas Yojana can also be... Please conclude. So I'm concluding, sir. Sir, the same in the cases of, the fisheries sector, sir. Fisheries, agriculture and animal husbandry. The schemes which run out for the subsidy part for the getting the feeds for the poultry growers,
for the fishermen's other subsidy schemes. All those schemes, as far as my area is concerned, it's all stopped, and the fishermen, farmers, the poultry growers are not getting anything. So I'm concluding, sir. But all these areas, when we ask for the supplementary demand for grant, all this benefits, sir, I'm concluding, sir. Benefits should get to the people. My concern is that all these points should be considered, sir. Thank you so much. For allowing me to speak on the demand for excess grants for 2019-20 and supplementary demand for grants 22-23, sir. I thank Honorable Prime Minister and my party for giving this opportunity and to support the supplementary demand for grants and the demand for excess grants for expenditure of the central government, sir. Sir, demand for excess grants for 2019 and 20, sir. The excess expenditure during 1920 occurred in 2 grants and 1 appropriation, sir, amounting to the total of 32,637 crores, sir. Out of which, sir, 701 crores has been a capital outlay on defense services under the Ministry of Defense, sir. And it has been excess expenditure हुआ है, सर. इसी के लिए हम आज उसको सपोर्ट करके पास कर रहे हैं, सर. और दूसरा 31,934,000 crores has been given to, sir. The excess was incurred due to transfer of more funds to GST compensation funds in order to apportion the balance IGST pertaining to the financial year 2018, sir. And in the present supplementary demand for grants, sir, the first batch of supplementary demand for grants for 22-23, it includes 75 grants and 6 appropriations, sir. Approval of the Parliament is sought to authorize gross additional expenditure of 4,35,938 crores. Out of this proposal, involving net cash outgo of aggregated to 3,25,000 crores and gross additional expenditure matched by the savings of the ministries and departments and enhanced receipts and recoveries aggregate to 1,10,180 crores. Besides, a token of provision of 159 lakhs is being sought, 1 lakh for each item of the expenditure for enabling reappropriation of savings in cases involving new services or the new instrument services, sir. Sir, out of this 75 grants and 6 appropriations, sir, gross appropriation is 4,36,000 crores, sir, out of which cash supplementary is 3,26,000 crores, out of 3,26,000 crores, revenue account is 2,95,000 lakh crores, sir, 2.95 lakh crores, sir, and capital account is 31,053 crores, sir. Sir, major items out of this are the sir, major वो चिंतन कर रहे हैं. Major कहा चिंतन कर रहे हैं. Sir, major items in this are, sir, fertilizer subsidies of the tune of 1,09,000 lakh crores, sir, and food subsidies of the tune of 80,348 crores, sir, and rural development 45,178 crores, out of which Manrega itself is around 16,400 crores, and Pradhan Mantri Awas Yojana rural is of the tune of 28,422 crores, sir. And to support to the oil marketing company, sir, the government has given rupees 22,000 crores plus 7,200 crores for Ujjwala Yojana, out of which already 9 crore people have got the gas connection in this country, sir. Ministry of Road Transport is getting around 20,000, that is 19,198 crores, sir. And Ministry of Railways is getting around 12,000 crores. And BSNL is telecommunication is getting around 13,000 crores. And out of the 6 appropriations, sir, which is a mandatory and it will happen recurring expenses, which is not shown in this, it is going to CVC, the Supreme Court, President of India, UPSC, and interest payments, sir, and debt repayment, sir. So last time our budget was around to the tune of 39,45,000 crores, sir, budget estimate. Abhi after this demand for supplementary grants, it will rise to 43,81,000 crores, sir. Sir, now I'll come to the
a lot of people have spoke about the economy in this country today, sir. Most of the opposition have also talked about what is the economic scenario of this country, sir. Sir, releasing the estimate of gross domestic product for the second quarter, Q2 in 22-23, the National Statistical Office, NSO, declared that real GDP or GDP at constant 2011-12 price is estimated at 38.17 lakh crore rupees as against the 35.89 lakh crore rupees in quarter 2 of financial year 22-23, showing a growth of 6.3% as compared to the 8.4% in the quarter 2 of the financial year 21-22, sir. According to RBI, sir, taking into account the baseline assumption, survey indicators and the model forecasts, real GDP growth is expected at 7% in 22-23, sir. 6.3% in quarter 2, 4.6% each in quarter 3 and quarter 4, with risk broadly balanced around this baseline path for 23-24, assuming a normal monsoon, sir, and no major exogenous or policy shocks. The structural model estimates indicate real GDP growth at 6.5%, sir. Sir, according to a World Economic Outlook, October 22, sir, countering the cost of living crisis, global economy activities is experiencing a broad-based, sharper than expected slowdown, with inflation higher than seen in several decades. The cost of living crisis, tightening financial condition in most regions, Russia's invasion of Ukraine, and lingering COVID-19 pandemic all weigh heavily on the outlook of Indian economy, sir. It also on the Indian economy as well, sir. Global growth is forecast to slow from 6% in 2021 to 3.2%, sir, in 22, and 2.7% in 23, sir. Global inflation forecast has to rise from 4.7% in 2021 to 8.8% in 2022, but to decline 6.5% in 23 and 4.1% by 24, sir. Amidst this crisis, India stands on better footing, sir. Promising growth, slowing inflation, rapid vaccination coverage, well-calibrated short-term policy measures have effectively navigated the economy through the turbulent times, paving the path towards the desired resilience and the growth, sir. The World Bank raises financial year 23 India's growth to forecast to 6.9%, sir. Further, the rating agency of Moody has cut the India's growth projection for the next calendar year to the higher inflation, higher interest rate, and slowing global growth that it believes will dampen the economic momentum more than it had expected. But Moody said, sir, now expects the India's GDP growth to 7% in 2020, sir. The point here would be, sir, across the globe, global economic scenario, all the countries are having a low growth, sir. India is one country which is having a very good rate of growth in the economy. That is because of the firm leadership of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, who has taken this country to the next level. And today morning, one of my friends, Mr. Revant Reddy, was asking about the question. He has posed a question. 80 lakh rupees of loan has been taken by Narendra Modi's government in last 8 years, but whereas the other governments took for only towards 53 lakh crores. Sir, my point would be only simple, sir. If you are a layman in economics also, if you are having a projection of growth, you will be having more loans, sir. And to having a more loan, we are taking that money and putting the same money in the infrastructure growth, wherein and whereby the ecosystem in the country is where the lot of investment is going to happen, lot of spending is going to happen, and lot of growth is going to happen. And for that reason, if you are trying to aim at $5 trillion economy, you have to have a loan according to that result, sir. So my point would be, sir, the key highlights in the November 22, one of the reports says, sir, private consumption stood at 57.5 of the nominal GDP in financial year 21-22, indicating that it is becoming a macro growth driver, sir. Rice, wheat, gram, maize production is expected to be a record high, sir. According to data released by the Ministry of Statistics and Program Implementation, sir, the consumer price index-based retail inflation stood at 6.77% year-on-year on October 22, sir.
And Purchasing Managers Index, PMI services remained comfortably in the expansionary zone at 56.7%, sir. Fuel consumption has increased, sir. In September, the industrial production IIP stood at 133.5, sir. And in financial year 23, sir, until September 22, the combined index of 8 core industries stood at 142.8, driven by the production of coal, refinery products, fertilizer, steel, electricity, and cement industry, sir. Traffic handled at the major ports, sir, stood at 4,46,503,000 tons in April to October 22, sir. Railway freight traffic growth stood at 118.94 metric ton in October 22, sir. In March 22, freight movement increased 0.3 compared to the previous year, indicating the increase in the air freight and the traffic activity has been maintained, sir. 78.1 million e-way bills raised during the March 22, which is 13% higher compared to February 22, sir. In April 22, the government approved the participation of 61 companies in the PLI scheme for textiles with a proposed total investment of 19,000 crores and an expected turnover of 1,84,000 crore, leading to employment generation for about 2.8 lakh people, sir. In October 22, the gross GST revenue collection stood at 1,51,718 crores, sir. In June 22, Indian basket crude oil reached $116.6 compared to 109, sir. In October, UPI transactions were valued at 12.11 lakh crores and merchandise exports stood at $30 billion, sir. So, in all this, sir, even the bank credit stood at around $1.55 trillion as on September 23, 2022. Credit on non-food industry stood at $1.54 trillion, sir, in September 22-23, sir. So, the monthly account of Union Government of India up to the month September highlights the include that Government of India has received 12 lakh crores, 52.7% of the corresponding budget estimate of the total receipt up to September 22, comprising 10 lakh crores of tax revenue, 1,57,000 crore on non-tax revenue, 34,000 crores of non-debt capital receipts, and non-debt capital receipts consist of recovery of loans of 9,500 crores, miscellaneous of 24,590 crores, and 3,76,000 crore has been transferred to the state government, sir. A lot of opposition members were talking about the federal structure of this country. So the Union government has already transferred to the tune of 3,76,000 and demand for grants may be 10,000 crore rupees हम transfer कर रहे हैं, sir. Sir, India's overall export, I don't go into that, sir, but I can only say this, sir, the number showing the inflation rate has remained above RBI's tolerance, sir, band of 2 to 6% of the 10th consecutive month, but still India's retail inflation is sharply to 6.77% on an annual basis in the month of October from 7.41% in the September, and the supply chain disruption due to the ongoing geopolitical factors and hardening of commodity prices globally continue to thrust ahead the inflation pressure, sir. In spite of this, sir, the country is going at good speed, and for that Honorable Prime Minister is responsible, and I congratulate on behalf of this House and also myself, sir. Sir, one more thing, sir. A lot of discussion was today was happening regarding the dollar and the rupee price. आपकी मोटी फाइल है, अभी आधा घंटा और बोलना चाहते हो कि टाइम बढ़ा दें आपको? सर, मैं अभी 10 मिनट बोलूंगा, सर. नहीं, बढ़ाना हो तो बताओ आप. नहीं सर. नहीं सर. I'll only take under 10 minutes, sir. Under 10 minutes. कागज है ना इतने. सभा की कार्रवाई माननीय सदस्य के बोलने तक बढ़ाई जाती है. थैंक यू सर. थैंक यू सर. सर थैंक यू सर. आज बहुत बहस हुआ सर. डॉलर राइज अगेंस्ट द रूपी का बारे में बहुत चर्चा हुआ सर. द कॉज ऑफ द ग्लोबल करेंसी क्राइसिस इज द राइजिंग US dollar, sir. The dollar index DXY, which measures the US dollar against an average of 6 other major currencies, has risen by 15% in 22
in 2022, sir, which is the highest increase in the last 20 years, sir. The British pound has fallen by 17.7%, sir. Turkish lira by whopping 39%, sir. And the euro by about 15%, sir. Australian dollar by 15%, sir. And Taiwanese currency by 16%, sir. Virtually all Asian currencies have been hit, sir. India only by 10.9%, sir. Sir, this is the direct result of the US central bank's aggressive efforts to contain their own domestic inflation, sir, which is at record high this year in the US by rising interest rate on government treasuries, sir. The series of rate increases by the Federal Reserve this year has resulted in record sales of US government bonds and a consequent sucking in the dollars from the world economy and world currency markets, sir. Because they are getting a lot of more interest there, the entire money is transferring back to the US, sir. The growing demand for dollars to buy these bonds has pushed up the dollar price, sir. And this policy aimed at easing domestic inflation in the US has wreaked the havoc across the world because the dollar is the world's reserve currency. Thus, the Federal Reserve has little or no concern how the rest of the world is affected by the actions and has signaled that it will continue to raise rates till the US inflation is contained, sir. In October 2, it raised the interest rates by 0.75 of a percentage point, taking the rate to its highest point since the financial crisis in 2008, sir. The US dollar strengthening is a disaster for the world economy. In order to protect their currencies, nations must not only deplete their foreign exchange reserves, but in many cases also raise interest rates to stem out the outflow, sir. This results in the higher domestic borrowing costs, which coupled with the rising import and the debt servicing costs are combination designed to wreck the economies or push them into recession. And all this for no fault of our own, sir. But our Honorable Prime Minister, when the Ukraine-Russia war took place, sir, he was under and our country was under a lot of pressure not to buy the crude from the Russia, sir. But in spite of that, we went ahead. We cared to nobody, sir. Even the US or the US hegemony was not tolerated, and even the EU, what it compliant us to not to purchase the crude from the Russia. We bought crude, and I have an estimation to the tune of 30,000 crores has been saved to this country under the Prime Minister Narendra Modi, sir. And I ask the honorable members of the opposition, at least at this stage, they have to be a part of the country and they have to support Honorable Prime Minister when he is saving a lot of money and also putting the same money into the action and with no corruption, zero tolerance to the corruption, the building of the nation. I'd like the honorable members from the opposition to support this, sir. The price rise in the petrol was also mentioned today in the debate, sir. The government on its part made two significant cuts in excise duties on petrol and diesel on November 21 and May 22. The combination of steps, including diversification of crude sourcing, as I said earlier, reduction of central levies on retail prices, sir, and additional taxes on exports have ensured stable, affordable, and secure fuel supplies in the country, sir. While the world saw a huge rise in the petrol and diesel prices, Indian consumers were completely isolated from its OMCs, as they did not pass on the hike in retail prices and took the hit on them instead and started having huge under-recoveries and cash losses, sir. These losses became rupees 638 minus, sir, crores per day in 2022 compared to 222 minus 222 crore per day in February 2022, sir. Meanwhile, on 21st May 2022, to ensure that the prices of essential items are kept under control, government reduced the central excise on petrol by 8 rupees per litre, diesel by 6 rupees per litre. The reduction was fully passed on to the consumers, while under recoveries in petrol and diesel amounted to 1,111 minus crore per day during May 2022, sir. India has been shining example of economic resilience and stability in the world, sir. Efforts to confuse the understanding around the well-intentioned and the successful energy strategy of the governments are being best ignored. So, before I conclude my speech, sir, Nishikant Dubey was speaking on the cryptocurrency, which I was part of the finance committee from 2009 to 2019, sir, where we aggressively
fought against. We raised the issue against, and Saugata Da was there, sir. Baituri Mehta was there, sir. We all opposed it, sir, but unfortunately, even I was trolled by the social media saying that I am against the innovations. I am not against the innovation, but the same has been used for the it was not used for the purpose for which it has to be used. But I am hopeful, sir, the blockchain, the digital ledger, what we call, which will be used for the undermining or undercutting the duplicity in the country. For example, it can be used for the land records. The blockchain technology would be used for the same thing, which will be ensuring the growth of this country, whereas the cryptocurrency was not for it. So I hope in the future, the cryptocurrency will be banned in this country, which has already bogged down. A lot of people have made loss of money in this, sir. Usually the most of them were the youngsters, the age below 35 years. They have lost a lot of money, and I appreciate the government to take to the next level. As it is, the RBI is giving the e-rupee has been already launched. I hope the blockchain technology will be used for the future development of this country, sir. Thank you very much for giving this opportunity to speak on this subject. Thank you, sir. सभा की कार्रवाई कल मंगलवार दिनांक 13 दिसंबर 2022 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। उधर आसमां से किसी ने पुकारा, कहा बादलों से जुड़ो। इधर से ज़मीं किया एक इशारा, उड़ो और ऊंचे उड़ो। इरादों की टोली लिए साथ में उजाले रचाने चली, मैं देश बनाने चली। उन दरिंदों ने खूब कहर बरपाया, इंसानियत की हवस को आग में जलाया। चीख निकली फिर एक खामोशी छा गई, बेहोशी में भी उसे जरा रहम ना आया। नमस्कार, आप देख रहे हैं